that the stable party comes here in the MCD, because the fight has been neck to neck between the BJP and the Aam Aadmi Party. We are moving here. There are multiple voters over here who are going to exercise their franchise. Good morning, auntie. आज आप अपना वोट डालने जा रहे हैं. किन मुद्दों पे आज आप अपना वोट डालोगे? क्या मुद्दे दिमाग में रखे? ये तो सब सीक्रेट रखते हैं, जो मन में आएगा, जो अच्छा लगेगा उसको। नहीं, किसको वोट डालना है ये नहीं कि क्या क्या कारण है जिनके लिए आप वोट डालने आए हो, आप क्या अच्छा चाहते हैं? और हम ये चाहते हैं कि जो गंदगी है वो साफ होनी चाहिए। एरिया में हमारी जो गंदगी है, सीवर खराब रहते हैं हमारे, और ये सड़कों की पार्क नहीं अच्छे हैं बिल्कुल भी। अच्छा, तो ये सब आप अच्छा करना चाहते हैं। So you can see that cleanliness, rejuvenation of the parks, these are some important issues that concern the people of old Rajendra Nagar here. Now this is one of the main issue. Cleanliness remains at the top of the list, including with the air pollution. Back to studios. All right, Shivangi, Tanisha, Madhurima, thank you. Stay on with us as we also bring in our colleague Piyush Ori. Piyush, good morning to you. Tell us where you are, some of the issues that are being faced in that particular area as well. We have seen how Madhurima, Shivangi and Tanisha have been pointing out that pollution, of course, is one of the major factors that was an issue over which this election was also being fought. Corruption was, of course, another one. Take us through the details of where you are, the concerns of the voters today and the kind of atmosphere that you're seeing around you. So good morning, Priyanka. And yes, I am at the Chhatarpur constituency over here in South Delhi. Now, South Delhi is the richest municipal body in Delhi. But the most strange part is that over here, normally the voters do not come, even though it is the most affluent society over here. So yes, the first and the foremost aspect over here to be today noticed is that what exactly is going to be the voting percentage. Normally in the MCD polls, it hovers around 50 to 55%. So it is going to be interesting to see with the kind of build-up which has been maintained, what exactly is going to be the voting percentage. Now, you raised very important points that yes, pollution and corruption are the two most important issues, but there are also other issues which are involved. Now, just a few minutes back, Manish Sisodia, the Deputy Chief Minister, held a press briefing with the reporters over there, and he said that he is going to also ensure that the cleanliness of the city, which is deteriorating by the day, is going to be improved. Traders' licenses, which is again in which there has been a lot of corruption which has been found out, is going to be improved, and the e-governance services is going to be improved. This has also been maintained by the BJP, which is also going to, besides emphasizing on the corruption of Aam Aadmi Party, has also said that it is going to help the economically weaker section groups to get houses in Delhi. And again, the BJP has said that the e-governance and the parking systems of this city is going to be improved. So yes, besides the political slugfest, there is also now emphasis on issues. And it is at the end going to be interesting to note that will voters actually take note of the issues that have been raised by the party and come and vote. It is going to be first interesting to know that what is going to be the voting percentage. And on December 7th, we will see that over 1.545 crore voters which are eligible to vote, which party will they vote? Back to you in the studio. Well, all right, definitely, Piyush. In fact, thousands of voters have already started, in fact, will be coming out and voting in the MCD elections. And of course, we are seeing that the queues of the early voters in your frames as well. Shivangi, it's over to you. Tell us where you are and some of the concerns, and also speak to us about the build-up to this elections when it comes to the campaigning, when it comes to the political slugfest, as Piyush was also mentioning. या पूछिए सर, अब यहाँ पर आपने वोट दिया है। दिल्ली नगर निगम चुनाव में जिस तरह से राजनीति हुई और जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप है, क्या आप कांग्रेस के लिए क्या उम्मीदें हैं सर? देखिए, ये चुनाव नगर निगम का, गलियों का, नालियों का, सफाई का, कूड़े के ढेरों का, पार्कों का, इन सब चीजों का चुनाव है। तो मेरा सभी लोगों से, सभी मतदाताओं से यही अपील है कि इस चुनाव के अंदर कैंडिडेट को देखें,
और कैंडिडेट्स को देख करके कौन उनका सबसे ज़्यादा काम कर सकता है उसके आधार के ऊपर वोट दें। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट सबसे बेहतरीन है और लोग जो हैं कैंडिडेट को मुख्यतः देख करके, क्योंकि जो आदमी उनके लिए अवेलेबल हो चुनाव के बाद, क्योंकि ये सबसे छोटी निचली सीढ़ी है हमारे लोकतंत्र की, तो इसके अंदर ऐसा व्यक्ति चुन करके जाना चाहिए जो सुलभ हो, हर किसी को 24 घंटे उपलब्ध हो। सर, ये पॉलिटिकल एक्सपर्ट का मानना है कि सर ये बाइपोलर कॉन्टेस्ट हो गया है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच। देखते हैं, ऐसा है कि पिछली बार भी यही कहते थे और पिछली बार जो है हम लोग 24% वोट लेकर के आए थे और जो है 31 सीटें हम लोग जीते थे। तो ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर भी जो 2019 का चुनाव हुआ था, पार्लियामेंट के अंदर भी हम लोगों के 23-24% वोट उस टाइम पे भी थे और उस टाइम पे तो आम आदमी पार्टी थर्ड हो गई थी। तो ये दिल्ली की जनता है, कोई मैं आपको 30-40 साल पुरानी बात नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको भी 2 साल 3 साल और 5 साल पुरानी बात, पिछले इलेक्शंस की बात बता रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है। सर, एक सवाल और है। 2012 में एक व्यवस्था बनी थी और 3 नगर निगम हो गए थे, एक बार फिर से सारे नगर निगम ज्वाइंट हो गए और सिंगल नगर निगम है। आपको लगता है कि इससे थोड़ा फर्क पड़ता है? देखते हैं। अभी जिस वक्त 3 नगर निगम बनाई गई थी उस वक्त एक सोच थी कि कमिश्नर्स जो हैं वो एक कमिश्नर इतना बड़ा पूरी दिल्ली को कैसे संभालेगा और एक हेडक्वार्टर्स पूरी दिल्ली को कैसे देखेगी, दिल्ली बहुत बड़ी हो गई है। और उस चीज़ को ध्यान में रख करके 3 हिस्से करे गए थे। जमुना पार के लोगों को दूसरी जगह पे आने में दिक्कत होती है और सारी पूरी की पूरी दिल्ली एक जगह के ऊपर कैसे जा सकती है, तो ये ध्यान में रख करके करा गया था। सर्विसेज इम्प्रूव हो ये करके करा गया था। सर, कांग्रेस अपने आप को कहाँ देख रही है आपकी सवाल? मैंने बताया तो है। सर, एक टीटी दे दीजिए ना, छोटा सा। माकन साहब है सर, आपने मतदान किया सर, एक छोटा सा सर, प्लीज थोड़ा उंगली दिखा। सर, एक सवाल सर ले लीजिए ना, एक सवाल। नहीं यार, सर मेरी वर्किंग कमेटी की हमारी मीटिंग है। So that was Ajay Markan speaking there, and let's go to Tanisha. Tanisha, you have a family with you who has come to cast their votes. Speak to them. What do they have to say? Right, Shivangi, right. I have a family with me who's here. There's a young fellow who's come with his grandparents. His grandparents have come here to cast their vote. Sir, आज कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पे आप अपना वोट कास्ट करेंगे? सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी है कि देखिए, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है सेंटर की, जब से वो आई तब से टेररिज्म ख़त्म हो गया है, कोई ब्लास्ट नहीं होता है। तो सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी है, मतलब हम देश सेफ रहेगा तो तभी तो सेफ रहेंगे ना। तो इसलिए देश को सेफ रखने के लिए, देश को इंडिपेंडेंट रखने के लिए प्रेजेंट गवर्नमेंट बहुत अच्छी, और पर्टिकुलरली नरेंद्र मोदी जी का कोई मैच नहीं है। वी आर गोइंग टू बिकम इंटरनेशनल गुरु एंड वी आर गोइंग टू बिकम इंटरनेशनल, वी हैव ए स्टेटस, G20 वी आर नाउ हेडिंग। So it is a very matter of proud for us कि we have to vote for this present government. मैम, आप जो हैं, आप एक नॉर्मल वोटर हैं। यहाँ पे MCD इलेक्शंस जो हैं हाई स्टेक होने वाले हैं। बीजेपी और आपके बीच में एक बहुत तगड़ा जो मुकाबला है वो होने वाला है। आप क्या मुद्दों को रख के अपने माइंड में आज अपना वोट कास्ट करने जा रही हैं? देखो, बीजेपी काम बहुत करती है और जब से मोदी जी आए हैं काम देश का तो देख ही रहे हैं लोग, और पढ़े लिखे लोग तो समझदार आदमी को ही वोट देंगे। एक और मुद्दा जो बहुत खुल के सामने आ रहा है वो है करप्शन का, वो है गार्बेज का। लैंडफिल की साइट्स बन गई हैं। ये दोनों सारी पार्टियां जो है वो एलेज कर रही है और सारी पार्टियां यही कह रही हैं कि अगर हम पावर में आते हैं तो हम ये जो गार्बेज का पूरा एक लैंडफिल साइट क्रिएट हो गया है, जो पहाड़ क्रिएट हो गया है, उसको क्लियर करेंगे और दिल्ली को ब्यूटिफाई करेंगे। किस हद तक आपको लगता है ये बात उनकी सही है कि आप अपने वर्ड्स पे खड़े उतरेंगे? तो इतने साल से वो 8 साल से सेंटर अपना GNCT के वो है, उन्होंने क्या किया अब तक? उस खाली वादा ही तो करते हैं वो। जितने भी उनके कहने में करें फ़र्क बहुत है। मोदी जी करते हैं, किसी चीज़ का उद्घाटन करते हैं, उसका समापन भी कर, उसका रिबन भी काटते हैं। ये खाली बातों का है और खाली मीडिया हाइप है, नथिंग एल्स। Thank you so much. Now there you see his ending conclusion was how the
Aam Aadmi Party, the other parties have been doing all of this, making claims just for a media hype. So clearly you see the elderly here are quite inclined towards the Bharatiya Janata Party. However, it will still be a very, very interesting battle, because remember when we were on the ground earlier, we did see an inclination towards the Aam Aadmi Party as well. Like I said, it will be a high-stake battle. The decision is still not confirmed. We do not know towards where the voter is going to move to. All of this will be very interesting to watch on December 7th when the result day will be live on Republic. Back to the studios. Right. Well, Tanisha, you spoke to families, and of course, it's a high-stakes battle which is happening right now. Many controversies also erupting as well. We'll talk about the controversies before the MCD polls. A lot of controversies during campaigning had happened. Before we speak about that, the controversies, let's go ahead to Piyush. Piyush, you all are also there with voters right now. What's happening where you are? Very, very big election happening in Delhi, especially MCD polls, which will decide a lot of matters on big issues such as corruption, such as air pollution, and such as sanitization. Very big issues in these elections, Piyush. Well, certainly, Shivangi, there are many issues on which the voters are focusing. Remember that during the course of campaigning, the issues like garbage, air pollution, and many other issues were focused. I am now also joined with an early voter, morning voter. So you have cast your vote. Yeah. Could you please show me your finger? Oh, yes. Yes, you have just cast. Yeah. So this voter has just cast his vote and he has come out after casting votes. What are the issues you kept in mind while you were voting? Mainly cleanliness of Delhi and the efficiency of working of corporation. Efficiency? Yeah. Are you satisfied with the work which has been done so far? To some extent. But it requires a lot of improvement. Like, say, if you would like to say. Like garbage is the main thing. You go anywhere, you find garbage which is lying around, and there is not much of cleanliness. But if this is taken care of, then corporation in Delhi is working well. You feel that corporation is working? At some extent it is working? To some extent. Sufficiently, with the limitations, it's working well. Also, after delimitation, do you think that now after this, all three bodies have been unified, would it be working more efficiently now? Let us see. It's an experiment. Let us see. It may work well. It may work well. We don't know, but it may work well. Future only will tell. What are the more issues you kept in mind apart from... I kept cleanliness only in my mind. And a bit of corruption when we visit. In fact, what happens for people like us, many functions of state government and corporation, they are so interlinked. We don't know. For example, we have problem with water. We start abusing one party without knowing whether it falls in the jurisdiction of that particular party or not. So, since the issues are not very clearly demarcated, it creates problem in our mind. But for me, educated voter like me, we also feel as if corporation's duty is only cleanliness around. Yes. Very important point you have raised. I would ask one more last question, sir. Do you think that it's important to have the party of one government of one party, be it in the center or in the state or in municipal? It would have some sort of better coordination among the officials. You see, at center we need Modi, no doubt about it. We need one BJP at center. But at other states, as other parts, in some states, other parties are also doing well. Most of the issues, so they can really be separate than Modi ji's government at center. Thank you so much for speaking to us. So here you just saw an elderly man. He has come here early in the morning to cast his vote. And we are getting voices from different parts of national capital. After this very short break, we will be getting more and more details as voting for MCD continues to take place in national capital. Stay tuned for more updates. मेरी नजरों से चुना, तेरी हरकतों से सुना, कभी जीती तू, कभी मैं हारा, फिर भी खूबसूरत है ये नजारा, क्योंकि इसमें है खुला कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा। अमेजिंग स्पेसेस के लिए ड्रीमलैम लैमिनेट्स, कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा।
What is it that is unique about your father's story to build the largest logistics company? 99% in the movie, it is a real-time story what has happened with us in our life. That's what been captured. Why should a young person watch this film? All the youngsters out there, they want to be an entrepreneur just in overnight. मतलब वो shortcut देख रहे हैं. Any business for that matter or any work for that matter और success आपको overnight नहीं आती. This is that film. Pakistan that would boast to the Chinese and tell them that, we can guarantee you absolute peace in Afghanistan, build the China-Pakistan economic corridor right through the heart of Afghanistan. But in the last 1 year, more than 300 Pakistani soldiers and policemen have been killed by various factions of the Afghan Taliban and also the fearsome terrorist organization, the Tehreek-e-Taliban Pakistan. Today, Pakistan is suing for peace. A high-voltage battle which will decide the nation's political trajectory. Who will break their records and which faces will be the winners? 89 out of the 182 seats go to polls. Stay tuned to India's election news headquarters. As Gujarat goes to polls, live coverage minute by minute all day today on Republic. The mandate from the two states. It's been a high-stakes battle for the Prime Minister. Who will win Gujarat and Himachal? While the opposition was missing in action, the people have given the real mandate. Will the BJP retain both the states? Is the Aam Aadmi Party even a factor? Get the earliest peep into the verdict with Republic PMark exit poll, December the 5th at 6 p.m. Waterlogging has increased in the last 3 to 4 hours. Elphinstone station is shut, which means all those people who are hoping to go back home. When you look at that crowd, what's the message that Houston is sending out? There is also anticipation of a few announcements being made. What are your expectations when they both come up on stage? Are you expecting something big? I'm at the Jama Masjid in Bandra and there are thousands of people behind me. Why they are protesting, but the situation is pretty tense. Thousands of people that you see. 4 दिन की रिमांड है, 4 दिन की रिमांड. कुछ कहना चाहते हैं आप? पत्राचौल स्कैम, मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज के बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप? It's 8:30 and here are the headlines, viewers. It's a big battle in the national capital as Delhi goes to polls for the MCD elections. A high-stake fight and litmus test as Aam Aadmi Party and BJP fight it out amid the bitter tussle and series of controversies. New Pakistan Army Chief provokes India, says Pakistan armed forces are ready to take the fight back to the enemy. Summoned by CBI in liquor scam, KCR's daughter seeks complaint copy from the agency. As India marks Navy Day, mega celebrations in Visakhapatnam today. This pink polling booth. It's a pink polling station. This is a model polling station here. It's completely pink. It's run by women only. You can see women here doing every bit of the work here. Women are handling the security. They're handling the polling booth, the registration, everything handled by women only. Now, the pink polling booths in Delhi are to encourage women to come out and vote in large numbers. It's also a model polling booth. That means there are a lot of amenities here. There's water. There are washrooms as well. So
elderly also don't have an issue when they come here. So it's a model polling booth, so it can be replicated. People should come out in large numbers and vote. That is the point. It's all about democracy. A lot of reactions have been coming in today as well. Before I go to the reactions, many controversies before the campaigning and when the campaigning started. Now, Jagdish Titler, 1984 rights accused, was called in by the Congress to campaign here. That raised a very, very big issue. Number two, Sandeep Dixit had accused of a colleague of his from the Congress about using his mother's photo. Now, Sandeep Dixit's mother was Sheila Dixit, former CM of Delhi. There was a big infighting which happened in the Congress as well. And number three, the Aam Aadmi Party tainted with the liquor gate scam. So many controversies ahead of the MCD polls right now. BJP trying to make sure that they retain the MCD this time. Now, before we talk about what's happening at the polling booths, all our reporters are on ground. We have Madhurima, Piyush, we have Tanisha and many others joining us live. It's the biggest coverage on Republic TV. First, let's have a look at the reactions coming in since morning from political leaders just when the voting started. आज दिल्ली में एमसीडी के लिए मतदान है और दिल्ली के 1.5 करोड़ लोग आज दिल्ली नगर निगम के लिए अपनी सरकार चुनेंगे। तो मेरी सभी 1.5 करोड़ वोटर्स से रिक्वेस्ट है, उनसे निवेदन है कि आज एमसीडी में अपना मतदान करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि एमसीडी का सबसे पहला काम है दिल्ली का कूड़ा साफ करना, दिल्ली के कूड़े के पहाड़ खत्म करना, दिल्ली में व्यापारियों को ईमानदारी से लाइसेंस देना, दिल्ली की गलियों को बनवाना, दिल्ली में अंदर की कॉलोनियों की नालियाँ गलियाँ सबको ठीक रखना, पार्कों को सुंदर रखना, ये सब एमसीडी के काम हैं। नाली, सड़क, पानी, जो पार्क हैं, ये सब एमसीडी के काम है। आवारा पशुओं से दिल्ली को साफ़ सुथरा रखना, ये सब एमसीडी के काम है। तो अपना वोट एमसीडी में यही सोच समझ कर दें कि आज आप दिल्ली को साफ़ सुथरा बनाने के लिए वोट कर रहे हैं, कूड़ा मुक्त दिल्ली बनाने के लिए वोट कर रहे हैं, कूड़े के पहाड़ हटाने के लिए वोट कर रहे हैं, एमसीडी में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए वोट कर रहे हैं, एमसीडी को जो उसका मेन काम है दिल्ली को स्वच्छ साफ सुंदर बनाना, उसके लिए वोट कर रहे हैं। मेरी सब वोटर्स से यही अपील है, आपके वोट के ज़रिए हम मिलकर दिल्ली को स्वच्छ बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे। सर, पिछले बार 54% वोटिंग हुई थी। दिल्ली वालों से ज़्यादा वोट करने की अपील करिए। रविवार का दिन है तो लोग छुट्टी का दिन ना समझें। मैं फिर से 1.5 करोड़ वोटर से अपील करना चाहूँगा कि मतदान बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है लोकतंत्र में जो हमको मिली है। दुनिया के बहुत सारे देशों के लोग इसके लिए तरसते हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से हम सबको ये अधिकार मिला हुआ है कि हम मतदान दे सकें और अपनी सरकार चुन सकें। इसमें बिल्कुल भी आलस्य ना करें और इसको उतना ही ज़रूरी समझें जितना हमारी ज़िंदगी के और काम हैं। आपके मतदान की बदौलत ही दिल्ली साफ सुंदर बनेगी। बिल्कुल, दिल्ली नगर निगम के चुनाव आज मतदान का दिन है और सभी मेरा नए मतदाता जो 18 साल से ऊपर अभी नए मतदाता बने, उनसे ये कहना है कि आप फर्स्ट टाइम वोट देंगे तो फर्स्ट टाइम वोट देने का एक उत्साह रहता है और हम भी सबका स्वागत करते हैं। अधिक से अधिक संख्या में मतदान हो, लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, इसके लिए अपील भी करता हूं। और साथ ही साथ आज का दिन हमारे लिए भी बहुत उत्साहपूर्ण है कि दिल्ली के अंदर जिस तरह से चुनाव प्रचार में जो मेहनत हुई है उसका सार्थक परिणाम अब आने वाला है। और आज के दिन जब हम सुबह अपनी दिनचर्या शुरू करेंगे तो पहले प्रभु के दरबार में जाएंगे, मंदिर मत्था टेक कर मतदान करने जाएंगे। मैं स्वयं 8:30 बजे पटेल नगर में मतदान करूंगा और दिल्ली के सभी मतदाताओं से अपील है कि देश हित में, दिल्ली के विकास के लिए और दिल्ली के नगर निगम को बेहतर बनाने का काम जो केंद्र सरकार ने किया है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को चुने। हमारे सभी भाई बहनों से अपील है कि दिल्ली के अंदर एक जो भारतीय जनता पार्टी के स्वच्छ प्रशासन दिया है उसको आगे बढ़ाना है और जो लोग भ्रष्टाचार किया है, जिन्होंने दिल्ली में 8 सालों में कोई विकास कार्य नहीं किया है और विकास कार्यों को रोका है, उनको जवाब देने का वक्त है। इसलिए दिल्ली के सभी नागरिकों से, मतदाताओं से अपील है।
इस वक्त मौजूद हैं जो अपना वोट कास्ट करके बाहर निकले हैं। सर एक बार प्लीज ये उंगली दिखाइएगा जिसमें नीली स्याही लगी हुई है, क्योंकि ये मजबूती है लोकतंत्र की, जो ये बताती है हर एक आदमी को लोकतंत्र में मताधिकार है, अपने मत का इस्तेमाल करें और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो एमसीडी में वोट डालें। सर सवाल पहला मैं ही करूंगा, किन मुद्दों को लेकर आपने आज वोट दिया? दिल्ली के लिए, दिल्ली कैसी होनी चाहिए, राजधानी कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार के लोग राजधानी के जनप्रतिनिधि होने चाहिए, उसके लिए वोट डाला है। और मुझे लगता है कि पूरी दिल्ली आज इन्हीं मुद्दों पर वोट कर रही है कि दिल्ली किस दिशा में चले, दिल्ली के जनप्रतिनिधि कैसे हों और किस प्रकार के लोकल गवर्नेंस, क्योंकि ये कॉरपोरेशन का चुनाव है, उसमें किस प्रकार के लोग चुन के आने चाहिए, वो सब बातों को मन में रखते हुए दिल्ली वोट कर रही है। सर रिपब्लिक भारत के मन से दिल्ली की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील कर रहा हूँ कि जरूर अपने घर से निकलें, सब लोग वोट जरूर डालें। ये लोकल गवर्नेंस का चुनाव है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, आपके रोजमर्रा के मुद्दे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से जुड़े हुए ही होते हैं, इसीलिए ऐसे लोगों को वोट दें जो दिल्ली और देश को आगे बढ़ाने के रास्ते पर लेकर जाए। तो कपिल मिश्रा जी को आपने सुना, उन्होंने लोगों से अपील की और जिन मुद्दों को लेकर उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया उसका भी जिक्र किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है क्योंकि जब से वोटिंग की शुरुआत हुई है सुबह 8 बजे से यहां पर लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र में, अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुरक्षा को लेकर भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। सभी को यह पता है कि उनके मुद्दे क्या हैं और किन मुद्दों को लेकर एमसीडी के चुनाव में उन्हें अपने मत का इस्तेमाल करना है। और यही सबसे बड़ी बात भी है, फिर वो चाहे साफ सफाई का मुद्दा हो, रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा मुद्दा हो, क्योंकि एमसीडी में सबसे बड़ी बात यह है कि एमसीडी को लेकर यह चुनाव बीजेपी चाहती है वो अपने मिशन रिपीट में कामयाब हो। All right, viewers, so it's a high-stakes battle, the biggest coverage, Super Sunday on Republic TV here. MCD goes to polls, 250 wards and more than 1,300 candidates. Suesha is also joining us live. Now, Suesha, why the BJP had star campaigners, they had big political leaders come to the city and campaign. They had Manohar Lal Khattar, among others. But for the Aam Aadmi Party, the only star campaigner was Arvind Kejriwal himself, the Chief Minister. And you're right outside his residence. What's happening there? Oh, absolutely, Shivangi. I am outside Arvind Kejriwal's residence, and let me quickly tell you that he is expected to come outside his residence at about 9:30, and then he will make his way to the polling booth and cast his vote, which is not very far from here. Now, like you said, that BJP had, of course, fielded its star campaigners, and let's understand that that is quite BJP's style. This is exactly what they have been going with, be it the assembly polls, be it the local polls, or be it the national elections, of course, and that has been quite their style, that they use their star campaigners. Even in the MCD polls, we had seen some of the big names of the BJP who had come on the ground. They had held road shows, they had held door-to-door campaigns, and they have been in power when it comes to the MCD for the last 15 years. We just heard Deputy Chief Minister Manish Sisodia, who said that, it is really time that people come out and vote because he thinks that since the last 15 years, there hasn't been too much. Now, these are the exact issues that the Aam Aadmi Party has been harping upon, because they say that they're focusing on development. They also promise to make Delhi garbage free, because garbage mismanagement has been one of the hugest issues that Delhi is tackling with. On the other hand, we've seen the kind of promises that the BJP has made when it comes to providing houses to those living in the slums. They also say that water management will be better solved, and most importantly, the Aam Aadmi Party once again taking the anti-corruption line, saying that there has been a lot of corruption in the MCD, and they want to free the system of that, and which is why it is important that they pitch to the people that people must come out and vote for them. Now, again, when we are talking about these issues, let's understand that it is the BJP saying that the whole double-engine Sarkar strategy will work, because it is the BJP that is in the center, and when they are also on the ground in power with the MCD, they will help run municipal issues, civic issues better. On the other hand, the Aam Aadmi Party is saying that they are in power in Delhi, and hence, even when it comes to division of responsibilities, because let's understand, the education responsibilities, or even when it comes to the health sector, managing hospitals, it is the Delhi government that
handles the more specialized areas, but also a lot of it that comes under the MCD, and then it is the Aam Aadmi Party saying that it is better if people choose them over the BJP, and they will be able to manage all these things better. All in all, we see that in comparison to 2017, once again seems quite like a bipolar contest, because the Congress again took that line of making very specialized manifestos, breaking it down ward-wise. So, of course, we'll see what really happens. 7th is when the results will be out. We have to slip into a very short break at this point, Shivangi. We'll come back on the other side, continuing to report from all the vantage points on this very important day as Delhi goes out to vote for the municipal elections. As Gujarat goes to polls on the 1st of December, 89 of 182 seats will vote. Where high voltage political battle has broken out in the state of Gujarat since the bipolarity of the state. Will the BJP score a record victory in Gujarat? Is the Aam Aadmi Party even a factor? Politics has been challenged for the first time. Watch the fastest updates only on India's election headquarters on Republic TV. आज के दिन जब दिल में दर्द है अपने जवानों की शहादत पर, उसी के साथ साथ जब ये नारे गूंजते हैं तो एक सुकून है, एक हिम्मत है। मैं इस वक्त जाफराबाद में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर फोर्स डिप्लॉयड है। कोशिश ये है पुलिस कर्मियों की, अर्धसैनिक बलों की, कि यहाँ पर किसी तरह का कोई दंगा ना भड़क पाए। तो आपको लगातार बता रहे हैं कि किसान कानून वापस हुए हैं, और किसान कानून वापस होने के बाद सीधे किसानों के बीच पहुंची हूं और किसानों से ही बात कर रही हूं। शाहीन बाग पर बुलडोजर चलेगा। शाहीन बाग को लेकर जो राजनीति गरमाई रही वो और ज्यादा गरमाएगी, ये बिल्कुल तय है। What is it that is unique about your father's story to build the largest logistics company? 99% in the movie, it is a real-time story what has happened with us in our life. That's what been captured. Why should a young person watch this film? All the youngsters out there, they want to be an entrepreneur just in overnight. मतलब वो shortcut देख रहे हैं. Any business for that matter or any work for that matter और success आपको overnight नहीं आती. This is that film. Pakistan that would boast to the Chinese and tell them that, we can guarantee you absolute peace in Afghanistan, build the China-Pakistan economic corridor right through the heart of Afghanistan. But in the last 1 year, more than 300 Pakistani soldiers and policemen have been killed by various factions of the Afghan Taliban, and also the fearsome terrorist organization, the Tehreek-e-Taliban Pakistan. Today, Pakistan is suing for peace. A high voltage battle which will decide the nation's political trajectory. Who will break their records and which faces will be the winners? 89 out of the 182 seats go to polls. Stay tuned to India's election news headquarters as Gujarat goes to polls. Live coverage, minute. Welcome back, viewers. Straight away cutting across to some more updates that we're picking up. Now we are looking at the Prime Minister Narendra Modi, who has just sent out a tweet, and I quote from his tweet: "Best wishes on the Navy Day to all Navy personnel and their families. We in India are proud of our rich maritime history. The Indian Navy has steadfastly protected our nation and has distinguished itself with its humanitarian spirit during challenging times." And we also see another video that has also been posted along with this tweet as well. And we are looking at the Prime Minister sending out that tweet on Navy Day and also wishing the entire nation and the world on the Navy Day as well. Let's take a look at that video as well that has been posted by the Prime Minister along with this message on Navy Day.
And once again, viewers, we are putting out that message on your screens right now. And of course, we are tracking for you the latest as far as the celebrations across the country are concerned over Navy Day. And once again, the Prime Minister has also taken to social media and has congratulated and wished the people of the country over Navy Day, and has spoken about the Navy personnel and their families as well. He has time and time again, of course, spoken positively about our security forces, even without occasion. But on the day of Navy Day, we are seeing that the Prime Minister is coming out and sending that tweet for wishes on Navy Day. प्रचार का समय खत्म हो गया है और ये इस समय प्रचार करते घूम रहे हैं। ये देखो विजेंद्र गर्ग जी है, ये रात को प्रचार करते हुए घूम रहे हैं। प्रचार का समय नहीं है, इनको बताया जाए कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। ये आप प्रचार कर रहे हैं, इलीगल काम कर रहे हैं। अभी प्रशासन ने आगे इनको यहाँ रोका है, प्रशासन का हम धन्यवाद करेंगे। हर क्षण तैयार, पकड़े गए रात को, अभी कोई समय नहीं है। So that was the video message that had been sent out by the Prime Minister wishing the country on Navy Day, speaking about the qualities of the Navy personnel and their families. And he has also reiterated the fact that each and every Indian, in fact, is proud of our rich maritime history, and that has been reflected in this video as well that has been shared by him on social media. He sent out a tweet, in fact, and he has also talked about how Indian Navy has steadfastly protected the nation and has distinguished itself with its humanitarian spirit during the challenging times. Of course, we had seen how the Prime Minister had also spoken about our security forces without occasion as well. And now we're looking at on Navy Day as well, the Prime Minister coming out and sending wishes to the entire country on the occasion of Navy Day, and speaking about the Navy personnel and the qualities of our Navy personnel as well, and speaking about their humanitarian spirit during the challenging time as well. It is a high-stake battle between the BJP, the Aam Aadmi Party and the Congress in regard with the MCD polls. All of this, we are tracking the live updates. The voter is going inside. 8 a.m. is when the voting had started. It will continue till 5:30 in the evening. All of the latest update coming to you only on Republic TV, but right after a very, very short break. A high voltage battle which will decide the nation's political trajectory. Who will break their records and which faces will be the winners? 89 out of the 182 seats go to polls. Stay tuned to India's election news headquarters as Gujarat goes to polls. Live coverage minute by minute all day today on Republic. The mandate from the two states. It's been a high-stakes battle for the Prime Minister. Who will win Gujarat and Himachal? While the opposition was missing in action, the people have given the real mandate. Will the BJP retain both the states? Is the Aam Aadmi Party even a factor? Get the earliest peep into the verdict with Republic PMark exit poll, December the 5th at 6 p.m. Waterlogging has increased in the last 3 to 4 hours. Elphinstone station is shut, which means all those people who are hoping to go back home
When you look at that crowd, what's the message that Houston is sending out? There is also anticipation of a few announcements being made. What are your expectations when they both come up on stage? Are you expecting something big? I'm at the Jama Masjid in Bandra and there are thousands of people behind me. Why they are protesting, but the situation is pretty tense. Thousands of people that you see. 4 दिन की रिमांड है, 4 दिन की रिमांड. कुछ कहना चाहते हैं आप? पत्राचौल स्कैम, मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज के बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप? As Gujarat goes to polls on the 1st of December, 89 of 182 seats will vote. Where high voltage political battle has broken out in the state of Gujarat since the bipolarity of the state. Will the BJP score a record victory in Gujarat? Is the Aam Aadmi Party even a factor? Politics has been challenged for the first time. Watch the fastest updates only on India's election headquarters on Republic TV. आज के दिन जब दिल में दर्द है अपने जवानों की शहादत पर, उसी के साथ साथ जब ये नारे गूंजते हैं तो एक सुकून है, एक हिम्मत है। मैं इस वक्त जाफराबाद में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर फोर्स डिप्लॉयड है। कोशिश ये है पुलिस कर्मियों की, अर्धसैनिक बलों की कि यहाँ पर किसी तरह का कोई दंगा ना भड़क पाए। तो आपको लगातार बता रहे हैं कि किसान कानून वापस हुए हैं और किसान कानून Welcome back, viewers. Here's some news in brief. Amid increased incidents of unmanned aerial vehicles bringing drugs, arms and ammunition across the border in Punjab and Jammu and Kashmir, the Indian Army is preparing to counter drones sent by Pakistan. High-stakes Municipal Corporation of Delhi polls is all set to commence. In fact, has commenced and is largely a three-way contest between Aam Aadmi Party, BJP and Congress, in which 1,349 candidates are in the fray. As India celebrates Navy Day today, President Draupadi Murmu is to attend the grand celebrations organized by Eastern Naval Command in Visakhapatnam. Indian Navy is all set to demonstrate India's combat prowess and capability through an operational demonstration today. Officials state that Safdarjung Hospital was under a cyber attack as it had been for AIIMS Hospital. However, the damage was not so severe. Meanwhile, the AIIMS server continues to remain down. The first meeting of the Congress Steering Committee constituted by Party Chief Mallikarjun Kharge will be held on Sunday to decide the schedule and venue for its plenary session. This committee was formed in place for the Working Committee and the highest decision-making body of the party after Kharge took charge as the new Congress chief. The BJP on Saturday said that using abusive words against the Prime Minister Narendra Modi has become the new normal for the Congress. BJP spokesperson Chamit Patra cited reports of Karnataka Congress leader V.S. Ungrappa calling Modi Bhasmasur, a demon in Indian mythology, to hit out at the opposition party. He noted that it comes close to the heels of Congress President Mallikarjun Kharge throwing the Ravan barb at the Prime Minister. जब मौत का सौदागर कहा जाता है, दुर्योधन कहा जाता है, कॉकरोच कहा जाता है, चोर कहा जाता है और उसके बाद रावण और भस्मासुर कहा जाता है, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये एक डिजाइन है जो कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बार बार कर रही है, एक गुजराती के खिलाफ बार बार कर रही है। Gujarat government has filed an affidavit in the top court supporting the pleas seeking stringent laws on religious conversions. Government of Gujarat says that it has passed the law to stop religious conversions in the state. The affidavit also says that the right to freedom of religion does not include fundamental right to convert other people by force. Ahead of the second phase of Gujarat polls, the AIMIM is facing an internal revolt as former leader of AIMIM has spoken about the internal strategies of the party
and is claiming that AIMIM has had dealings to not win but cut into votes, and hence not much of a push is being given to the MLAs. A cold winter morning in Delhi, but on a very important day when MCD is all set to go to polls. Remember, voting that started at 8 a.m. will go on till 5:30 p.m. All the leaders urging voters to come out and vote in full swing. This is an important election for all your civic issues in the national capital. We are slipping into a very short commercial break. We'll be back on the other side with the very latest reporting from all the vantage points. Stay with Republic. आज के दिन जब दिल में दर्द है अपने जवानों की शहादत पर, उसी के साथ साथ जब ये नारे गूंजते हैं तो एक सुकून है, एक हिम्मत है। मैं इस वक्त जाफराबाद में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर फोर्स डिप्लॉयड है। कोशिश ये है पुलिस कर्मियों की, अर्धसैनिक बलों की कि यहाँ पर किसी तरह का कोई दंगा ना भड़क पाए। तो आपको लगातार बता रहे हैं कि किसान कानून वापस हुए हैं और किसान कानून वापस होने के बाद सीधे किसानों के बीच पहुंची हूं और किसानों से ही बात कर रही हूं। शाहीन बाग पर बुलडोजर चलेगा। शाहीन बाग को लेकर जो राजनीति गरमाई रही वो और ज्यादा गरमाएगी, ये बिल्कुल तय है। What is it that is unique about your father's story to build the largest logistics company? 99% in the movie, it is a real-time story what has happened with us in our life. That's what been captured. Why should a young person watch this film? All the youngsters out there, they want to be an entrepreneur just in overnight. मतलब वो shortcut देख रहे हैं. Any business for that matter or any work for that matter और success आपको overnight नहीं आती. This is that film. Pakistan that would boast to the Chinese and tell them that, we can guarantee you absolute peace in Afghanistan, build the China-Pakistan economic corridor right through the heart of Afghanistan. But in the last 1 year, more than 300 Pakistani soldiers and policemen have been killed by various factions of the Afghan Taliban and also the fearsome terrorist organization, the Tehreek-e-Taliban Pakistan. Today, Pakistan is suing for peace. A high-voltage battle which will decide the nation's political trajectory. Who will break their records and which faces will be the winners? 89 out of the 182 seats go to polls. Stay tuned to India's election news headquarters as Gujarat goes to polls. Live coverage minute by minute all day today on Republic. The mandate from the two states. It's been a high-stakes battle for the Prime Minister. Who will win Gujarat and Himachal? While the opposition was missing in action, the people have given the real mandate. Will the BJP retain both the states? Is the Aam Aadmi Party even a factor? Get the earliest peep into the verdict with Republic PMark exit poll, December the 5th at 6 p.m. Waterlogging has increased in the last 3 to 4 hours. Right outside Arvind Kejriwal's residence, the Delhi Chief Minister, who is all set to cast his vote, is expected to come out of his residence at about 9:30, and then he will make his way to the polling booth. This is the MCD election, a cold winter morning in the national capital, but extremely important. We've been seeing a high voltage campaign through the last 1 month, where we've seen BJP field their big names on the ground for the MCD campaign. We've also seen the Aam Aadmi Party and Arvind Kejriwal being the key face during this campaign.
And of course, for the Congress, they decided to go local, which is why they also released a local manifesto. But what looked like a tri-polar contest in 2017 is now looking more like a bipolar contest, and the BJP looking to reign its fourth term. Lots of reactions that have been coming in since this morning. Deputy Chief Minister Manish Sisodia, who also spoke a short while ago, let's listen into some of those reactions as leaders urge Delhiites to come out in large numbers and cast their votes. बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ बीजेपी से कुलजीत सिंह चहल थे, जिन्होंने एमसीडी चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया। And yes, our reporters on the ground reporting from all the vantage points. I'd like to introduce the entire team on the ground. We have Shivangi, Madhurima, Piyush, Tanisha, Piyush, all of us joining us. But really to understand why this is important, these are the MCD polls, and we've been seeing the pitch of the BJP, the Aam Aadmi Party, primarily where BJP is making promises of providing houses to those who live in slums. They've also been saying that they will handle water management better. On the other hand, it is the Aam Aadmi Party saying that when it comes to waste management, which is a huge issue in Delhi, is what they will be very keenly looking at. Also, development has been their pitch out and out. We also saw all the election controversies in the national capital, where the BJP went on all out to target the Aam Aadmi Party, be it on the liquor gate scam or the school gate scam, or even the high claims that the BJP released, but the Aam Aadmi Party went on to say that they are focusing on development. It has been a high voltage campaign that we witness on the ground throughout. Some reactions that are coming in, let's play them out. मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से विश्वास में है और हमारा एक ही एजेंडा है कि किस तरीके से दिल्ली ग्रीन और सस्टेनेबल बने, दिल्ली में पार्किंग की समस्या का निराकरण हो, दिल्ली पूरी तरह से पार्क अच्छे हो जाएं और नागरिकों को बेहतर सुविधा मिल सके। यही हमारा एजेंडा है, विकास, विकास और केवल विकास। केवल प्रचार से दिल्ली नहीं बन सकती है, दिल्ली में गुड गवर्नेंस की जरूरत है और जो विजन आत्मनिर्भर भारत का मोदी जी का है, उसको लेकर ही निगम आगे बढ़ेगी। बीजेपी यही अपील करती है कि सेवा ही विचार, नहीं खोखले प्रचार, और हमारा जो निश्चित रूप से महापौर मेयर भारतीय जनता पार्टी का होगा। दिल्ली को एक नई स्मार्ट ग्रीन सिटी बनाएंगे और दिल्ली को नेक्स्ट जेन एमसीडी में लेकर के जाएंगे। हमारा पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली के 1.5 करोड़ मतदाता भारतीय जनता पार्टी को चुनेंगे। जो और एमसीडी चुनाव की जो मतदान की जो तिथि है वो आज ही है। 8 बजे से शुरू भी हो चुके हैं मतदान। काफी तादाद में लोग आ रहे हैं दिल्ली में और मतदान कर रहे हैं। इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली प्रदेश बीजेपी महामंत्री कुलजीत सिंह चहल जी हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि कितनी एक्साइटमेंट है इस चुनाव को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चौथी बार फिर निगम में सरकार बनाने जा रही है। सुबह से जो रुझान, जो जिस तरह से सब मतदान केंद्रों से और मतदान पोलिंग बूथ से जो सारी खबरें आ रही हैं कि लंबी कतारें हैं भारतीय जनता पार्टी के टेबल्स पर, जो हमारे कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं और बता रहे हैं कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से ये चुनाव जीतने जा रही है। चुनाव जीतने के कारण भी है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में भ्रष्टाचार किया है, शराब घोटाला किया। हमने देखा किस तरह उनके मंत्री, हमने कहा दिल्ली देश ने देखा किस तरह से उनके मंत्री सतेंद्र जैन मसाज करा रहे हैं। कोई नया स्कूल नहीं खोला, कोई कॉलेज नहीं खोला। तो ये वोट है उनके भ्रष्टाचार पे चोट है, ये वोट है उनके शराब घोटाले पे चोट है, ये वोट है किस तरह से सतेंद्र जैन ने जेल मैनुअल की धज्जी उड़ाई, उस पर चोट है। और ये वोट है जो एमसीडी ने 15 साल में जो काम किए, जो विकास के काम किए हैं, जो कूड़ा मैनेजमेंट के काम किए हैं, जो एमसीडी ने कोविड के टाइम में जो 24 घंटे काम किए, जो एमसीडी ने स्कूल्स बनाए, पार्क बनाए, एमसीडी ने जनता के साथ कनेक्ट होकर जो सीधे काम किए, ये उस पर वोट है। और ये वोट है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो दिल्ली के लिए केंद्र सरकार के द्वारा किए गए काम है, आज ये उस पर वोट है। और दिल्ली के सभी मतदाताओं से आपके चैनल के माध्यम से अपील है हाथ जोड़कर कि आज इस लोकतंत्र के पर्व में अपना वोट जरूर दीजिएगा, अपने मतदान का उपयोग जरूर कीजिएगा। अच्छा सर, अगर बात करें तो इस बार का एमसीडी कई मायनों में खास हो जाता है चुनाव, क्योंकि एकीकरण भी हो चुका है एमसीडी का। इसके पहले हमने देखा 3 नगर निगम हुआ करते थे, अब जो है 1 कर दिया गया है, 1 महापौर होगा। और खासकर एक और सवाल मेरा है कि दिल्ली दंगों के बाद ये पहला एमसीडी का चुनाव है। कई जगह सेंसिटिव जो है बूथ, वहां एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट की गई है। तो किस तरीके से ये पूरा देखते हैं, दिल्ली दंगों के बाद ये पहला एमसीडी चुनाव? बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा मित्र आपने विशाल।
एमसीडी को एक किया गया। 3 एमसीडी थी, खर्चे ज़्यादा थे, 3 मेयर, 3 चेयरमैन, 3 कमिश्नर, अलग अलग 3 कमिश्नर, अलग बड़े खर्चे थे। तो माननीय गृह मंत्री जी ने जब दिल्ली की जनता की आवाज़ उन तक पहुंची तो उसको एक कर दिया। अब दिल्ली का एक मेयर होगा, जैसे पहले होता था। शीला दीक्षित ने इसको 3 में विभाजित किया, क्या मंशा रही होगी वो उनको पता है, पर अब एक मेयर होगा। जब एक मेयर होगा तो एक ज्वाइंट प्लान बनेगा और आने खर्चे घट जाएंगे, रेवेन्यूज बढ़ जाएंगे और केंद्र सरकार भी डायरेक्ट से मदद करेगा। तो आने वाले दिनों में एमसीडी का रेवेन्यू बढ़ेगा, लॉसेस। अब किसी को धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा सैलरी के लिए, अब किसी को अपने कार्यालय के बाहर नहीं बैठना पड़ेगा। ये एक एमसीडी का एक होने का एक लाभ मिलेगा। तीसरा, आपने कहा कि दंगे, निश्चित रूप से जनता अपने वार्ड में ताहिर हुसैन नहीं चाह रही है। वो पार्षद ताहिर हुसैन के रूप में नहीं चाह रही है, वो ऐसा पार्षद चाह रही है, वो सेवक चाह रही है, वो झूठे प्रचार, खोखले प्रचार नहीं चाह रही है। उसने देखा कि मुख्यमंत्री घूमते रहे, कोविड के टाइम में कोई काम नहीं किया, पॉल्यूशन के टाइम में फेल रहे, स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा पे फेल रहे। तो दंगे के जवाब होगी। ताहिर हुसैन, अमानतुल्लाह के जो जिस तरह से उन्होंने सपोर्ट किया उस पर जवाब होगा, और जिस तरह से भारत तेरे टुकड़े हो गए इंशा, उस पर जवाब होगा। हम कहते हैं तेरा वैभव अमर रहे माँ हम दिन चार रहे ना रहे, वो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो ये वोट उस पर होगा और भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। जनता ने मन बना लिया है कि हमें वार्ड में ताहिर हुसैन नहीं चाहिए, हमें एक सेवक चाहिए और वो सेवक भारतीय जनता पार्टी देगी। एक और सवाल है सर मेरा कि पिछली बार अगर देखें तो 272 वार्ड्स थे, जिसमें 181 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। इस बार वार्डों की संख्या भी घटा दी गई है, 250 कुल वार्ड्स हैं और 250 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो उतरे हुए हैं। तो क्या लगता है 250 में से कितनी इस बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में? 2/3 बहुमत से अधिक भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। जो कल के लास्ट मतदान से पहले के जो हम सब लोगों की बातचीत करते हुए छोटी टोली की जो एक इन्फॉर्मेशन थी कि बहुत स्थानों पर तो कांग्रेस लीड कर रही है, आम आदमी से दूसरे नंबर पे आ रही है और आम आदमी पार्टी तीसरे स्थानों पर जा रही है। और जो अभी सुबह की रिपोर्ट है कि उनकी टेबलें भी नहीं लगी हैं, उनके पोलिंग एजेंट भी नहीं मिल पा रहे हैं उनको। खूब कल दुर्गेश पाठक और उनके विधायक घर रात को बैठ के, रात को घूमते हुए खुद शराब और वो बांटते देखे। पूरा खेल किया जितना भी खेल कर सकते थे, शराब, पैसा, जितने भी कर सकते थे, पर उसके बाद भी इन सब मसलमैन, शराब, पैसे के बाद भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीतने जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ बीजेपी से कुलजीत सिंह चहल थे, जिन्होंने एमसीडी चुनाव पर अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर की और साफ तौर पर दिल्ली की जो जनता है उससे अपील की कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जाकर मतदान करें। वीडियो जर्नलिस्ट निशांत के साथ विशाल पांडे, रिपब्लिक भारत, दिल्ली। आज दिल्ली में एमसीडी के लिए मतदान है और दिल्ली के 1.5 करोड़ लोग आज दिल्ली नगर निगम के लिए अपनी सरकार चुनेंगे। तो मेरी सभी 1.5 करोड़ वोटर्स से रिक्वेस्ट है, उनसे निवेदन है कि आज एमसीडी में अपना मतदान करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि एमसीडी का सबसे पहला काम है दिल्ली का कूड़ा साफ करना, दिल्ली के कूड़े के पहाड़ खत्म करना, दिल्ली में व्यापारियों को ईमानदारी से लाइसेंस देना, दिल्ली की गलियों को बनवाना, दिल्ली में अंदर की कॉलोनियों की नालियाँ, गलियाँ सबको ठीक रखना, पार्कों को सुंदर रखना, ये सब एमसीडी के काम हैं। नाली, सड़क, पानी, जो पार्क हैं, ये सब एमसीडी के काम है। आवारा पशुओं से दिल्ली को साफ़ सुथरा रखना, ये सब एमसीडी के काम है। तो अपना वोट एमसीडी में यही सोच समझ कर दें कि आज आप दिल्ली को साफ़ सुथरा बनाने के लिए वोट कर रहे हैं, कूड़ा मुक्त दिल्ली बनाने के लिए वोट कर रहे हैं, कूड़े के पहाड़ हटाने के लिए वोट कर रहे हैं, एमसीडी में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए वोट कर रहे हैं। एमसीडी को जो उसका मेन काम है दिल्ली को स्वच्छ, साफ, सुंदर बनाना, उसके लिए वोट कर रहे हैं। मेरी सब वोटर्स से यही अपील है, आपके वोट के ज़रिए हम मिलकर दिल्ली को स्वच्छ बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे। सर, पिछले बार 54% वोटिंग हुई थी, दिल्ली वालों से ज़्यादा वोट करने की अपील करिए। रविवार का दिन है तो लोग छुट्टी का दिन ना समझें। मैं फिर से 1.5 करोड़ वोटर से अपील करना चाहूँगा कि मतदान बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है लोकतंत्र में जो हमको मिली है। दुनिया के बहुत सारे देशों के लोग इसके लिए तरसते हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से हम सबको ये अधिकार मिला हुआ है कि हम मतदान दे सकें और अपनी सरकार चुन सकें। इसमें बिल्कुल भी आलस्य ना करें और इसको उतना ही ज़रूरी समझें जितना हमारी ज़िंदगी के और काम हैं। आपके मतदान की बदौलत ही दिल्ली साफ सुंदर बनेगी।
Yes, viewers, those are the messages coming in from the top leaders of the BJP, the Aam Aadmi Party, where they are making their share of promises, eyeing the MCD elections in the national capital. 4th of December, I'm standing outside Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal's residence, who's expected to come out at about 9:30 a.m., after which he'll go and cast his vote. This is the kind of security deployment that we see at this point. But on this very important day, more than 40,000 personnel who have been deployed on the ground, all in all, across all the polling booths, where, remember, security has been heightened at some of the sensitive booths. Now, what really looked like a tripolar contest till about the previous election is looking more like a bipolar contest, where there is the BJP and the Aam Aadmi Party. We, of course, saw the BJP field their star candidates on the ground, all the bigwigs of the BJP, and even the Aam Aadmi Party that has been speaking of that how they're confident of a victory. We heard Raghav Chadda saying that Aam Aadmi Party will easily bag more than 230 seats in the national capital, whereas BJP is saying that they will win by a margin of over 2/3. My colleagues Madhurima and Shivangi, who are with us on the broadcast. Madhurima, I understand it's a cold winter morning on a Sunday in Delhi, but also the very important municipal polls, because this is really the national capital, and civic issues that need utmost priority also in terms of what the Delhiites have been facing. A little over 9 a.m., I believe it's about 9:10 at this point as we talk. What is it looking like at the polling booths? Are Delhiites coming out to vote? Because that's the message that all the leaders are putting out, that please come out in huge numbers and cast your vote. Well, absolutely, Swesha. We are reporting from Old Rajendra Nagar, and it's a very important constituency, as Gautam Gambhir will also come here around noon and cast his vote. These are the visuals right in front of the polling booth. We are joined by a couple of people over here. Sir, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है. किन मुद्दों को ध्यान पे रख के आज लोग, आप इसी एरिया के रहने वाले हैं, तो इस पूरे एरिया का क्या माहौल है ओल्ड राजेंद्र नगर का? क्या मुख्य मुद्दे हैं? मुख्य मुद्दे जहाँ तक लोकल की बात है, जो लोगों के बीच में आया, वो सफाई का मुद्दा रहा. सफाई के मुद्दे के ऊपर लोगों ने ये भी समझा कि दिल्ली गवर्नमेंट ने जो फंड्स एमसीडी को प्रोवाइड करने थे वो नहीं किए, और उसके कारण जो है ये सारी समस्याएं खड़ी हो गई. तो पोल्यूशन कितना बड़ा मुद्दा है? एयर पोल्यूशन भी है जी, और एयर पोल्यूशन है, नेशनल डिफेंस है, कई मुद्दे हैं. आपको हर उसमें सोचना पड़ता है ना जी. आप अगर दिल्ली गवर्नमेंट की बात को देखें तो आप देखिए कि वो जवाहरलाल नेहरू से लेके कश्मीर मुद्दे से लेके हर मुद्दे में उन्होंने इंटरवीन किया, और हर एक बात के ऊपर ये बताने की कोशिश करी कि ये सब क्यों गलत है. आपने भी वोट कर लिया है? अभी नहीं किया. आप किन मुद्दों को ध्यान में रख के आज वोट करेंगे? हम तो ये कहते हैं, ये जो सड़कें सब ठीक होनी चाहिए. जो ये काम करते हैं, काम करना चाहिए. ऐसे वोट लेके बैठ जाते हैं, ये तो गलत है ना जी. हाँ, तो आज आप कहेंगे कि लोग और आके बाहर वोट करें? हाँ, हम तो कहते हैं करना चाहिए. क्योंकि लोग पता लगे कि काम कर रहे हैं कुछ. ये जो गवर्नमेंट जो आए, बीजेपी है या कांग्रेस है या आपकी पार्टी आए, जो आए काम करे. So you can hear these voices, and there are multiple concerns of people here, from cleanliness to air pollution to the basic infrastructure. They want that if any party comes, they should take serious cognizance of these very important issues. Back to you. Absolutely, Madhurima. Let me also bring in Shivangi, because Shivangi, the Delhiites are speaking for how they look at Delhi and how the next term is extremely important. The BJP has in power, looking to reign a fourth term in, and confident of their victory, as they say. We saw the big names of the BJP on the ground. But what really is the story from where you are reporting as you interact with the people? Right, Swesha. Well, first of all, a very good morning to all our viewers of Republic TV, and to you, Swesha, as well. Right now, it is D-Day, it's polling day, and it's a very, very special booth here. It's completely pink. It's a pink polling station, and it's a model polling station as well, a voter assistance booth. Where I am reporting from, Swesha, now this polling booth is run by women completely. They're women security, female security as well, and women also registering the vote as well. It's completely run by women. The entire point is to make sure that women feel safe to come out in large numbers. It's also a model polling booth. So what does that mean? That means it has many amenities. It has water, it has
washrooms for both the genders as well. So even elderly, when they come to vote here, and we have seen many elderly come, many people have come here who are senior citizens, and they have cast their vote. And I would also like to appeal to everybody who's watching right now in Delhi, even the youngsters, to come out and vote in large numbers. So we have been speaking to some voters as well. He has just voted. Could you show your ring finger to the camera? So he has just voted as well, and he's very, very excited. He's enthusiastic as well. What are the big issues right now? जो बड़े-बड़े issues हैं, मुद्दे हैं. What do you think? फिंगर नहीं आ रही ना यार. सर वोट दे दिया है. कमाल कर रहे हैं. बोले डॉक्टर. यार do not shout ना. आराम से तो बोलो. अरे यार क्या कर रहे हो? जी डॉक्टर साहब बोलिए. अरे कैमरा पीछे करो. मैं आपको मोबाइल आपको सब 10 कदम आगे बस. प्लीज थोड़ा सा साइड इसके वोटिंग में दिक्कत आएगी. इसको थोड़ा सा आगे ले लो. थोड़ा सा साइड ले लो. थोड़ा वोटिंग में दिक्कत है. वोटिंग में दिक्कत नहीं. थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं. थोड़ा पीछे हो जाओ. माइक ऊपर जो मुद्दे डॉक्टर साहब बीजेपी ने उठाए चुनाव में, क्या आज भी मतदाता वही सोच के निकला है? आपको पता है कि किस मुद्दे पर उसे वोट डालना है? देखिए, मतदाता बहुत समझदार होता है और मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली के मतदाता बाहर भी निकलेंगे बड़ी संख्या में, विशेषकर युवा भी बाहर निकलेंगे, हमारी माताएं बहनें भी निकलेंगी और दिल्ली के मतदाता जो पार्टी सबसे ज़्यादा ईमानदारी से अपना राष्ट्र धर्म, अपना समाज धर्म, अपना मानव धर्म पालन करती है, उसको मजबूत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पार्टी राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्र के विकास के मुद्दों को लेकर भारत को नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने का प्रयास कर रही है, उसके पक्ष में निश्चित रूप से वोट करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि दिल्ली को प्रदूषण से मुक्ति मिले, दिल्ली में यमुना मैया साफ और निर्मल हो, दिल्ली शराब की राजधानी ना बने, दिल्ली में गरीब लोगों की झुग्गियों के स्थान पर उनके लिए मकान बने और दिल्ली और सुंदर बने। मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली के लोग ये नहीं चाहते कि दिल्ली के अंदर भ्रष्ट लोग, ऐसे लोग जो राजनीतिक मूल्यों के नाम पर सत्ता में आए और सबसे अधिक जिन्होंने राजनीतिक मूल्यों को समाप्त भी किया है, उनको पूरी तरह से नष्ट किया है, वो भ्रष्टाचार के बड़े बड़े पहाड़ों पर बैठे हैं। कोई जेल में है, किसी की आधा दर्जन बार बेल रिजेक्ट हो चुकी है, किसी के साथियों के खिलाफ हजारों पेज की चार्जशीट सीबीआई के द्वारा दर्ज की जा रही है, किसी पार्टी के 49 विधायकों के ऊपर 169 भ्रष्टाचार के केस पिछले 7 साल के अंदर दर्ज हो गए हों। ये सारी बातें दिल्ली की जनता बहुत गहराई और गंभीरता से देख रही है। उसने पिछले 15 साल में एमसीडी के शासन में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए अच्छे कामों को देखा है। वो दिल्ली में जब 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस सरकार का भी काम उसने देखा है और आज पिछले 8 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से भारत का नाम देश और दुनिया में रोशन किया है, देश को एक असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, देश के अंदर समाज जीवन के हर क्षेत्र के लिए, हर व्यक्ति के लिए, गरीब, मजदूर, किसान, महिला, नौजवान, बुजुर्ग, सबके स्वाभिमान के लिए काम किया है। और कोई समाज जीवन के अंदर कोई ऐसा वर्ग, कोई क्षेत्र नहीं है जहां प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों के द्वारा
करोड़ों लाभार्थियों की लंबी एक सूची ना हो। तो मैं समझता हूं कि दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, अपने विवेक का इस्तेमाल करेगी, बड़ी संख्या में घर से बाहर निकलेगी और जब यहां आएगी तो निश्चित रूप से देश हित के अंदर, समाज हित के अंदर, मानव हित के अंदर वो वोट करेगी। इतना ही मुझे आज इस अवसर पर कहना है। कितनी सीटें देख रहे हैं आप? क्या कूड़ा कचरा साफ सफाई की बात नहीं होगी चुनाव में? किसकी? कूड़ा कचरा गंदगी जो है दिल्ली में। नहीं, कूड़ा कचरे की क्यों नहीं बात होगी? कूड़े देखिए, ये दिल्ली के अंदर MCD ने शायद जितना अच्छा काम कूड़े के मसले पर किया है, आज दिल्ली का 70-80% कूड़ा जो है वो वेस्ट टू वेल्थ में परिवर्तित होता है। एनर्जी के अंदर हजारों जो है टिपर जो है वो सैकड़ों घरों के अंदर जो है सुबह सुबह कूड़े को उठाते हैं। So that is Dr. Harshvardhan, who's just cast his vote, once again attacking the Aam Aadmi Party over the work in Delhi and lauding the BJP, especially during COVID, also saying how the issue of air pollution, when the Aam Aadmi Party is ruling the government in the national capital, has still not been solved. Meanwhile, urging the voters to come out in huge numbers. Let's also understand that many who have already begun to come out, 8 a.m. is when the polling had begun, who are speaking to our teams, our reporters on the ground of how they look at Delhi. BJP, looking to retain its fourth term, has been in power for the last 15 years, but the Aam Aadmi Party also saying that they're confident of their victory in these MCD elections, saying that it will be easier if the Delhi government works in tandem with the MCD, and it is the Aam Aadmi Party that is in power in both. Here are some of the reactions of Delhiites who've come out to cast their votes. सबसे पहले सफाई जो है दिल्ली में दिन पे दिन खराब होती जा रही है। एक सफाई है और एक प्रदूषण। ये दोनों ऐसे मुद्दे हैं जो हम सीनियर सिटीजनों को काफी परेशान कर रहा है। अच्छा, आप इतनी जल्दी सुबह उठ के वोट डालने आए, कहीं ना कहीं आप चाहेंगे कि लोग और एंकरेज हो, जब भारी मात्रा में आए वोट डालने? बिल्कुल, एक यही तो हक है जो आपके पास छोड़ रखा है नेताओं ने। बाकी तो सब उन्हीं के हाथ में है। अगर जब तक हम लोग अपना खुद हक नहीं डालेंगे, we can't expect anything from them unless we do ourselves do something. Yes, we have a responsibility to vote that we have to do. Okay, yes, so yes, I was asking you about the issues. What are the issues you focused while you cast your vote? Issues, so firstly is cleanliness, second is pollution, and then thirdly followed by health. कि आपके अस्पताल में जो बुरी हालत है आजकल, कि वहाँ health services should be better. Do you think that enough has not been done and lot needs to be done? Lots needs to be done. Lot need to be done. कुछ किया है, 15 साल में हुआ है, but not that much. Still, it's just a beginning, we will say. Absolutely, and those are the Delhiites speaking for themselves, raising the very issues that Delhi is facing at this point. And waste mismanagement, that is also one of the issues that the Aam Aadmi continues to put out in its poll promises of solving this issue. But let's also understand where the BJP is focusing on, because it is the BJP that has promised houses for those living in slums. If I can also bring this point with my colleague Tanisha, who is joining us on the ground, because Tanisha, while we saw star campaigners of the BJP, including Hardeep Singh Puri, who had campaigned for the BJP on the ground. But talking about this particular issue that BJP is promising to resolve when it comes to BJP outlining the master plan for housing, and also putting out details of the Delhi master plan of 2041, throw light on this of what the BJP is going to focus on in this term if they come back to power. Right, Suesha, it is a 12-point manifesto that the BJP had released. But before I get to that, I have few voters with me. We'll first take an idea about what are the main issues that they have been voting on. Remember, as you were saying, what looked like a triangular battle is now coming out as a bipolar battle. I was talking to a few of the viewers. Let's also talk to them about what are the issues that will be voting on. Ma'am, आपने अपना vote cast कर लिया. We would just like you to show your ink finger to the camera. आपने किस किस मुद्दों पे आज वोट डाला है? मैंने आपको पहले ही बताया, मेन तो हमारा सफाई का मुद्दा है,
क्योंकि हमारी कॉलोनीज, हमारी दिल्ली बहुत गंदी है। जगह जगह आपको कूड़ेदान मिलेंगे, कूड़ा मिलेगा। नीट एंड क्लीन होना चाहिए। पानी इकट्ठा होता है, बारिश होती है तो पानी जमा हो जाता है। तो मेन मुद्दा तो हम लोगों का ये कि हम लोग सफाई चाहते हैं बस दिल्ली में। दिल्ली नीट प्लस हमारी कॉलोनी जो है VIP कॉलोनीज है, अच्छी कॉलोनीज है, तो हम नीट एंड क्लीन चाहते हैं इस कॉलोनीज को। मेन हमारा मुद्दा है। बाकी मुद्दे तो कई हैं पर क्या आपका। मैम, ये जो आनंद निकेतन एरिया है जहाँ पे हम लोग हैं अभी, ये बहुत एक पॉश एरिया लग रहा है कि आपको लगता है यहाँ पे भी कूड़े की दिक्कत है? कूड़े की दिक्कत भी है, जो पार्क्स वगैरह हैं हमें वो भी नीट एंड क्लीन चाहिए, क्योंकि वहाँ लोग घूमने जाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो वो भी थोड़ा अच्छा चाहिए। ब्यूटी भी चाहिए वहाँ, बच्चों के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ हों। छोटे बच्चे हैं, उनको भी बाहर जाके अच्छा करना। अगर कूड़े में वो खेलते रहेंगे तो क्या फ़ायदा है, ठीक है ना। और बाहर से हम एंटर कर रहे हैं तो वहाँ भी हमें एंट्री भी अच्छी चाहिए। ऐसे हम सब करेंगे अपनी अपनी कॉलोनी का तो सारी दिल्ली ही अच्छी हो जाएगी। हमें धीरे धीरे हर कॉलोनी का करना पड़ेगा ना। और मैम, सर, आई वुड ऑल्सो वांट टू टॉक टू यू। The issue of air pollution is quite persistent here. We as youngsters are facing problem. So I'm sure there are more people who are facing. Is that also one of the issue, air pollution? Because garbage, as she said, is one of the issue here. It's a posh area, but still the problem of garbage is still persistent. Do you think air pollution could also be one of the issue? No, air pollution is everywhere in north of India in the winter season. Because all the media are in Delhi, so they show all the air pollution of Delhi on the TV. Otherwise, you go any part of North India, there is air pollution. But yes, in Delhi, there is a problem of the jhuggis, the ढेर of kachras, garbage everywhere. That is the main problem of Delhi. All the jhuggis which are on the footpath of Delhi, or every colony, every government land, that should be removed. Right. So you're a young voter here. What are the issue that you've been focusing on? Quickly in 10 seconds. Well, the only issue for this election is cleanliness. कूड़े के बहुत बड़े-बड़े ढेर हैं दिल्ली के चारों तरफ, अच्छा नहीं लगता आते हैं तो बस यही एक issue है इस बारी तो। Right, so there you see the main issue that the voters have been focusing here are that of the garbage, or that of cleanliness here, and also air pollution is one of the major factors that the people of Delhi will be casting their votes on. All of these major updates that Republic is getting to you on this mega MCD polling day today, and results on the 7th of December. But all of that will get you more updates right after a very, very short break. मेरी नजरों से चुना, तेरी हरकतों से सुना, कभी जीती तू, कभी मैं हारा, फिर भी खूबसूरत है ये नजारा, क्योंकि इसमें है खुला कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा। अमेजिंग स्पेसेस के लिए ग्रीन लैम लैमिनेट्स, कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा। The mandate from the two states. It's been a high-stakes battle for the Prime Minister. Who will win Gujarat and Himachal? While the opposition was missing in action, the people have given the real mandate. Will the BJP retain both the states? Is the Aam Aadmi Party even a factor? Get the earliest peep into the verdict with Republic PMark exit poll, December the 5th at 6 p.m. Waterlogging has increased in the last 3 to 4 hours. Elphinstone station is shut, which means all those people who are hoping to go back home. When you look at that crowd, what's the message that Houston is sending out? There is also anticipation of a few announcements being made. What are your expectations when they both come up on stage? Are you expecting something big? I'm at the Jama Masjid in Bandra, and there are thousands of people behind me. Why they are protesting, but the situation is pretty tense. Thousands of people that you see. 4 दिन की रिमांड है, 4 दिन की रिमांड। कुछ कहना चाहते हैं आप? पत्राचौल के मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज के बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप? As Gujarat goes to polls on the 1st of December, 89 of 182 seats will vote. Where high voltage political battle has broken out in the state of Gujarat since the bipolarity of the state. Will the BJP score a record victory in Gujarat? Is the Aam Aadmi Party even a factor? Politics has been challenged for the first time. Watch the fastest updates only on India's election headquarters on Republic TV. आज के दिन जब दिल में दर्द है,
अपने जवानों की शहादत पर उसी के साथ साथ जब ये नारे गूंजते हैं तो एक सुकून है, एक हिम्मत है। मैं इस वक्त जाफराबाद में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर फोर्स डिप्लॉयड है। कोशिश ये है पुलिस कर्मियों की, अर्धसैनिक बलों की कि यहाँ पर किसी तरह का कोई दंगा ना भड़क पाए। तो आपको लगातार बता रहे हैं कि किसान कानून वापस हुए हैं और किसान कानून वापस होने के बाद सीधे किसानों के बीच पहुंची हूं और किसानों से ही बात कर रही हूं। शाहीन बाग पर बुलडोजर चलेगा। शाहीन बाग को लेकर जो राजनीति गरमाई रही वो और ज्यादा गरमाएगी, ये बिल्कुल तय है। I've been breaking news coming in now. Sources have informed that YSRTP chief YS Sharmila, who was to resume her Padyatra today, has now been put on hold. It has been stated that police have not yet given permission for her to resume her Padyatra. Sources say YSRTP legal team is looking into other possible options. The court had given the clearance for her to go ahead with her Padyatra. So the YSRTP now put on hold, and YS Sharmila's legal team looking into at other options, even as she had resolved to resume her Padyatra today. She is the YSRTP chief, and YS Sharmila has been in the eye of the storm for some time now, ever since she entered Telangana. And there was high drama there as her car was stowed away, and even the governor of Telangana had stepped into the controversy, as she had made it clear that this was no way to treat a political leader, a female political leader. YSRTP now says that there is no police permission yet to continue. Earlier, the court had given the go-ahead, but now YSRTP says that permission has not been granted by the police yet for her to continue her Padyatra. And Aneri joining us with this latest development in this highly dramatic story. Aneri, over to you. We hear that the YSRTP not allowed now to continue with YS Sharmila's Padyatra. Well, that's right. We have been seeing that YS Sharmila was all set to begin her Padyatra, but now we see that she has not got permission of official. Well, there seems to be an issue with your audio, Aneri. We'll be coming back to you after, just looking into that. But what we're hearing now is that YSRTP, that's YS Sharmila's party, is now mulling over legal options that the party has in order to continue with her Padyatra. So high drama there as far as YSRTP leader YS Sharmila's Padyatra is concerned. She was resolved and she had announced that she would resume it today. But it appears that the police are proving to be a roadblock in the continuation of her Padyatra. Literally. Her legal team looking into other options. Earlier, the court had given her the go-ahead as far as the Padyatra was concerned. She is the founder president, as our viewers are aware, of the YSR Telangana party, and the younger sister of Andhra Pradesh Chief Minister YS Jagan Mohan Reddy. A very good morning, viewers. We are live right now as polling has begun at 8 a.m. MCD polls. We are at a pink polling station. It's completely pink and run by women only. And very, very interesting to see that today it's going to be a fierce battle between the Aam Aadmi Party and the BJP specifically. Aam Aadmi Party trying to prove a point in the MCD polls as well. All right, we're getting some reactions coming in. Let's go to that right now. MCD में रहने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलने के बाद, खुद भारतीय जनता पार्टी के पार्षद होने के बाद, अगर
डिबेट्स में जो हमारी कॉलोनी के अंदर डिबेट्स बुलाते हैं, RWS डिबेट्स बुलाते हैं और उनमें पूछते हैं तो वो कहते हैं साफ़ सफाई सबसे बड़ा मुद्दा है। तो इसमें मतलब ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि इस बार लोग जो हैं अच्छे, शरीफ, ईमानदार लोगों को वोट देंगे। जो गुंडागर्दी है, जो बदतमीज़ी है, जो गाली गलौज है, उसको जो है दरकिनार करेंगे। हमारे यहाँ भी आप देखिए चिराग दिल्ली के अंदर बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो लोग खड़े हैं वो खड़े हैं जिनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं, जिनके ऊपर पिछली बार चुनाव के दौरान ही हमारी पार्षद के साथ छेड़छाड़ करने का मुकदमा दर्ज हुआ, लड़ाई झगड़े के मुकदमे दर्ज हुए। ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी का पटका डाल के कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो डराने धमकाने की कोशिश जो है वो हो रही है, गाली गलौज की कोशिश हो रही है। बट इस बार लोग जो है काम को वोट देंगे, काम करने वालों को वोट देंगे, दिल्ली को जो लोग चमकाएंगे उनको वोट देंगे। अच्छा, जो ट्वीट हो रहा है, जो आरोप लग रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? बीजेपी ने ट्वीट किया है और कहा है कल दुर्गेश पाठक और विजेंद्र गर्ग गए थे। देखिए, बीजेपी तो पिछले 6 महीने से उनके पास कोई बात नहीं है कि 15 साल हमने क्या किया, 5 साल अगर आए तो क्या करेंगे। सिर्फ और सिर्फ भद्दी। It's the biggest coverage right now from New Delhi, and we are getting you every second of the update. A lot of controversy also happened during campaigning as well. And as a BJP, like I was telling our viewers, BJP had star campaigners. They had called in Pushkar Singh Dhami. They had called in Manohar Lal Khattar as well. And let's go to Suesha. Suesha, for the Aam Aadmi Party, it was Arvind Kejriwal, and I believe he'll be moving out very soon from where you are. Yes, absolutely, Shivangi, and I see a lot of movement here. You see all these vehicles are just getting ready for Chief Minister Kejriwal, who is all set to leave from his residence anytime now. You see the security deployment right outside this gate, and you see how the vehicles are now getting positioned. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal and the cavalcade just getting positioned to leave for the polling booth. Chief Minister Arvind Kejriwal will be casting his vote for the very important MCD polls. We've seen the high voltage campaign on the ground by the Aam Aadmi Party, of course targeting the BJP, where they say that their focus has been on development, and they also say that since the Aam Aadmi Party is in power in the national capital, it will be in many ways beneficial for the people since some of the functions overlap. So that is how the Aam Aadmi Party has been making its pitch and sounding very confident of a victory, because we also remember how Raghav Chadha had said that the Aam Aadmi Party will bag more than 230 seats out of 250 wards that are set to go to polls. And you see the movement. I want my VJ Anil to focus on what is happening outside the Delhi Chief Minister's residence right now. What seemed rather quiet until now. 9:30 a.m. was the time that was scheduled. We are at 9:36 a.m. and you see how the security personnel are now getting ready. Even when I talk to you about Delhi in terms of 40,000 personnel on the ground who are positioned, especially at the sensitive polling booths where the security has been heightened, and that include Delhi police personnel, home guards, paramilitary forces who are on the ground manning every important point on this day. Remember, the BJP is been in power for the last 15 years when it comes to the MCD, and they are looking to rein in a 4th term. Again, like we've been talking since this morning, that what we saw in 2017 vis-a-vis what it was in the previous term, where it looked more like a bipolar contest between the Congress and the BJP, and then a tripolar contest in 2017 where it was the BJP, the Aam Aadmi Party and the Congress. But this time, of course, we've seen that campaign on the ground, and once again the Aam Aadmi and the BJP really fighting neck to neck when it comes to the MCD polls. Once again, the promises that have been made, because Aam Aadmi Party continues to say, besides all the election controversies, that they are focusing on development. A lot of Delhiites that we've been speaking to since this morning, Shivangi, where they say that they want cleanliness, they want garbage management, they want parks, they want parking facilities, they want better education, better health facilities, and like I said, some of these functions that overlap with the Delhi government. But then the BJP also saying that the double engine Sarkar strategy that will majorly work, because they are in the center, and they have been ensuring that things on the ground when it comes to civic issues for Delhi can be better managed. Like you see more and more personnel who are gathering here, and they've also told us to
stand at a corner because Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal will be moving out any minute now. He will be moving out of this gate. Not too sure if he'd really talk at this point, but yes, he will be going to cast his vote, Shivani. Right. Well, Suesha, like you were saying, it's going to be something to watch out for when Arvind Kejriwal comes out. He, of course, will be counting on votes this time. He has a point to prove, but the BJP very, very adamant on making sure that they win these elections once again, maybe with a higher number. Now, Suesha, like you were telling us, and like you, let's tell our viewers the same thing, is that a very, very important point when it comes to civic issues, that is sanitization, that is air pollution, that is garbage, landfill, roads. These are civic issues which affect the day-to-day life of every citizen in Delhi. That is why the MCD polls are very important to make a change. Many people are going inside right now. You can see that voters are going inside. Some of them are coming with their families as well. You can see that all female, all women personnel are at this booth. They're manning the booth right now. And when we talk about the controversies, viewers and Suesha as well, who's with me right now, controversies before these polls, it really showed how much of a high-stake battle this poll really is. Now, number one is Liquorgate policy. Liquorgate, which was excise policy, which is completely scrapped right now. Manish Sisodia was the number one accused there. That has tainted the Aam Aadmi Party before the polls. Number two, very, very interesting development when two people from the Congress, Sandeep Dixit and one of his colleagues, they're fighting in the Congress just before MCD polls. And number three, Congress stirred up a huge controversy when they appointed Jagdish Titler, 1984 right-wing accused, in their Delhi committee. Very, very, controversial move made by the Congress. In fact, the BJP has slammed. All right, we're getting some reactions. Adesh Gupta there. Let's play that out for our viewers. बहुत आशा भरी नजरों से इस चुनाव को देख रही है और जिस तरह से पूरे चुनाव कैंपेन में दिल्ली की जनता का जो प्यार, आशीर्वाद, समर्थन मिला है, उससे मुझे पूर्ण विश्वास है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी दोबारा से चौथी बार हम निगम में चुनाव में जीतने वाले हैं। और मुझे जिस तरह से आम आदमी पार्टी के जो 8 साल का इतिहास रहा है, वो दिल्ली की जनता के साथ उन्होंने लगातार धोखा दिया है। लेकिन सर, जिस तरीके से आप पार्षद भी हैं और साथ साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, ऐसे में जिम्मेदारी दोहरी है आपके ऊपर। क्या लगता है, फ्लाइंग कलर्स के साथ पास होंगे या फिर चुनौती है? देखिए, पूरा सतरंगी जो आसमान है वो बीजेपी की ओर है और दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के दोहरे चरित्र को, दोहरे चेहरे को पहचान गई है कि कहते हैं ईमानदार हैं और भ्रष्टाचारी वो सरकार बने हुए। करप्शन के कई मामले सामने आए हैं, चाहे वो सत्येंद्र जैन का वीडियो हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया के हैंडसेट बदलने का मामला हो, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, भ्रष्टाचार छुपाने के लिए मोबाइल फोन बदलो, रंग बदलो, कपड़े बदलो, लेकिन भ्रष्टाचार छुपता नहीं है। ये दिल्ली की जनता ने देख लिया है और दिल्ली की जनता अब इनको जवाब देने वाली है, ये आज के चुनाव में। 15 साल से एमसीडी पर बीजेपी ही काबिज है, क्या इस बार अलग देखिए क्योंकि एकीकरण हुआ है? काबिज तो दिल्ली की जनता ने किया है और दिल्ली की जनता चौथी बार भी बीजेपी को चुनने जा रही है। All right, viewers, Adesh Gupta very, very confident that the BJP is going to come back to power again in the MCD polls. And remember that the MCD polls is just between the Gujarat first phase elections and the second phase of Gujarat elections. The counting will be on 7th, the result is on 7 MCD and 8th for the Himachal Pradesh and Gujarat elections. Very क्या मुद्दे रहेंगे जनता के बीच में, आपके किन मुद्दों पे आप चुनाव? देखिए, पूरी दिल्ली का एक ही मुद्दा है कि एमसीडी दिल्ली को साफ सुथरा करे। दिल्ली के लोगों से हमारी यही अपील है कि दिल्ली को साफ सुथरा करने के लिए, दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त एमसीडी में ईमानदार सरकार बनाने के लिए काम करने वालों को वोट दें। पूरी दिल्ली से अपील है कि घर से निकलिए
और वोट दीजिए, क्योंकि पूरे दिल्ली को साफ करना है तो हम सबको ज्यादा से ज्यादा मतदान करना पड़ेगा, काम करने वालों को जिताना पड़ेगा, जिससे कि हम दिल्ली को साफ, स्वच्छ और सुंदर बना सकें। थैंक यू। झाके रे झाके, झरोखे से झाके, हैरत से आंखें, अपनी सी दुनिया नई रंगी लागे, ख्यालों की खिड़की से मन कूदे भागे। झाके रे झाके, झरोखे से झाके, दंग है छोटे बड़े सारे, झाके रे झाके, हर कोई ताके, तरक्की को टुक टुक हर कोई ताके। झाके रे झाके, झरोखे से झाके। Reimagineering brighter futures with smarter steels. ArcelorMittal Nippon Steel India. Smarter steels, brighter futures. What is it that is unique about your father's story to build the largest logistics company? 99% in the movie, it is a real-time story what has happened with us in our life. That's what been captured. Why should a young person watch this film? All the youngsters out there, they want to be an entrepreneur just in overnight. मतलब वो shortcut देख रहे हैं. Any business for that matter or any work for that matter और success आपको overnight नहीं आती. This is that film. Pakistan that would boast to the Chinese and tell them that, we can guarantee you absolute peace in Afghanistan, build the China-Pakistan economic corridor right through the heart of Afghanistan. But in the last 1 year, more than 300 Pakistani soldiers and policemen have been killed by various factions of the Afghan Taliban and also the fearsome terrorist organization, the Tehreek-e-Taliban Pakistan. Today, Pakistan is suing for peace. A high voltage battle which will decide the nation's political trajectory. Who will break their records and which faces will be the winners? 89 out of the 182 seats go to polls. Stay tuned to India's election news headquarters as Gujarat goes to polls. Live coverage minute by minute all day today on Republic. The mandate from the two states. It's been a high-stakes battle for the Prime Minister. Who will win Gujarat and Himachal? While the opposition was missing in action, the people have given the real mandate. Will the BJP retain both the states? Is the Aam Aadmi Party even a factor? Get the earliest people. A very good morning to you viewers. You are watching the biggest coverage on the MCD polls. This is the biggest coverage. All our reporters are at every place here in Delhi getting you top updates. MCD polls becoming one of the most important polls this year. And the reason is very, very simple. A prestige battle between Aam Aadmi Party and the BJP. I'm outside the pink polling station. Now, this is a very special polling station. We spoke to some voters coming out and they said they have great facilities in there. There's a selfie point as well. There's water, toilets as well for the voters, for the elderly to come in.
In fact, Tanisha is as there as well at a polling station. Tanisha, you've been speaking to voters and we are seeing them turn up slowly. The voting will start at 8 a.m. Started at 8 a.m. It will start at 5:30 p.m. What is happening where you are, and what are the key issues that the voters are bringing up? What changes do they want to see in Delhi for the positive? Right, Shivangi, I am right now here at the Anand Niketan area. Where we are right now is where Hardeep Singh Puri, Union Minister, is expected to arrive in just few moments from now. We were talking to the voters. In fact, we have the elderly couple who's coming out. They've just voted. Ma'am, आपने अपना वोट कास्ट किया है सर. किस किस मुद्दों को ध्यान रखते हुए आपने अपना वोट अंदर दिया है? काम करने के लिए, हाँ. आपको लगता है कि यहाँ पे कूड़ेदान का इशू या कूड़े का इशू, एयर पोल्यूशन का इशू बहुत ज़्यादा है? वो तो है बिल्कुल, हाँ बिल्कुल है. तो आप क्या चाहते हैं, जो पार्टी पावर में आएगी अभी यहाँ पे, आप क्या चाहते हैं कि वो लोग किस मुद्दे पे काम करें ज़्यादा? They should improve everything and there should be no corruption at all. Thank you, sir. So there you see the main issues that the elderly couple or even the youngsters that they have been voting for is obviously number one, the corruption. The other issues are the garbage heap that's there even in posh areas and not just in other areas. And the other issues, the main issue that they've been fighting for and which the BJP and the Aam Aadmi Party has been exchanging war of words is the corruption issue of corruption. Remember, there were a slew of press conferences that the BJP had done where they had alleged that MCD, that if they voted to MCD again in the fourth consecutive year, they will, take care of everything that's missing. And the Aam Aadmi Party, on the other hand, has been alleging that if the BJP comes to power again, the corruption will take a high road in the national capital. So where we have few voters who are going inside. We have a few voters who are going inside. Ma'am, आप किस मुद्दे पे आज हैं जो आप वोट करेंगी? सबके साथ हैं. अभी तो रिजल्ट बताएगा क्या आता है क्या नहीं आता है, लेकिन करप्शन बहुत है. अच्छा ही आना चाहिए कोई नेता हमारा. There you see, corruption is the major issue. I was telling, it'll be very interesting to see who will win the battle of prestige in the national capital. Back to you. Well, right, Tanisha. So corruption becoming one of the top issues right now, and the Aam Aadmi Party being on a back foot there because of the corruption charges, Liquorgate as well, and Satyendra Jain also in jail at this point of time over those money laundering charges. Time for a very short break. People taking selfies. As we take a break, people taking selfies after voting. The enthusiasm is high as MCD polling has begun. It'll end at 5:30 p.m. Stay tuned to Republic TV. Biggest coverage only right here. मेरी नजरों से चुना, तेरी हरकतों से सुना, कभी जीती तू, कभी मैं हारा, फिर भी खूबसूरत है ये नजारा, क्योंकि इसमें है खुला कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा. अमेजिंग स्पेसेस के लिए ड्रीम लैम लैमिनेट्स, कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा. As Gujarat goes to polls on the 1st of December, 89 of 182 seats will vote. Where high voltage political battle has broken out in the state of Gujarat since the bipolarity of the state. Will the BJP score a record victory in Gujarat? Is the Aam Aadmi Party even a factor? Politics has been challenged for the first time. Watch the fastest updates only on India's election headquarters on Republic TV. आज के दिन जब दिल में दर्द है अपने जवानों की शहादत पर, उसी के साथ साथ जब ये नारे गूंजते हैं तो एक सुकून है, एक हिम्मत है. मैं इस वक्त जाफराबाद में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर फोर्स डिप्लॉयड है. कोशिश ये है पुलिस कर्मियों की, अर्धसैनिक बलों की कि यहाँ पर किसी तरह का कोई दंगा ना भड़क पाए. तो आपको लगातार बता रहे हैं कि किसान कानून वापस हुए हैं और किसान कानून वापस होने के बाद सीधे किसानों के बीच पहुंची हूं और किसानों से ही बात कर रही हूं. शाहीन बाग पर बुलडोजर चलेगा. शाहीन बाग को लेकर जो राजनीति गरमाई रही वो और ज्यादा गरमाएगी, ये बिल्कुल तय है.
What is it that is unique about your father's story to build the largest logistics company? 99% in the movie, it is a real-time story what has happened with us in our life. That's what been captured. Why should a young person watch this film? All the youngsters out there, they want to be an entrepreneur just in overnight. मतलब वो shortcut देख रहे हैं. Any business for that matter or any work for that matter और success आपको overnight नहीं आती. This is that film. Pakistan that would boast to the Chinese and tell them that, we can guarantee you absolute peace in Afghanistan, build the China-Pakistan economic corridor right through the heart of Afghanistan. But in the last 1 year, more than 300 Pakistani soldiers and policemen have been killed by various factions of the Afghan Taliban and also the fearsome terrorist organization, the Tehreek-e-Taliban Pakistan. Today, Pakistan is suing for peace. Thank you for staying with Republic. And as you see, preparations are underway outside Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal's residence, where he's set to leave any time now. He will be making his way to cast his vote on the very important day of the MCD polls. You see how the security deployment is heightening now, and this entire cordon that is being created as Delhi Chief Minister is all set to leave. The cavalcade that is getting ready, the gates that had opened just a few minutes ago and are now going to open, as it will be Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal leaving from his residence in the national capital, making his way to the polling booth. As all the leaders have been urging Delhiites to go out in large numbers and vote, close to 1.5 crore people in Delhi who should cast their votes for the MCD elections, which is dealing with all the issues on the ground, all the civic issues, and this entire cordon that is being created here. We are slipping into a very short commercial break. We'll be back on the other side, tracking every single frame of from all the vantage points on this very important day. Stay with us. A high voltage battle which will decide the nation's political trajectory. Who will break their records and which faces will be the winners? 89 out of the 182 seats go to polls. Stay tuned to India's election news headquarters as Gujarat goes to polls. Live coverage minute by minute all day today on Republic. The mandate from the two states. It's been a high-stakes battle for the Prime Minister. Who will win Gujarat and Himachal? While the opposition was missing in action, the people have given the real mandate. Will the BJP retain both the states? Is the Aam Aadmi Party even a factor? Get the earliest peep into the verdict with Republic PMark exit poll, December the 5th at 6 p.m. Waterlogging has increased in the last 3 to 4 hours. Elphinstone station is shut, which means all those people who are hoping to go back home. When you look at that crowd, what's the message that Houston is sending out? There is also anticipation of a few announcements being made. What are your expectations when they both come up on stage? Are you expecting something big? I'm at the Jama Masjid in Bandra, and there are thousands of people behind me. Why they are protesting, but the situation is pretty tense. Thousands of people that you see. 4 दिन की रिमांड है, 4 दिन की रिमांड. कुछ कहना चाहते हैं आप? पत्राचौल स्कैम, मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज के बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप? As Gujarat goes to polls on the 1st of December, 89 of 182 seats will vote. Where high voltage political battle has broken out in the state of Gujarat since the bipolarity of the state. Will the BJP score a record victory in Gujarat? Is the Aam Aadmi Party even a factor? Politics has been challenged for the first time. Watch the fastest updates only on India's election headquarters on Republic TV. आज के दिन जब दिल में दर्द है अपने जवानों की शहादत पर, उसी के साथ साथ जब ये नारे गूंजते हैं तो एक सुकून है, एक हिम्मत है। मैं इस वक्त जाफराबाद में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर फोर्स डिप्लॉयड है। कोशिश ये है पुलिस कर्मियों की, अर्धसैनिक बलों की कि यहाँ पर किसी तरह का कोई दंगा ना भड़क पाए।
वो आपको लगातार बता रहे हैं कि किसान कानून वापस हुए हैं और किसान कानून वापस होने के बाद सीधे किसानों के बीच पहुंची हूं और किसानों से ही बात कर रही हूं। शाहीन बाग पर बुलडोजर चलेगा। शाहीन बाग को लेकर जो राजनीति गरमाई रही वो और ज्यादा गरमाएगी, ये बिल्कुल तय है। 93 seats will go for polls on December 5th as phase 2 of polls goes underway. Stay tuned to India's election news headquarters. Last Coast to Polls, live coverage only on Republic TV. A very good morning to all our viewers once again. I'm standing outside Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal's residence. It is close to 10 a.m. 8 a.m. is when the voting started on this very important day when the MCD polls are happening. We've seen this high voltage campaign in the national capital for the past 1 month, and here you see how preparations are underway. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal is set to leave any minute now. The entire cavalcade that is getting ready and the cordon that has been created for the Delhi Chief Minister to now leave from his residence where he will be going to cast his vote. We've seen this contest and the campaigning on the ground where Kejriwal has been the key face of the Aam Aadmi Party, as we see how many of the voices of the Aam Aadmi Party continue to urge voters in Delhi to come out and cast their votes. Similar voices coming in from the BJP, as it has been an all-out attack of both the parties on each other. It is the Aam Aadmi Party that is saying that since they are in power in the national capital and making promises of waste management, cleanliness, corruption-free MCD, is what they have been promising against the BJP that has been in power for the last 15 years and is looking to rein in a 4th term. On the other hand, the BJP also in a full-frontal attack against the Aam Aadmi Party of how the air pollution issue has still not been tackled by the Delhi government. They also promise houses for those who are still living in slums, better water management. But then it is the Aam Aadmi Party saying that since a lot of functions of the Delhi government and the MCD that overlap, pitching to the people that they must vote for the Aam Aadmi Party, and similarly from the BJP where they say that the relentless work that was put out by the BJP on the ground during COVID and how they are looking at the very important issues in Delhi is where Delhiites should vote for them for yet another term. Now let's also understand that in 2017 what looked like a tripolar contest between the BJP, the Aam Aadmi Party and the Congress again when it comes to the BJP and the Aam Aadmi Party, we saw star campaigners on the ground in door-to-door campaigns interacting with Delhiites. We also saw how Aam Aadmi Party spoke to more than 400 traders. They have been speaking to the people on the ground when they make promises of dealing with civic issues better, and the Congress having gone local. Even their manifesto that they released was a ward-wise manifesto. So now here you see, as I focus on what is happening at this point, a little over 10 a.m. as we talk, and this entire cavalcade that is now getting ready for Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal to leave, who will be leaving to cast his vote. Remember, the Aam Aadmi Party has saying that they're confident of a win in the MCD polls this time, and out of the 250 seats they are going to bag more than 230. It is the BJP also saying that they are confident of a victory of more than 2/3 as they are looking at a 4th term in the national capital. Again, whether it is about the education sector, the health sector, the issues of parks, parking facilities, cleanliness, waste management, and all the local issues that people need focus on, be it water supply, maintaining markets, traders, overseeing construction, maintenance of roads, running primary schools, operation of tax collection, and maintaining records of births and deaths of citizens. So these are the very many functions of the MCD, and the BJP is saying that if they come into power, they will only make all these functions stronger. Meanwhile, we continue to report from all the vantage points. Madhurima, my colleague, who's also standing outside a polling booth, and Madhurima, we are very closely watching Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, who is going to be leaving, but this full frontal attack by the BJP, as we saw several election controversies and answers on the Delhi liquor policy. बाइट नहीं दी जिसमें उन्होंने बताया कि 15 साल में उन्होंने क्या काम किया, क्योंकि कोई काम किया नहीं। सारी इंटरनल रोड्स टूटी हुई है, हर जगह पे कूड़ा पड़ा हुआ है, कूड़े के 3 पहाड़ बन गए, सारे पार्क खराब हो चुके हैं, कुत्तों का प्रकोप है हर जगह पे।
कोई काम नहीं किया उन्होंने। तो लोग, दिल्ली की जनता एक बड़ा बदलाव चाहती है और मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के रूप में एक बड़ा आम आदमी पार्टी, आपका मैनिफेस्टो हमने देखा, काफ़ी सारे प्रोमिसेस किए हुए, लेकिन सबसे ठोस ऐसे कौन से वो 3 प्रोमिसेस हैं? क्योंकि यहाँ के हम लोकल से बात कर रहे हैं, रोड से वो परेशान हैं, कुत्तों से, जैसे आपने बोला, डॉग्स की प्रॉब्लम से परेशान है, और तीसरा वो सिक्योरिटी भी उनके लिए एक बड़ा इशू है। तो आम आदमी पार्टी किस तरीके से इन सारी डिमांड्स को पूरी करेगी? देखिए, आम आदमी पार्टी ने अब तक जो भी कहा है वो किया और उससे ज़्यादा ही किया है। मुझे लगता है जो टॉप 3 प्रायोरिटीज़ अगर आप बात करें तो सबसे पहली प्रायोरिटी है दिल्ली को साफ़ सुथरा करना। उसमें आपके घर से लेके कूड़े के पहाड़ तक के सारे कूड़े साफ़ करना, ये हमारी पहली प्रायोरिटी है। दूसरी प्रायोरिटी जो सबसे ज़्यादा है कि निगम को लोगों के फ्रेंडली बनाना। जो इंटरनल रोड्स टूटी हुई हैं, जो डॉग्स की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, बंदरों का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, लोग फ़ोन करते रहते हैं, चाहते हैं काम ही नहीं आते। तो जो बेसिक इश्यूज़ है लोगों को रिजॉल्व करना। और तीसरा ये है कि भाई MCD जो घाटे में पड़ी हुई है, इसको रिवाइवल कराना, इसको प्रॉफिट पे लेके आना। आखिरी सवाल कि बीजेपी ने एक के बाद एक इन पिछले 3 हफ्तों में इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आम आदमी पार्टी को कई स्कैम्स में घसीटने की कोशिश की है, तो उसको कैसे देखते हैं? मैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप सोचिए कि ना 15 साल के शासन इनका रहा। मैं सोच रहा था कि कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करेंगे जिसमें ये बताएंगे कि हमने MCD में ये काम किया। एक भी नहीं हुआ। हर बार आके सुबह से लेके शाम तक अरविंद केजरीवाल को गाली देना, गाली देना, गाली देना। तो मैं दिल्ली वाले से कहना चाहता हूँ कि गाली देने वालों को वोट मत देना। जो आपके फ्यूचर का प्रोस्पेक्ट लेके आए हैं, जिन्होंने आपके लिए प्लान बनाया है, जिन्होंने आपके लिए विजन बनाया है, उनको आप वोट दें। Thank you, sir. This was Durgesh Pathak, and he urged the people of the national capital to come forward and exercise their right to vote and make sure that they this time elect a representative that could stand besides them. This is Madhurima Mishra with Vijay Bhishma for Republic TV. And my colleagues Piyush, Tanisha and Shivangi, who continue to stay with us on this broadcast. Piyush, I want to come to you because it is a little over 10 a.m. to really understand how is the movement on the ground, are voters coming out in full swing to vote, and most importantly, where the BJP has gone on to say that the Aam Aadmi Party has not been efficient enough, even as they are in power in Delhi. The Aam Aadmi Party saying that they promised to make MCD corruption free. Well, certainly, Suesha, we have seen blame game taking place since the time Aam Aadmi Party has formed its government in national capital. We have seen how Aam Aadmi Party says that central government is not letting it work. It also says that MCD is not working. There's a lot of corruption in this. On the other side, BJP says that Aam Aadmi Party-led Delhi government is not disbursing funds meant for MCD. So we have just seen blame game taking place, and that is why once again the elections are taking place, and it's basically happening after the unification of delimitation and unification of all the bodies of MCD into one. It last happened in 2012 when the MCD was replaced by 3 bodies, EDMC, NDMC, SDMC, after which for the very first time we are now seeing MCD being unified, and the elections are taking place. During the course of campaigning we have just seen blame game taking place, but nobody is talking about the real issues. Aam Aadmi Party claiming that the issues which BJP is bringing up about the corruption and other things are baseless. BJP saying that garbage is the issue and it is going to clean, but Aam Aadmi Party always lies on the issues of garbage. So blame game continue to take place, and today finally the people of Delhi are going to give their verdict out as they are out to cast their vote. I'm right now outside a polling station in South Extension Part 2, and that's the MCD Primary School where the voting is taking place. People are coming here enthusiastically since morning to cast their vote. Remember that voting began at 8 a.m. in the morning, and a few people have also come out. आप वोट डाल दिया आपने? आप वो प्लीज फिंगर अगर आप दिखा दें। मैं आपसे बात करना चाहूँ, क्या ऐसे मुद्दे रहे जिस पे आपने वोट डाला? कूड़े उड़े का ही मुद्दा ज्यादा है, सफाई का मुद्दा ज्यादा है। अच्छा, इश्यूज सफाई नहीं रहती है? सफाई नहीं रहती है। साउथ एक्सटेंशन कॉलोनी में भी नालियां हैं, अभी भी नालियां हैं, नालियां नहीं होनी चाहिए। अभी आप मानते हैं जो अभी की सरकार है MCD में वो काम नहीं कर पाई, और अगर क्या ऐसी काम है जो आप चाहेंगे कि सर नई सरकार है तो वो करे? हाँ जी, सेटिस्फाई तो नहीं है हम अभी की सरकार में। हम चाहते हैं जो भी आए काम करे। अच्छा, एक गली में जानवरों का एक मुद्दा जो है वो बात उसकी उठी, कूड़े की बात उठी, पोल्यूशन की बात उठी, आप मानते हैं कि ये भी एक बड़े मुद्दे हैं? हाँ जी, बड़े मुद्दे हैं।
बड़ा मुद्दा है। पोल्यूशन सबसे बड़ा मुद्दा। हाँ जी, हाँ जी। Thank you. So we just spoke to the early voters. They have come here to cast their vote, and they are also stressing upon the fact that yes, the issues like garbage, pollution are the important issues on which they are casting their vote. So right now I'm in South Extension Part 2, which is considered to be a posh colony of National Capital. And here also people are saying that the issues of drainage, garbage continues to persist. We'll have to wait and watch how the people are going to give their verdict. The verdict will be out on 7th. And the voting is taking place today. But during the course of campaigning, we have seen blame game which took place between both the parties, be it Aam Aadmi Party or BJP. But interestingly, Congress was completely out of fray. We did not see any top leader of Congress party campaigning in Delhi. Only the local leaders were seen campaigning in national capital. Suesha. And that too, they quoted controversy by pitting Jagdish Titler as one of their key campaigners in the MCD polls, Piyush. But important to how we focus on Delhiites who are extremely clear about the issues that they want addressed through whosoever comes in power in the MCD. And they are speaking for themselves on the ground to what Delhi is grappling with. Let's listen in. मेन तो हमारा सफाई का मुद्दा है, क्योंकि हमारी कॉलोनी हमारी दिल्ली बहुत गंदी है। जगह जगह आपको कूड़ेदान मिलेंगे, कूड़ा मिलेगा। नीट एंड क्लीन होना चाहिए। पानी इकट्ठा होता है, बारिश होती है तो पानी जमा हो जाता है। तो मेन मुद्दा तो हम लोगों का ये कि हम लोग सफाई चाहते हैं बस दिल्ली में। दिल्ली नीट प्लस हमारी कॉलोनी जो है VIP कॉलोनीज है, अच्छी कॉलोनीज है, तो हम नीट एंड क्लीन चाहते हैं इस कॉलोनीज को। मेन हमारा मुद्दा है। बाकी मुद्दे तो कई हैं, पर क्या आपका मैम, ये जो आनंद निकेतन एरिया है जहाँ पे हम लोग हैं अभी, ये बहुत एक पॉश एरिया लग रहा है। कि आपको लगता है यहाँ पे भी कूड़े की दिक्कत है? कूड़े की दिक्कत भी है, जो पार्क्स वगैरह हैं हमें वो भी नीट एंड क्लीन चाहिए, क्योंकि वहाँ लोग घूमने जाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो वो भी थोड़ा अच्छा चाहिए। ब्यूटी भी चाहिए वहाँ, बच्चों के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ हों। छोटे बच्चे हैं, उनको भी बाहर जाके अच्छा करना। अगर कूड़े में वो खेलते रहेंगे तो क्या फ़ायदा है, ठीक है ना। और बाहर से हम एंटर कर रहे हैं तो वहाँ भी हमें एंट्री भी अच्छी चाहिए। ऐसे हम सब करेंगे अपनी अपनी कॉलोनी का, तो सारी दिल्ली ही अच्छी हो जाएगी। हमें धीरे धीरे हर कॉलोनी का करना पड़ेगा ना। और मैम, सर, आई वुड ऑल्सो वांट टू टॉक टू यू। The issue of air pollution is quite persistent here. We as youngsters are facing problems. So I'm sure there are more people who are facing problems. Is that also one of the issue, air pollution? Because garbage, as she said, is one of the issue here. It's a posh area, but still the problem of garbage is still persistent. Do you think air pollution could also be one of the issue? No, air pollution is everywhere in north of India in the winter season. Because all the media are in Delhi, so they show all the air pollution of Delhi on the TV. Otherwise, you go any part of North India, there is air pollution. But yes, in Delhi, there is a problem of the jhuggis, the ढेर of kachras, garbage everywhere. That is the main problem of Delhi. All the jhuggis which are on the footpath of Delhi, or every colony, every government land, that should be removed. Right. While those are the list of issues that Delhiites are putting out for our viewers, Tanisha, if I can come to you, I believe you're standing with one of the candidates, 1349 in all who are in the fray. But what more are you conversing about? Right. Suesha, I have with me our candidate Himani Jain. Himani, I would just like you to show your inked finger to the camera first. Now, the BJP, when we were talking to the candidate here who had come, the BJP in general had been claiming that corruption is at a very high rate at your party, and if you come into the MCD. The MCD will then get corrupt. So they have been wanting to come as in power for the 4th consecutive year as well, with the charge on the Aam Aadmi Party that corruption is at a very high rate. BJP will never come in this MCD election because they have not worked at all. People are complaining the promises they have done, they haven't delivered yet. So corrupt is BJP in MCD also. They are doing nothing. If we talk about cleaning, if we talk about pruning the trees, if we talk about the parks, and the workers are not coming. So everyone is actually frustrated from past 15 years. So now it's time to change, and जो हमारी जनता है, they know that now BJP will not work. जिन्होंने 15 सालों से नहीं किया, they will never ever work in another 5 or 10 years.
The one last question that I would want to ask from you is that after the unification, yes, the last time BJP had won around 181 seats. The Aam Aadmi Party was somewhere around 40 to 48 seats. How much confident is the Aam Aadmi Party this time? How many seats do you think will you guys grab? We will have maximum seats because we have worked and we have proved. In Delhi government also, our Aam Aadmi Party, Arvind Kejriwal ji, he has promised many promises and he had delivered that. So we are very much sure that we are coming here with maximum seats this time because BJP has not done anything, so they are afraid and we are very free because we know we are winning. Thank you, Mani. Thank you for talking to Republic TV. So, Suesha, as I was telling to our viewers that it's a battle of perception where the Aam Aadmi Party and the BJP has been putting claims and counterclaims on the charges of corruption, on the charges of Aam Aadmi Party being corrupt. Aam Aadmi Party, on the other hand, has refuted clearly to all the allegations, And now, what we are seeing is the voters who have just gone in have been voting on the issues of garbage, on the issues of how clean the national capital is. Remember, if the Aam Aadmi Party is voted to power, it will have almost half of the power of Delhi. Suesha. Absolutely, Tanisha, and those key issues on the minds of the voters. I also want to bring in Shivangi at this point because Shivangi, the one thing that you have been showing us of how ways and means have been created to appeal to voters more. You're standing at a pink polling booth where selfie points have also been created, and this also shows that while at one end we see leaders, come out in full force and say that Delhiites, please come out and get your finger inked, put out your vote because this is very important. These are the key issues that affect you directly. Again, they are also making it fascinating on the ground in the polling booths for the people. Right, Suesha, absolutely. In fact, when we were speaking to voters who came out from the polling booth, they have told us that they had a very amazing, a great voting experience. And they said for the first time, we feel like we are welcome to give our vote. Very, very strong statement coming there. Now, let's have a look at the polling station. It's completely run by women. You can see the entire staff and the personnel are all females, they're all women. It's a pink polling station and it's also a model polling station. That means that it has amenities. It has a selfie area as well where you can take selfies. There's a first aid room, if a person can show that. First aid room. There are washrooms as well. So the entire idea is to welcome voters and to encourage them to come and vote. And it's a great place also in terms of the facilities for the elderly to come. You know, very interesting, Suesha and our viewers, is that a lot of elderly people are coming in, some in wheelchairs even, coming out and voting because democracy is something which is also a privilege. प्रचार के समय खत्म हो गया है, but I think the going is going to be good. सर, आपने भी बहुत रोड शो किए हैं, हमने देखा आप प्रचार में काफी सबने किए हैं, तो सब क्या एक्सपेक्ट करते हैं? बहुत बड़े क्लेम्स इस बात आम आदमी पार्टी करी, लेकिन क्या उनको कहना चाहते हैं? नहीं, आम आदमी पार्टी को मैं क्या कहूँगा, अभी उन्होंने जो क्लेम्स करने थे कर दिए, बाकी दिल्ली की जनता जो है वो तय करेगी. आफ्टर ऑल आजकल के जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स में उसमें पीपल मेक ऑल काइंड्स ऑफ क्लेम्स. दे मेक क्लेम्स अबाउट देयर कंट्रीब्यूशन और they try to take credit for work done by other people. So I think my only desire and hope is that people come out in large numbers to vote. Because urban Sir, also देखिए, पहली बात तो ये है कि प्रचार का समय खत्म हो गया. ओके, हमने जो किया है और हमने जो कहा है दैट सब पब्लिक डोमेन में है. माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले वो कालका जी में 3000 से अधिक जो फ्लैट्स हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए उनको लाभार्थियों को दिया. बाकी हमने बताया कि बाकी हमारी सारी EWS कॉलोनीज तैयार थी और हमारा आप जो मैनिफेस्टो उसको देख लीजिए, उसमें हमने प्रिसाइज नंबर्स दिए हैं कि कितने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जहाँ जुगी वहीं मकान, कितने हमने जो मिडिल क्लास है जिनको जो रहती हैं
डीडीए और बाकी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ को, उसका हमने मास्टर प्लान में क्या एफआईआर दिया है, तो सब इट्स ऑल इन द पब्लिक डोमेन। और फिर जो हमारे देहात में भाई लोग रहते हैं उनका लैंड पूलिंग में। सो आई थिंक कैंपेन इज़ ओवर। अभी जनता को जाके अपना मतदान देना है, और आपकी जो इंथुजियाज्म है उससे मेरे को लगता है कि नतीजे बहुत अच्छे होंगे। लास्ट टाइम 181 मिले थे बीजेपी को, लास्ट टाइम 180 के आसपास मिले थे। इस बार क्या लगता है? आई एम नॉट इन द बिजनेस ऑफ स्पेक्यूलेटिंग, ओके। कोई पोल्स जो हैं, कल तो 5 बजे से एग्जिट पोल्स भी आ जाएंगे। अब वेट फॉर दोज। अभी मुझे सिर्फ बड़ी यही खुशी है कि पीपल आर गोइंग आउट एंड वोटिंग। आई वुड इनकरेज देम टू गो आउट इवन इन लार्जर नंबर्स। बाकी मुझे लगता है मौसम अच्छा होने वाला है। किस मुद्दे पर डालेंगे आपने कई बार यार, मैं किस मुद्दे पे डालूंगा? मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ यार। हमने अच्छा काम किया, मैं उस मुद्दे पे डालूंगा, पर मैं वैसे भी भारतीय जनता पार्टी को। और कूड़े के पहाड़ का अरे हाँ, वो इस बार बहुत धांधली की भी बातें हुई, टिकट बेचने और अच्छा, ओके। वो आम आदमी पार्टी का एक वो उसके अंदर आ भी गया था उनका। हाँ, देयर हैव बीन प्रॉब्लम्स इन द आम आदमी। Some आम आदमी पार्टी has been saying सिखों का भैया, सिखों का क्या इशू है? सिख देखो ऐसा है, मैं तो पैदा हुआ हूँ एक ऐसे परिवार में। हमारे कभी कभी कुछ लोग बीच में पंजाबी में कहते हैं ना, रुस जाते हैं, तो ठीक है, वो तो होता है परिवार के अंदर। बट जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिखों के लिए किया, कम्युनिटी के लिए किया है, और मैं उसकी इतनी लंबी लिस्ट में आपको गिनवा सकता हूँ। बट मुझे पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि सिख कम्युनिटी, बाकी भी सब हमारा साथ देंगे। लेट मैं वोट करके आता हूँ मैं। हाँ। Union Minister Hardeep Singh Puri, who's just going inside to cast his vote. Remember, he had been very, very categorical about BJP's promises in these MCD elections, where he had also outlined BJP's master plan for resolving housing issues. Once again, what he mentioned just right now. And Housing and Urban Affairs Minister Hardeep Singh Puri, who had also spoken about creating homes for those living in slums and drawing the Delhi master plan of 2041 to ensure specifics when it comes to improving housing for Delhiites by and large. So that is what the BJP has been focusing upon, as the Union Minister once again reiterated on how the BJP is confident of a victory, looking at reigning in a fourth term as they have been in power for the last 15 years. I also want to bring in my colleague Harsha, who's reporting on the ground. Harsha, where are you standing at this point, and what is the movement like? It is about 10:21 a.m. What is what is the enthusiasm you see for Delhi voters to cast their vote? And I'm sorry, Harsha, before that, I want to go back to Madhurima. Madhurima, if you can talk to us. You just took that soundbite from Union Minister Hardeep Singh Puri. Once again, BJP focusing on housing issues that comes directly under the minister. And like he said, that they are focusing upon creating homes for those in the economically weaker section. From the old Rajendra Nagar area, and we've been speaking to multiple people over here regarding how the entire experience of voting is going on and what are their major issues. As far as issues is concerned, infrastructure, bad roads, the garbage management, all these are issues that are propping up. You can see even the elderly over here are, even coming in the wheelchair to exercise their franchise. That's how aware people of this particular vicinity are. Ever since this entire polling began at 8 a.m. in the morning, people have been pouring out since then. We believe post noon until 5:30 the numbers are going to increase. But as far as old Rajendra Nagar is concerned, the people are raising issues of bad infrastructure and of the fact that their representatives have been absent most of the time, and they would want some
somebody with whom they can express their woes and complaints. As you can see right now, even the roads here right in front of the polling booth are also not very, they are not good. As you can see, there are multiple holes over here across the road. So these are multiple issues. There are stray dogs over here, and they are also creating a lot of nuisance for the people. So this time they are voting for somebody who can be present and who can cater to these issues which are seriously affecting the people of the vicinity. Back to you. Absolutely, Madhurima, and that is the very reason why the local polls hold so much priority, is because the fact that these are the very issues that affect the people directly. And on that point, Shivangi, I want to come to you, because removing corruption is a standpoint between the Aam Aadmi Party and the BJP, where BJP says that it is the Aam Aadmi Party that is corrupt, and Aam Aadmi Party says that they want to remove corruption that has been prevalent in the MCD under the BJP reign of all these 15 years. And then again, we've seen how the BJP went on to raise several issues and election controversies, be it the Tihar tapes, be it the school gate scam, be it the liquor gate scam. But it is the Aam Aadmi Party saying that when it comes to the MCD polls, it is the direct issues that bother people, and they are going to focus on development. That is going to be their prime focus. The other things don't matter to the voter on the ground. Right, Suesha, and it's a slugfest basically before the voting had started. Yesterday we saw political slugfest, one party accusing the other party of corruption. We have been seeing that every time before an important election takes place. And right now, of course, I'm at the polling booth at Punjabi Bagh Extension. This is a pink polling booth. Now, speaking about corruption charges, you were rightly saying, Satyendra Jain is already in jail. And we saw the Tihar tapes where he was getting VVIP treatment inside jail. Then the liquor gate, which exploded completely in the face of Manish Sisodia. Manish Sisodia is on a back foot. He was number one accused in the CBI FIR. Now, when we talk about corruption, the Aam Aadmi Party says that the BJP is corrupt. The Aam Aadmi Party has been raising a lot of issues as well, saying it's the BJP which is corrupt as well. So back and forth happening. But, now the point is that as a democracy, the people will decide the future of Delhi's municipal body. So that is the point. It's in the hands of the people. On that note, let's take a very short break, viewers. We are live and breaking, and we'll get you the top updates as MCD elections happen here in the national capital. Stay tuned. मेरी नजरों से चुना, तेरी हरकतों से सुना, कभी जीती तू, कभी मैं हारा, फिर भी खूबसूरत है ये नजारा, क्योंकि इसमें है खुला कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा। अमेजिंग स्पेसेस के लिए ग्रीन लैम लैमिनेट्स, कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा। आज के दिन जब दिल में दर्द है अपने जवानों की शहादत पर, उसी के साथ साथ जब ये नारे गूंजते हैं तो एक सुकून है, एक हिम्मत है। मैं इस वक्त जाफराबाद में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहां पर फोर्स डिप्लॉयड है। कोशिश ये है पुलिस कर्मियों की, अर्धसैनिक बलों की, कि यहां पर किसी तरह का कोई दंगा ना भड़क पाए। तो आपको लगातार बता रहे हैं कि किसान कानून वापस हुए हैं, और किसान कानून वापस होने के बाद सीधे किसानों के बीच पहुंची हूं और किसानों से ही बात कर रही हूं। शाहीन बाग पर बुलडोजर चलेगा। शाहीन बाग को लेकर जो राजनीति गरमाई रही वो और ज्यादा गरमाएगी, ये बिल्कुल तय है। Outside his residence, you see that cavalcade that is making its way to the polling booth in this high voltage campaign by the Aam Aadmi Party, and security has been heightened as everyone now leaving for the polling booth. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, who's just made his way, we are following him right now as we'll try and get a word from him. But remember, the Aam Aadmi Party that has been urging Delhiites
to vote in its favor as they make poll promises of making the MCD corruption free, where they say that 15 years of the BJP in power, but that there has been a lot of corruption in the MCD also. They say that they focus on the issue of waste management, which has been one of the key issues of Delhi. It's a lot of voices that we've been getting from voters on the ground who go on to say that cleanliness is one of the key issues that Delhi is grappling with at this point. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, who was to leave from his residence at about 9:30, has just left. He's making his way to the polling booth where he will be casting his vote. We've of course seen the election controversies for the local polls, where the Aam Aadmi Party has also gone out to urge people that a lot of the functions of the MCD and the Delhi government overlap in many ways, and it will be more efficient in terms of working on the ground when it comes to civic issues if people vote for the Aam Aadmi Party. So that has been the pitch of the Aam Aadmi Party on the ground, as they go on to say that development is all they are focusing on, despite the full frontal attack by the BJP that we had seen against the Aam Aadmi Party. Now, be it the education sector, be it the health sector, where the MCD runs dispensaries, but specialized hospitals that come under Delhi government, even MCD and Delhi government that are more involved in education in the capital. So we are trying to get you those very pictures of the Delhi Chief Minister and the cavalcade just having arrived. You see how deployment has been heightened in this entire area. My VJ Anil getting you that frame of Delhi Chief Minister who's just making his way inside as the cavalcade has arrived, and heavy media contingent present here. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal hoping to get a word from him, but the Aam Aadmi Party sounding confident of a thumping victory, where they say that out of 250 seats they are sure to win more than 230. माँ बाप और माता पिता और के साथ यहाँ पर अभी मुख्यमंत्री पहुँचे हुए हैं, और उसी को भी अभी अंदर जा रही है क्योंकि मुख्यमंत्री पहुँचे हैं तो प्रोटोकॉल होता है वो वाइफ एंड So like you see, heavy media contingent here. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, who's also speaking to some of the elderly voters who are just going inside to cast their vote. An elderly man along with his wife who was making his way inside just met with the Delhi Chief Minister, and he is now talking to that man on the ground. You see heavy media contingent here. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, who's going inside to cast his vote. And remember, they have been focusing on the issue of development, as that is what they say, despite what has been a full frontal attack by the BJP. Right now, these pictures over here at the Transport Department, which is one of the key polling booths in the national capital, where Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal will be casting his vote. A little over 10 a.m., where you see a lot of Delhiites now come out and speak about the Delhi that they want to see in this next term, of the issues that they want must be addressed, whether be it about cleanliness, be it about garbage management, be it about the education sector, the health sector, and issues that affect them the most on the ground. These are the very important MCD polls, and Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, who has just made his way inside as an elderly couple was going inside just at the time when the Chief Minister's cavalcade had arrived. And while Delhi Chief Minister got down from his car, he went inside with that elderly couple. As we continue to get you more voices from the ground, Union Minister Hardeep Singh Puri, who spoke to Republic just a short while ago on BJP's poll promises this MCD elections. Let's listen into what he said. माननीय प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प है कि दिल्ली शुड बी अ वर्ल्ड क्लास कैपिटल सिटी, और उसी पे हम काम करेंगे। सर, मनीष सिसोदिया 230 सीटें जीतने का दावा किया है सर, आज क्या कहेंगे? मैं अब इस पे क्या बोलूं, वो कर दिया। माइक हटा लीजिए, माइक हटा दो, माइक हटाओ सर, इस तरफ थोड़ा सा, पहले इनको ले लीजिए। हाँ सर, थैंक यू, थैंक यू। So the आम आदमी पार्टी बहुत कॉन्फिडेंट है कि वो कैंपेन एंडेड यस्टरडे। अभी आप जरा लेट अस नाउ
लेट पीपल वोट। सर दिल्ली वासियों से क्या अपील सर? नहीं अब हो गया, अभी तो वोट करें, दे शुड टर्न आउट इन लार्ज नंबर्स टू वोट। थोड़ा सा हमारे साथ हरदीप जी, आपने एक बीजेपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्या आपने जो घोषणा की आपको लगता है उसके बाद माहौल बीजेपी के फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? मुझे तो माहौल पहले भी सही लग रहा था, पर ऐसा है कि चुनाव के जो मोमेंटम होता है उसका पिकअप करने में जिस दिन आप घोषणा करते हैं एकदम नहीं हो जाता, पर फिर इश्यूज डिफाइन होते हैं। ये हाँ मैं मानता हूँ कि जो हम जहाँ जुगी वही मकान वो वाले सेक्शंस के लिए जो हमने काम किया और आने वाले सालों में करने वाले हैं, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ की रेगुलराइजेशन, उनको मलकाना हक दिलवाने हैं, उसका काम, और जो हमारे लैंड पूलिंग में देहात में भाई रहते हैं, उन चीज़ों पे काफ़ी लोग गौर कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है उसका अच्छा असर होगा। अभी केजरीवाल ने कहा है कि कूड़ा करने वालों को वोट करते हैं, शरीफ लोगों को वोट। अगर केजरीवाल जी ने जो कहा है उनसे ये पूछिए कूड़ा कलेक्ट किसने किया है? लैंड कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान में स्टेट सब्जेक्ट है, दिल्ली में किसकी सरकार है? ये आप उनको बेसिक सवाल पूछिए, मुझे जवाब देने का जरूरत ही नहीं पड़ेगी। थैंक यू। So one last question, the आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है कि बीजेपी इस बार 50 सीट भी नहीं ला पाएगी। अच्छा चलिए उनको लेट देम रिवेल। थैंक यू। हरदीप जी राधे राधे, आप जो वोट उस टेबल पे नहीं आए। So there you have Union Minister Hardeep Singh Puri, who was very confident that the BJP is going to sweep away the MCD polls here. He have been alleging that that if Aam Aadmi comes to power is when the MCD will get corrupt. Back to you, Shivangi. All right. Hardeep Singh Puri, they're speaking that the BJP is very confident about coming back to power at the MCD civic body, Delhi civic body, which is very, very important right now. And like I was telling our viewers, like Suesha is also tracking the developments and following Arvind Kejriwal as he leaves his residence to vote. The point is, it's not just about a civic election. This election is also a prestige battle between the Aam Aadmi Party and the BJP. It might not be a state election, might not be a national level election, but still very, very important given the fact, the kind of corruption charges which have been traded between the Aam Aadmi Party and the BJP and the ministers. I mean, we are talking about the CMs of states coming down all the way to Delhi to campaign for the BJP. That really means that this election really means a lot. We saw Manohar Lal Khattar come, we saw Pushkar Singh Dhami come, we saw Shivraj Singh Chauhan come here to campaign, while for the Aam Aadmi Party it was just Arvind Kejriwal. Many ladies have left. आप अभी वोट करके निकले हैं। कैमरा को अपने इंक दिखाइए जो आपका फिंगर है। ऑलराइट, तो ये पिंक पोलिंग स्टेशन है, तो ये ओनली फीमेल्स, ओनली महिला जो ऑफिसर्स हैं, स्टाफ है, रन कर रही है। कैसा लगा आपको अंदर? अच्छा लगा जी। सेल्फी पॉइंट भी वहाँ पर है, सेल्फीज ली आपने? हाँ जी। नहीं, हमने नहीं ली। नहीं लिए। ऑलराइट, ले जाने नहीं दे रहे, सेल्फी कैसे लेंगे? राइट। कैमरा ही अंदर नहीं ले जाने अलाउड नहीं है पोलिंग बूथ में। बट देयर सेल्फी पॉइंट देयर एज वेल। पॉइंट तो बना हुआ है, पर जब तक कैमरा ही अलाउड नहीं है तो फिर आप सेल्फी कैसे ले सकते हैं? Alright, so there is a selfie point, but cameras are not allowed. They're saying, but how is it inside? Because it's supposed to be, it's very welcoming. बहुत voters बोल रहे हैं कि facilities है, बहुत अच्छा बनाया है अंदर। बहुत बढ़िया बनाया है जी। हाँ। और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे हमारी दिल्ली। Right. तो सही हाथों में है अभी तक। हाँ, so you are happy with what's happening right now? You think that issues are being addressed in Delhi? जब आपने वोट किया था, what are the top issues that you had in mind? तो ऐसा है जी, देश बहुत सुरक्षित हाथों में है, और जब तक देश सुरक्षित हाथों में तो दिल्ली अपना आप ही होगी। हमारे मोदी जी के हाथ में देश है, तो हमें कोई डर नहीं है। All right, okay. All right, so voters are very, very confident right now, and they are out, they are happy and they're enthusiastic. So they are saying, the voters are saying that they think already that that the administration is in very, very safe hands. That's what they are saying as well. And right now, as voting is continuing there, Suesha, I want to go back to you right now. We know that Arvind Kejriwal has just left his residence. Yes, Suesha, what's happening there? Shivangi. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal is just leaving from here. He's cast his vote, he's come out, and now he's leaving from here. Hey, 1 second, he's about to speak. Let's listen into what he's saying. नहीं हटो। प्लीज माइक
Okay, there is a lot of commotion here, Shivangi. Delhi Chief Minister is just about to speak. A lot of cameras spanning at the Chief Minister. हम सब लोग दिल्ली से बहुत प्यार करते हैं। आज दिल्ली नगर निगम का चुनाव है और मैं दिल्ली की जनता से अपील करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर निकल के अपने वोट का इस्तेमाल करें। चारों तरफ हम देखते हैं बहुत ही कूड़ा है, गंदगी है। ये मौका है आपको दिल्ली की सफाई करने का। आप ऐसी पार्टी को वोट दें जो काम करती है, ऐसे लोगों को वोट ना दें जो दिल्ली के काम रोकते हैं। ईमानदार, कट्टर ईमानदार पार्टी को वोट दें। भ्रष्टाचार करने वालों को, लेंटर के पैसे मांगने वालों को वोट मत दें। शरीफ लोगों को वोट दें, अच्छे लोगों को वोट दें। गाली गलौज करने वाले, गुंडागर्दी करने वाले, मारपीट करने वाले, लफंगई करने वाले लोगों को वोट मत दें। अगले 5 साल हम सबको मिलके दिल्ली की सफाई करनी है, दिल्ली को चमकाना है। Chief Minister Arvind Kejriwal once again appealing to all the voters to come out in large numbers and cast their votes, as he has now left from this very polling booth of the Transport Department in Civil Lines, where he just cast his vote. मेरी नजरों से चुना, तेरी हरकतों से सुना। कभी जीती तू, कभी मैं हारा, फिर भी खूबसूरत है ये नजारा, क्योंकि इसमें है खुला कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा। अमेजिंग स्पेसेस के लिए ग्रीन लैम लैमिनेट्स, कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा। The mandate from the two states. It's been a high-stakes battle for the Prime Minister. Who will win Gujarat and Himachal? While the opposition was missing in action, the people have given the real mandate. Will the BJP retain both the states? Is the Aam Aadmi Party even a factor? Get the earliest peep into the verdict with Republic PMark exit poll, December the 5th at 6 p.m. Waterlogging has increased in the last 3 to 4 hours. Elphinstone station is shut, which means all those people who are hoping to go back home. When you look at that crowd, what's the message that Houston is sending out? There is also anticipation of a few announcements being made. What are your expectations when they both come up on stage? Are you expecting something big? I'm at the Jama Masjid in Bandra, and there are thousands of people behind me. Why they are protesting, but the situation is pretty tense. Thousands of people that you see. 4 दिन की रिमांड है, 4 दिन की रिमांड। कुछ कहना चाहते हैं आप? पत्राचौल स्कैम, मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज के बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप? As Gujarat goes to polls on the 1st of December, 89 of 182 seats will vote. Where high voltage political battle has broken out in the state of Gujarat since the bipolarity of the state. Will the BJP score a record victory in Gujarat? Is the Aam Aadmi Party even a factor? Politics has been challenged for the first time. Watch the fastest updates only on India's election headquarters on Republic TV. आज के दिन जब दिल में दर्द है अपने जवानों की शहादत पर, उसी के साथ साथ जब ये नारे गूंजते हैं तो एक सुकून है, एक हिम्मत है।
मैं इस वक्त जाफराबाद में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहां पर फोर्स डिप्लॉयड है। कोशिश ये है पुलिस कर्मियों की, अर्धसैनिक बलों की कि यहां पर किसी तरह का कोई दंगा ना भड़क पाए। तो आपको लगातार बता रहे हैं कि किसान कानून वापस हुए हैं और किसान कानून वापस होने के बाद सीधे किसानों के बीच पहुंची हूं और किसानों से ही बात कर रही हूं। शाहीन बाग पर बुलडोजर चलेगा। शाहीन बाग को लेकर जो राजनीति गरमाई रही वो और ज्यादा गरमाएगी, ये बिल्कुल तय है। What is it that is unique about your father's story to build the largest logistics company? 99% in the movie, it is a real-time story what has happened with us in our life. That's what been captured. Why should a young person watch this film? All the youngsters out there, they want to be an entrepreneur just in overnight. मतलब वो shortcut देख रहे हैं. Any business for that matter or any work for that matter और success आपको overnight नहीं आती. This is that film. Pakistan, that would. All right, viewers, at this point of time, we are live, and right now this is our biggest coverage on Republic TV of the elections which are happening in the national capital as well, viewers. And right now, as we can see that the polling booth, the pink polling station is completely filled with amenities. A very special polling booth here where I am reporting from. My colleagues are all over the place right now. We have multiple colleagues in multiple vantage points and locations. Suesha is tracking Arvind Kejriwal. Arvind Kejriwal came out and he said that please come out and vote in large numbers. Aam Aadmi Party trying to make headway in the MCD elections as well. We have many reactions coming in. Many political leaders have been speaking to Republic TV as well. Hardeep Singh Puri spoke to Republic TV saying that the BJP will come back to power. Let's try to play out those reactions from the ground today as our reporters are all across on the biggest coverage of the MCD polls ever right now. Let's play that out. All right, viewers, so we are live right now and we have a couple of voters as well who will be voting very soon. Will you be casting a vote very soon? Will you be casting your vote very soon? So there are people who, you stay right, your neighbors, you just stay right over here, right? Aap neighbors ho, right? And you at the polling booth is right over there. So what are the main issues that you would like the administration to address right now? Because now is the time for citizens to come out and cast their vote in the MCD polls. First of all, I think everybody should vote. They should exercise this very important activity. Other is, I think nobody should be biased for any party, whether it is Aam Aadmi Party or BJP or Congress, but it should be only for development. And we should have a data. What people say, they only give recent activities which influence the mind of the voter. So my submission is that we should only see what is happening, what is the work, and that should be very specific. That is only my thing. And right. I'll also vote for development only. So it's about development. Development is a very, very big point which is coming up as well. And, you know, also one more thing I would like to ask is that about roads. Will you be voting? Yes. Yeah. Oh, she has voted already. So we are seeing a young voter for the first time, a first-time voter with us, a young voter with us. You know, we are appealing to everybody to come out and vote in large numbers. A lot of elderly people are coming, but it's good to see young voters come out in large numbers and vote as well. So how was the experience voting for the first time? It's actually pretty invigorating since you can see it's a pink polling booth. It's very invigorating to see all females over here. And it's for the first time that it's happening right in front of our house. Right in front of your house. So this is the pink polling station. It's completely pink in color. Vijay, Manish, if you could show the pink station to our viewers who are watching Republic TV as well. At this point of time, it's completely pink. Now, when you went inside, how was the experience inside? Because, you know, I was told that inside there's a selfie station, there are also amenities, there's water available, and it's completely staffed by females. दुनिया भर में हम बताते हैं कि भारत की जो लोकतंत्र है वो ऊपर से नीचे तक
जो है फैला हुआ है, और हम टेम्परामेंटली ऐसे लोग हैं जो लोकतंत्र में भरोसा और विश्वास रखते हैं, और यहाँ पर सरकारों का आना और जाना सब शांतिपूर्ण ढंग से होता है, और उसी को आगे बढ़ाते हुए अपने देश की सत्ता को मजबूत करते हुए, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूत करते हुए आइए और वोट डालिए। जो भी मुद्दे हैं चुनाव के बाद, जो भी आपकी पसंद है उसके अनुसार रिजॉल्व होंगे, और मैं हंस के हमेशा कहती हूँ कि भाई कर्म का फल तो इसी जीवन में मिलना है, तो अगर हम जिनको वोट देते हैं वो हमारे लिए क्या काम करते हैं वो आप सबके सामने है। जब दिल्ली ने वोट किया प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए तो उस कर्म का भी फल मिला, औरों के लिए किया उसका भी, तो अब आप एमसीडी में ठीक सी सरकार बना दीजिए, क्योंकि हम सबका स्टेक है दिल्ली में, जीना यहाँ मरना यहाँ, यही रहना है, और यहाँ के लूटपाट करके किधर और जाके तो अपना नाम नहीं बढ़ाना है। तो आप इन सब चीजों का ध्यान रखें और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दें। मैम, केजरीवाल ने कुछ देर पहले वोट डाला तो उन्होंने कहा, लोगों से अपील की कि ईमानदार कट्टर लोगों को वोट दीजिए। मैं भी उन्हीं की बात का समर्थन करती हूँ कि ईमानदार और कट्टर लोगों की सेवा की भावना से आने वाले लोगों का समर्थन कीजिए, और आप सबके सामने है वो दृश्य जो कि जेल के अंदर चल रहे हैं, और आप सबके सामने है एक के साथ एक फ्री वाली पॉलिसी, और उस एक के साथ एक फ्री में कोई काम की नहीं बल्कि आधे पौवे फ्री मिल रहा है, तो आप उसी हिसाब से वोट दीजिए। आपको समझ आ जाएगा कि ईमानदार कौन है और काम कौन करने वाला है। सबके आपके सामने काम है। अगर आपने केंद्र में मोदी जी की सरकार बिठाई तो केंद्र सरकार ने क्या क्या काम करके दिए। ये म्यूनिसिपल स्कूल है जहाँ पे मैं वोट करने आई हूँ, यहाँ पर कंप्यूटर लैब है, यहाँ पर रोबोटिक्स है, और उसके बारे में कोई हल्ला गुल्ला नहीं है। हम लोगों ने किस किस तरीके से ये काम किया आप हमसे पूछिए। प्राइवेट जो कंपनीज होती हैं जहाँ पर उनका CSR होता है या कुछ होता है, उनको कह के ये काम करवाया है। रोटरी क्लब को कहकर यहाँ पे वॉश का हैंड वॉश स्टेशन और ये सब लगवाया है, क्योंकि 6,190 करोड़ मात्र पूरी तीनों MCDs का मिलाकर बजट है। 75,800 करोड़ रुपया दिल्ली का बजट है, और 15,000 करोड़ दिल्ली सरकार ने अपने शिक्षा मंत्रालय का बजट दिया हुआ है, जिसमें 1100 स्कूल हैं, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास 1500 से ऊपर स्कूल हैं, जहां पर बच्चों को शिक्षा ही केवल फ्री नहीं मुफ्त मिलती, बल्कि यूनिफॉर्म, किताबें और भोजन, ये सब चीजें फ्री मिलता है। तो वो तो म्यूनिसिपैलिटी को प्रोवाइड करना होगा। आप फ्री की बात करें मैम, फ्री बिजली पानी आप मानते हैं? मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहती हूँ कि जो जनता को धोखा देकर झूठ बोलकर आपके बीच आए थे, जिन्होंने कहा था बिजली हाफ पानी माफ, वो कितने बेईमान हैं आप वो देख लीजिए, और इसीलिए ईमानदार और कट्टर लोगों का ही समर्थन करें। केजरीवाल जी की बात में दम है, और वो अब हमारे सबसे बड़े कैंपेनर है, क्योंकि उन्हीं की शक्ल से पता चलता है कि कौन ईमानदार है और कौन बेईमान है। कांग्रेस गायब दिख रही है पूरे चुनाव से। वो एक तरफ भारत जोड़ो अभियान में राहुल गांधी टाइटलर को स्टार कैंपेनर। देखिए, हर एक पार्टी को अधिकार है अपने जिन मुद्दों पर वो भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, और जो उनके प्रिंसिपल्स है, सिद्धांत है, उसके अनुसार अपने कैंपेनर को चुनने के लिए। अब हमसे लोग कहते हैं कि म्युनिसिपल चुनाव में भी आप मोदी जी की फोटो क्यों लगाते हो, आपके पास बाकी नेता नहीं है क्या? तो मेरा हमेशा जवाब होता है कि भाई वो हमारे पोस्टर बॉय हैं, उन जैसा कोई और नहीं है, इसलिए हम उनकी फोटो का इस्तेमाल करते हैं। अब कांग्रेस के पास जगदीश टाइटलर जी जैसा कोई और नहीं है, वो उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हर पार्टी को अधिकार है, और जनता को सोचना है कि वो किन किन लोगों पर भरोसा जताती है। ठीक है, थैंक यू मैम। All right, so Meenakshi Lekhi has just cast her vote and she's just spoken exclusive to Republic TV right now. Meenakshi Lekhi speaking to Republic TV, exclusive soundbite there. And as of course we continue our live and rolling coverage, it's the biggest coverage, biggest team of reporters here at the MCD polls. While polling is happening in multiple areas here, it's time for a very short break, viewers. We'll continue to be live and breaking. And of course, big prestige battle. Will BJP get more numbers this time? And what will Aam Aadmi Party do? Will they also be able to get more vote share? On that note, time for a very short break. We continue getting you top updates here from the national capital. झाके रे झा
के झरोखे से झांके हैरत से आंखें अपनी सी दुनिया नई रंगी लागे ख्यालों की खिड़की से मन कूदे भागे झांके रे झांके झरोखे से झांके देख के दंग है छोटे बड़े सारे झांके रे झांके चट्टू ये ताके तरक्की को टुक टुक हर कोई ताके झांके रे झांके Reimagineering brighter futures with smarter steels. ArcelorMittal Nippon Steel India. Smarter steels, brighter futures. What is it that is unique about your father's story to build the largest logistics company? 99% in the movie, it is a real-time story what has happened with us in our life. That's what been captured. Why should a young person watch this film? All the youngsters out there, they want to be an entrepreneur just in overnight. मतलब वो shortcut देख रहे हैं. Any business for that matter or any work for that matter और success आपको overnight नहीं आती. This is that film. Pakistan that would boast to the Chinese and tell them that, we can guarantee you absolute peace in Afghanistan, build the China-Pakistan economic corridor right through the heart of Afghanistan. But in the last 1 year, more than 300 Pakistani soldiers and policemen have been killed by various factions of the Afghan Taliban and also the fearsome terrorist organization, the Tehreek-e-Taliban Pakistan. Today, Pakistan is suing for peace. A high voltage battle which will decide the nation's political trajectory. Who will break their records and which faces will be the winners? 89 out of the 182 seats go to polls. Stay tuned to India's election news headquarters as Gujarat goes to polls. Live coverage minute by minute all day today on Republic. The mandate from the two states. It's been a high-stakes battle for the Prime Minister. Who will win Gujarat and Himachal? While the opposition was missing in action, the people have given the real mandate. Will the BJP retain both the states? Is the Aam Aadmi Party even a factor? Get the earliest peep into the verdict with Republic PMark exit poll, December the 5th at 6 p.m. Waterlogging has increased in the last 3 to 4 hours. Elphinstone Viewers, getting some breaking news coming in from Siliguri right now. A bus was on its way to Siliguri area. It's reported that a truck has collided with a government bus at around 7 a.m. today in the morning, which caused the government bus to fall to the side of the road and burst into flames. All the passengers hurriedly have got down. About 10 passengers have been injured, and the police station, fire station officials have rushed to the spot. The injured have been rushed to the hospital, and the fire has been under control around 10 a.m. So this is the breaking update we're getting for you right now. The visuals of that also on your screen, where you can see the bus which has caught fire in Siliguri. All right, viewers, as we get you that breaking update, we continue our live and rolling coverage as we are seeing MCD Civic body polls in Delhi. Largest team of reporters here getting you every minute of the elections which are happening in Delhi. Stay tuned for the biggest coverage on Super Sunday. As Gujarat goes to polls on the 1st of December, 89 of 182 seats will vote. Where high voltage political battle has broken out in the state of Gujarat since the bipolarity of the state. Will the BJP score a record victory in Gujarat? Is the Aam Aadmi Party even a factor? Politics has been challenged for the first time. Watch the fastest updates only on India's election headquarters on Republic TV. आज के दिन जब दिल में दर्द है अपने
जवानों की शहादत पर उसी के साथ साथ जब ये नारे गूंजते हैं तो एक सुकून है, एक हिम्मत है। मैं इस वक्त जाफराबाद में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर फोर्स डिप्लॉयड है। कोशिश ये है पुलिस कर्मियों की, अर्धसैनिक बलों की कि यहाँ पर किसी तरह का कोई दंगा ना भड़क पाए। तो आपको लगातार बता रहे हैं कि किसान कानून वापस हुए हैं और किसान कानून वापस होने के बाद सीधे किसानों के बीच पहुंची हूं और किसानों से ही बात कर रही हूं। शाहीन बाग पर बुलडोजर चलेगा। शाहीन बाग को लेकर जो राजनीति गरमाई रही वो और ज्यादा गरमाएगी, ये बिल्कुल तय है। What is it that is unique about your father's story to build the largest logistics company? 99% in the movie, it is a real-time story what has happened with us in our life. That's what been captured. Why should a young person watch this film? All the youngsters out there, they want to be an entrepreneur just in overnight. मतलब वो shortcut देख रहे हैं. Any business for that matter or any work for that matter और success आपको overnight नहीं आती. This is that film. Pakistan that would boast to the Chinese and tell them that, we can guarantee you absolute peace in Afghanistan, build the China-Pakistan economic corridor right through the heart of Afghanistan. But in the last 1 year, more than 300 Pakistani soldiers and policemen have been killed by various factions of the Afghan Taliban and also the fearsome terrorist organization, the Tehreek-e-Taliban Pakistan. Today, Pakistan is suing for peace. Viewers, a very good morning. It is a big day in Delhi today, in the national capital, where it is polling day. I'm outside a pink polling station in Punjabi Bagh Extension, a very special polling station which is completely pink in color, which really means that in that sense that all the functions being carried out today are by women. As you can see very clearly, all the functions, even security, even the registration, everything carried out by women. Is also a model polling station, which means it has a lot of amenities here in terms of getting washrooms for both the genders as well. And so we're getting these top updates as well at this point of time, viewers. And also speaking about, why today's elections are very important. It is because that it's going to be a prestige battle between both the parties, Aam Aadmi Party and the BJP as well. BJP trying to make sure that they get more votes than last time. Many reactions have been coming in today. In fact, top political leaders have spoken to Republic TV today. Let's play that out for our viewers. दिल्ली का बजट होता था शीला दीक्षित जी के टाइम पे, वो जब प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री बनकर यहाँ पहुंचे तो उनको लगा कि मुख्यमंत्रियों के हाथ मजबूत करने चाहिए, सिस्टम्स ऐसे खड़े करो कि मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र को चमका सके, जो मर्जी पार्टी को एट पॉलिसी लेवल आप बदलिए। तो 58,800-900 करोड़ रुपया दिल्ली का बजट हो गया। 58,000 हमने कॉर्पोरेशन के अच्छे हॉस्पिटलों का देने का काम किया है। ऐसे सारे काम जो हमने किए हैं, दिल्ली की जनता को हमारे पर विश्वास बढ़ा है और विश्वास को लेकर हम 5 साल नहीं, आने वाले 50 साल चलेंगे। सर, महाठग आप किसको कह रहे हैं? ठगों का ठगने वाला महाठग केजरीवाल का मंत्री, जो इसको बचाने वाला खुद केजरीवाल है, सत्येंद्र जैन को, जो कि नाटक कर रहे हैं। मुझे ध्यान आता है केजरीवाल जी ने कहा था ये लोग नेता लोग जेल में जाते हैं, अच्छे आराम करते हैं, उनकी सबकी चाबियां मैंने रख ली है और उसमें से कुछ चाबियां उसने अपने नेताओं को दे दी है, जो अंदर नीरो का बहाना कर सर की मालिश करा रहे। कोई डॉक्टर से पूछो क्या कि नीरो का पेशेंट के सर की मालिश करा सकता है क्या? वो सर की मालिश करा रहे हैं, तकिया लगा रहे हैं, पैर पे पैर रख के सो रहे हैं, ऐसो आराम कर रहे हैं, वही महाठग है। अब देश को मालूम पड़ गया। सर, आप काम गिना रहे हैं, केजरीवाल साहब कूड़ा दिखाते हैं, कहते हैं देखो MCD ने क्या किया है। केजरीवाल काम भी तो बताए ना जी, कूड़ा दिखाएं कोई बात नहीं है, काम तो बताएं। घर के अंदर कूड़े की बाल्टी होती है लेकिन रसोई तो साफ होती है ना जी, वो बताएं क्या काम किया है। एक काम नहीं बता पा रहे, क्या स्कूल खोला है कोई? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं केजरीवाल। तो सुनो नहीं, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं वो 5 स्कूल हैं, वो मैं सबको हाथ जोड़कर विनती करती हूँ
कि मौसम बहुत अच्छा है और सब लोग घर से बाहर निकलें, फटाफट वोट डालें, क्योंकि पोलिंग स्टेशन जो है घर के नज़दीक है, 5-10 मिनट से ऊपर नहीं लगते हैं। तो पोल करने के बाद, वोट डालने के बाद आप अपने घरों में चाय का आनंद ले सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं और जिस भी चीज़ पे डिस्कशन करना चाहते हैं, परिवार से लेके देश दुनिया की बात, वो भी कर सकते हैं। पर वोट डालने के लिए कृपया घर से बाहर निकलें। केंद्रीय मंत्री के अलावा एक वोटर भी हैं आपने क्या मुद्दा अपने दिमाग में रखा वोट डालते हैं? मैंने मुद्दा यही रखा कि ये शहर मेरा है, मेरा जन्म यहाँ पे हुआ है और होपफुली मृत्यु भी यहीं होगी। तो जीना यहाँ, मरना यहाँ, तो शहर की चिंता करना, अपने कॉलोनी की चिंता करना हम सबका फर्ज है और उसको हम ठीक करें। और जो लोग धोखे की राजनीति करते हैं उनको बाहर करें। केजरीवाल कह रहे हैं कि अब पूरी तरह से साफ हो जाएगी एमसीडी से बीजेपी और सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी की। उन्होंने जिस प्रकार की धोखे की राजनीति दिल्ली को दी है, दिल्ली उसका जवाब उनको जरूर देगी और जिस प्रकार से उन्होंने दिल्ली को बिगाड़ने का काम किया है उसका जवाब भी दिल्ली देगी। मैं दिल्ली में पैदा हुई हूँ और मैंने दिल्ली में कई किस्म की सरकारें देखी हैं, जिसमें से ये भी हैं और मुझे भी ऐसा था कि जो मर्जी, ठीक है राजनीति अपनी तरफ है, मगर दिल्ली को अगर कोई व्यक्ति ठीक करे तो हम उसके इंटरनली मन में विश्वास रहता है कि शहर तो मेरा भी है। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने दिल्ली के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके अपने चेहरा चमकाने का काम देश दुनिया में किया है, क्योंकि वो अपने आप को राष्ट्रीय नेता घोषित करना चाहते हैं और प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनाना चाहते हैं, उससे दिल्ली की नाराजगी है, क्योंकि दिल्ली का काम इन्होंने नहीं किया, ऐसा मैं मानती हूँ। और आप चारों तरफ देखिए, दिल्ली का बजट 32,000 करोड़ होता था शीला दीक्षित जी के टाइम पे, वो बढ़कर 58,900-800 करोड़ हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने, क्योंकि उन्होंने कहा मुख्यमंत्रियों के हाथ मजबूत करने चाहिए, क्योंकि वो खुद एक मुख्यमंत्री रह चुके थे। जीएसटी आने के बाद दिल्ली का बजट 75,900 करोड़ रुपया हुआ, मतलब तकरीबन 76,000 करोड़। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का बजट जो 6,600 कुछ करोड़ था वो घटकर 6,190 करोड़ हो गया। काम बढ़ गया, क्षेत्र बढ़ गया, सब कुछ होने के बाद बिना म्यूनिसिपैलिटी के कोई शहर चलता है क्या? और जिस तरीके से इन्होंने झूठ बोला, 15,000, ये शिक्षा करते रहते ना, 15,000 करोड़ है दिल्ली के शिक्षा मंत्रालय का और पूरी तीनों म्यूनिसिपैलिटी मिला के सिर्फ 6,000 करोड़ है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य सेवाएं, सैनिटेशन, जो कूड़ा भी एक बड़ा मुद्दा है, जिसको आम आदमी पार्टी ने प्रखर रूप से उठाया और कहा कि पूरे दिल्ली में सफाई नहीं होती, हर जगह कूड़ा फैला हुआ है। देखिए, आप उनको ये समझाइए कि 80% घरों से कूड़े की गाड़ी कूड़ा उठाने के लिए आवाज दे के, माइक्रोफोन लगा के आती है और दिल्ली की जनता को पूरी म्यूनिसिपैलिटी समझाती है कि गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा अलग करो। कुछ कॉलोनीज करती हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। उसके बाद 80-70% कूड़ा जो है वो निस्तारण हो रहा है 100%, मतलब वो खत्म किया जाता है इनसे पावर जनरेशन का पहाड़ जो है। हाँ जी, जो पहाड़ की बात करते हैं वो 70 साल पुराना पहाड़ है, वो म्यूनिसिपैलिटी ने नहीं क्रिएट किया, वो दिल्ली का पहाड़ है। और दिल्ली के पहाड़ को खत्म करने के लिए इन्होंने क्या रिसोर्सेज दिए वो बताए ना। इनकी जिम्मेवारी नहीं है कि अभी तुमने 6,000 करोड़ रुपया जो 440 करोड़ देना था वो तुमने नहीं दिया, जो पुराने काम है उनको बढ़ाने का पैसा तुमने नहीं दिया। उसके बाद केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करके स्वच्छ भारत 2 के अंदर केंद्र सरकार ने पैसा दिया है, तो वो काम शुरू हुआ है और 20 मीटर वो नीचे भी हो गया। और जब हम कहते हैं कि हम कूड़े के ये पहाड़ हटाएंगे, तो आप इस बात की अच्छे से जानकारी कर लीजिए कि अगर मोदी सरकार है, वायदा किया है ना 2024 तक हटाएंगे, तो वो हटके रहेगा। आपकी तरह नहीं जो वैक्सीनेशन के समय पर दुनिया को कहते थे कि 20 साल तक वैक्सीन नहीं होगी, करके दिया है, ये भी करके देंगे। बात करने के लिए तो केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी अभी अपना वोट डालकर यहाँ पर आई हैं और कई मुद्दों पर बात की और ये कहा कि फिर से लोग जो है वो बीजेपी के लिए वोट करें और एमसीडी में वापस बीजेपी की सरकार बनाए। विवेक साथ में पीयूष मिश्रा, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। All right, viewers, so Meenakshi Lekhi speaking to Republic TV. Now, BJP very confident that they will come back to power again, this time for another consecutive term. But when we talk about issues, the issues of the MCD, of the civic body and of the people of Delhi are something which every citizen in Delhi has to deal with in the day-to-day daily life. So we're talking about sanitization, hospitals, we're talking about air pollution,
cleanliness, garbage. These are very important issues, and this is going to be the make and break issues for these elections right now, for the parties and candidates who are contesting. They have been talking about this as well. Arvind Kejriwal, in fact, was attacked by the BJP. The BJP had attacked Arvind Kejriwal on air pollution, saying that air pollution has not been controlled in Delhi, despite all the promises made by the Aam Aadmi Party. Tanisha is joining us live. Tanisha, you have been speaking to some Aam Aadmi Party candidates. You have been speaking to the voters as well. What's the sense you're getting there on ground? Right, Shivangi. Right now, I am outside Anand Niketan. Hardeep Singh Puri, Union Minister, had just voted here. Right now, I am with a voter. Ma'am, what are the major issues that you're keeping in mind while you're going to vote inside? Firstly, it's our responsibility. It's our duty and responsibility to vote. So, that's the major... That's the thing, that's my priority, that as a citizen I need to make that effort and come and vote. Right. If we can't just keep complaining about, things that this is not happening, that is not happening, at least this is like a small, like we should do our bit, Sir, what are your major issues that you kept in mind while you were going to vote inside? It was basically an anti-BJP vote. So I am concerned. I don't know. So, but what are the major issues? Be it cleanliness. The three pahads of the Delhi gun that they have created. So in 15 years, what my brother is saying is that they haven't really taken care of Delhi. Exactly. So we want somebody who really looks after Delhi and takes care of Delhi in the way. We sincerely hope that the AAP does it. I mean, we don't know the candidate per se. So could for AAP and Kejriwal. Yeah. Can you also show your inked finger to the camera? Yeah, sure. And what would you like to tell those voters who haven't come out yet? How would you encourage them? Exercise their franchise. Must, because you can't say I want to participate in a democracy and then not vote. So everybody should. We all do drawing room criticism, but we have to come and exercise our votes. Right. Thank you. Thank you. There you have voters coming out, urging people to come out in the open, exercise their right that they have been giving in the democracy, and to make sure that whatever they want has been fulfilled by exercising their vote here. This is what the voters have been telling here. So remember, like I was saying, cleanliness and corruption are the major issues that the people of National Capital have been voting today in this high-stake MCD polls. Back to you. Right, Tanisha. Well, absolutely. Voters I've been speaking to as well have been speaking about development. Development is very, very important for the voters of Delhi. Development, roads as well, infrastructure, air pollution, garbage, cleanliness. These are very important issues as well. Arvind Kejriwal just spoke to Republic TV, and he had come out after going out of his residence to cast his vote. He has been saying that I want everyone to come out and vote in large numbers. Hardeep Singh Puri also speaking exclusively to Republic TV, saying that he's confident that the result will be good. The BJP has been doing great work here in the MCD, and the result will favor the BJP as well. Let's play out those reactions we are getting from the top political leaders on Republic TV. Let's play them out for our viewers. हम सब लोग दिल्ली से बहुत प्यार करते हैं। आज दिल्ली नगर निगम का चुनाव है और मैं दिल्ली की जनता से अपील करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर निकल के अपने वोट का इस्तेमाल करें। चारों तरफ हम देखते हैं बहुत ही कूड़ा है, गंदगी है। ये मौका है आपको दिल्ली की सफाई करने का। आप ऐसी पार्टी को वोट दें जो काम करती है, ऐसे लोगों को वोट ना दें जो दिल्ली के काम रोकते हैं। MCD में ऐसे है कि इलेक्शन रिजल्ट निकल आएगा, कांग्रेस अच्छा करेगी। सर, आपके स्टार कैंपेन बनने के बाद काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई, आपके जो आप पे एलिगेशंस लगे हुए हैं 1984 अब ऐसे करिए, एक पहले तो कौन सी है ये यहाँ ओहो ये रिपब्लिक आपको और कुछ नहीं समझ आती? नहीं सर, लेकिन आपको कुछ और समझ आती है? आपको कुछ समझ आती है? काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी उस पर। अच्छा सुनो, अच्छा है कि मैं आज के दिन ये मुझसे कभी दोबारा बात कर लेना
हाँ बोलिए। सर कांग्रेस का अगर बड़े नेता की बात करें तो इस बार चुनावी मैदान में दिखाई नहीं पड़े। कौन कहता नहीं चाहिए? कल मेरी मीटिंग में आके देखा है आपने? अभी देखा आपने? मीटिंगों में आया करो फिर पता कर लिया करो कि है कि नहीं। चलो मैं जा रहा हूँ। एक मिनट रुकिए सर बात करें। जगदीश जी सर जिस तरीके से बात करने के लिए कांग्रेस के सीनियर लीडर जगदीश टाइटलर हैं। दिल्ली की जनता से यही कहेंगे कि इस दफा कांग्रेस को चांस हम लोगों को तो अच्छा लग रहा है क्योंकि लोग चाहते थे चेंज करना। All right, so we just heard Jagdish Titler there. His entry into the campaigning, viewers, has been extremely controversial. 1984 rights accused Jagdish Titler was brought in for the campaigning as well. He joined the Delhi committee of the Congress. Very, very controversial. BJP had completely slammed this move, saying that this was not correct for a 1984 right accused Jagdish Titler to come out and campaign during the MCD elections and be a star campaigner. Very, very wrong move there. BJP completely slamming the Congress. In fact, many reactions have been coming in, viewers. We are outside a pink polling station here and many reactions coming in. We'll try to get in a word with the voters as well. But first, all the reactions coming in from top political leaders as well here on Republic TV. Let's play that out. आम आदमी पार्टी को मैं क्या कहूंगा, अभी उन्होंने जो क्लेम्स करने थे कर दिए, बाकी दिल्ली की जनता जो है वो तय करेगी। आफ्टर ऑल आजकल के जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स में उसमें पीपल मेक ऑल काइंड्स ऑफ क्लेम्स, दे मेक क्लेम्स अबाउट देयर कंट्रीब्यूशन और दे ट्राई टू टेक क्रेडिट फॉर वर्क डन बाय अदर पीपल। सो आई थिंक माय ओनली desire and hope is that people come out in large numbers to vote. दुनिया भर में हम बताते हैं कि भारत की जो लोकतंत्र है वो ऊपर से नीचे तक जो है फैला हुआ है और हम टेम्परामेंटली ऐसे लोग हैं जो लोकतंत्र में भरोसा और विश्वास रखते हैं और यहाँ पर सरकारों का आना और जाना सब शांतिपूर्ण ढंग से होता है और उसी को आगे बढ़ाते हुए अपने देश की सत्ता को मजबूत करते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूत करते हुए आइए और वोट डालिए। जो भी मुद्दे हैं चुनाव के बाद जो भी आपकी पसंद है उसके अनुसार रिजॉल्व होंगे और मैं हंस के हमेशा कहती हूँ कि भाई कर्म का फल तो इसी जीवन में मिलना है। तो अगर हम जिनको वोट देते हैं वो हमारे लिए क्या काम करते हैं वो आप सबके सामने है। जब दिल्ली ने वोट किया प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए तो उस कर्म का भी फल मिला, औरों के लिए किया उसका भी। तो अब आप एमसीडी में ठीक सी सरकार बना दीजिए क्योंकि हम सबका स्टेक है दिल्ली में, जीना यहाँ मरना यहाँ यही रहना है और यहाँ के लूटपाट करके किधर और जाके तो अपना नाम नहीं बढ़ाना है। तो आप इन सब चीजों का ध्यान रखें और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दें। मैम केजरीवाल ने कुछ देर पहले वोट डाला तो उन्होंने कहा लोगों से अपील की कि ईमानदार कट्टर लोगों को वोट दीजिए। मैं भी उन्हीं की बात का समर्थन करती हूँ कि ईमानदार और कट्टर लोगों की सेवा की भावना से आने वाले लोगों का समर्थन कीजिए और आप सबके सामने है वो दृश्य जो कि जेल के अंदर चल रहे हैं और आप सबके सामने है एक के साथ एक फ्री वाली पॉलिसी और उस एक के साथ एक फ्री में कोई काम की नहीं बल्कि आधे पौवा फ्री मिल रहा है। तो आप उसी हिसाब से वोट दीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि ईमानदार कौन है और काम कौन करने वाला है। सबके आपके सामने काम है। अगर आपने केंद्र में मोदी जी की सरकार बिठाई तो केंद्र सरकार ने क्या क्या काम करके दिए। ये म्यूनिसिपल स्कूल है जहाँ पे मैं वोट करने आई हूँ, यहाँ पर कंप्यूटर लैब है, यहाँ पर रोबोटिक्स है और उसके बारे में कोई हल्ला गुल्ला नहीं है। हम लोगों ने किस किस तरीके से ये काम किया आप हमसे पूछिए। प्राइवेट जो कंपनीज होती हैं जहाँ पर उनका CSR होता है या कुछ होता है उनको कह के ये काम करवाया है। रोटरी क्लब को कहकर यहाँ पे वॉश का हैंड वॉश स्टेशन और ये सब लगवाया है क्योंकि 6,190 करोड़ मात्र पूरी तीनों MCDs का मिलाकर बजट है। 75,800 करोड़ रुपया दिल्ली का बजट है और 15,000 करोड़ दिल्ली सरकार ने अपने शिक्षा मंत्रालय का बजट दिया हुआ है जिसमें 1100 स्कूल हैं और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास 1500 से ऊपर स्कूल हैं जहां पर बच्चों को शिक्षा ही केवल फ्री नहीं मुफ्त मिलती बल्कि यूनिफॉर्म, किताबें और भोजन ये सब चीज़ें फ्री मिलता है। तो वो तो म्यूनिसिपैलिटी को प्रोवाइड करना होगा।
All right, viewers. So right now, some elderly citizens have come to vote as well. They're going inside. A lot of activity here at the police station where we are right now. Elderly citizens going inside in a wheelchair. My camera person can trade and show. So that really shows the enthusiasm of even the senior citizens coming out, even right now in a Delhi winter, which is very cold. Usually Delhi winters are very cold. We're already in December, and they're coming out and they are coming in large numbers to vote. A lot of activity at the police station I am right now. And my colleague Suesha has been speaking to many voters. She has been tracking Arvind Kejriwal while he left his residence to cast his vote. Let's play out the reaction that Suesha, my colleague, has got for all our viewers of Republic TV. क्या इशू नहीं है वो बताएं। आप भी यहीं रहते हैं, क्या इशू नहीं, कूड़ा नहीं, सफाई नहीं, कुछ नहीं, कोई बादल नहीं, सड़क नहीं, गड्ढा नहीं। इतनी बुरी सड़कों की हालत तो जिंदगी में कभी नहीं देखी जितनी बुरी अभी हालत हो गई है। जगह जगह कूड़ा पड़ा है, जगह जगह कूड़ा पड़ा है, गंद पड़ा है, होपलेस। बातें ज़्यादा करा लें इनसे बस। देखिए इश्यूज तो बहुत हैं। पहली बात तो दिल्ली 20 साल पीछे चली गई है। आप ये देखिए कोई नए फ्लाईओवर्स नहीं बने, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लोग यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा। आप बिजली अगर आप दे रहे हैं मुफ्त में, ये मुफ्त की जो स्थिति है ये होनी ही नहीं चाहिए। आपको काम करना चाहिए। कोई नए स्कूल नहीं खुले, कोई नए अस्पताल नहीं खुले। जब एक पार्टी दूसरी पार्टी से बात करती है कि नदियाँ साफ नहीं हुई, तो वो बात करते हैं साहब पहाड़ साफ नहीं हुए। वो अपने सवाल का जवाब नहीं देते। और हमारे देश में सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि लोग एजुकेटेड नहीं है, अपने वोट की कीमत नहीं समझते। जब आप अपने वोट की कीमत को समझेंगे तब आपका यह देश के अंदर जब खुशहाली आएगी। अब लोगों को हम हरामखोर बना रहे हैं। आप विचार कीजिए, तो बहुत सारे आप ये देखिए कॉन्ट्रैक्टर को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट दे दिए। पटरियाँ तो नई बन गई सिविल लाइन में, जो जरूरत नहीं थी, जिसकी आवश्यकता नहीं थी, बिल्कुल ठीक है। सड़कें ठीक नहीं हैं आज भी। मैं भी यही कहना चाहूँगी कि ये फ्री की चीज़ें बंद होनी चाहिए। आदमी को मेहनत करने दीजिए, उसको कमाने दीजिए। ये नहीं कि आप फ्री में बैठे, मिसयूज हो रहा है पैसे का और कुछ भी नहीं। आप बिजनेस के बारे में भी आप सोचिए, बिजनेस के थ्रू कितने लोगों को जॉब मिलता है, कितने। अब बिजनेस जब से ठपा, बेरोजगारी, क्राइम, अब बेरोजगारी होगी तो क्राइम भी बढ़ेगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए ना कि भाई फ्री में, अरे फ्री में कहाँ से आएगा? मीडियम क्लास ही तो लोगे, मीडियम क्लास कहाँ जाएगी? मीडियम क्लास कहाँ जाएगी? फ्री का कोई अपने घर से तो दे नहीं रहा, हम लोगों की कमाई दे रहा है ना। एक व्यक्ति तो फिर एक मकान में 6-6 मीटर लगाए हुए हैं, तो 6-6 मीटर एक मकान में लगाए हुए हैं, और वो बिजली फ्री ले रहे हैं। और हमारा 500-600 यूनिट का बिल 6000, 7000, 8000 का आता है। वो कोई तरीका नहीं है ना। फ्री में क्या वो फालतू चलता रहता है, यूटिलाइज भी कुछ नहीं होता। मैं जाके देखती हूँ ना घरों में, फ्री में चल रहा है, ऐसे बैठे हैं लोग, हरामखोरी कर रहे हैं। आप मेहनत करोगे, बिजली का पे करोगे तो आप मेहनत करोगे, फ्री में मिलेगा तो आप क्यों मेहनत करोगे? इसलिए ये सब कुछ बंद होना चाहिए। बिजनेस को बढ़ावा देना चाहिए कि लोगों को जॉब मिले, क्राइम कम हो। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि वादा कर लिया और आप पूरा नहीं करो, वादा किया तो आप पूरा करो। और जनता को इतना हक होना चाहिए, जो वादा खिलाफी करता है उसको इमीडिएट हटा दिया जाए। All right, viewers, so we are getting these top updates right now where many reactions coming in from voters as well. And, the big question right now, of course, is that will the BJP be able to get more votes this time around? The BJP very confident about winning these elections yet again. And the voters we have been speaking to, they are talking about development, they're talking about roads, and they're talking about infrastructure as well. And also the fact that Arvind Kejriwal has been campaigning himself. He's the main face of his campaign of the Aam Aadmi Party, while a lot of BJP leaders, very prominent BJP leaders, have been called to Delhi, including JP Nadda, who had come to campaign before the MCD polls. All right, let's have a look at what else is making news from across the nation right now. Amid increased incidents of unmanned aerial vehicles bringing drugs, arms and ammunition across the border in Punjab and Jammu and Kashmir, the Indian Army is preparing to counter drones sent by Pakistan. High-stakes Municipal Corporation of Delhi polls is all set to commence. It's commenced right now and its voting is on. It's largely a three-way contest between the Aam Aadmi Party, BJP and Congress, in which 1,349 candidates are in the fray.
As India celebrates Navy Day today, President Draupadi Murmu is set to attend the grand celebration organized by Eastern Naval Command in Visakhapatnam. Indian Navy is all set to demonstrate India's combat powers and capability through an operational demonstration today. Officials state that Safdarjung Hospital was under a cyber attack as it had been for AIIMS Hospital. However, the damage was not so severe. Meanwhile, the AIIMS server continues to remain down. The first meeting of the Congress Steering Committee constituted by Party Chief Mallikarjun Kharge will be held today to decide the schedule and venue for its plenary session. This committee was formed in place of Working Committee, the highest decision-making body of the party, after Kharge took charge as the new Congress chief. BJP on Saturday said that using abusive words against Prime Minister Modi has become a new normal for the Congress. BJP spokesperson Sambit Patra cited reports of Karnataka Congress leader calling Modi a term which means Bhasmasur, a demon in Indian mythology, to hit out at the opposition party. He noted that it comes close to the heels of Congress President Mallikarjun Kharge throwing Ravan Bab at the Prime Minister. Gujarat government has filed an affidavit in the top court supporting police seeking stringent laws on religious conversions. Gujarat government says it has passed a law to stop religious conversion in the state. The affidavit also says that the right to freedom of religion does not include fundamental right to convert other people by force. Ahead of the second phase of Gujarat polls, AIMIM is facing an internal revolt as former leader of AIMIM has spoken about the internal strategies of the party and is claiming that AIMIM has had dealings to not win but cut into votes and hence not too much of a push is being given to the MLAs. Please. Viewers, we continue to be live and breaking as MCD polling is continuing right now. MCD polling continuing right now. Viewers, voters coming out. In fact, this gentleman has come to vote. He just cast his vote. He's an elderly citizen who has come to vote despite any kind of issues he must have faced. He came out and voted. A lot of spirit there, and we are in fact urging all the voters, young voters, to come out and vote at the polling station today. We will continue tracking this update every second of the minute right now. In fact, we have reporters all over Delhi getting you top updates as the big prestige battle between Aam Aadmi Party and BJP will be decided today after the Delhi citizens cast their vote, and the results will be out on 7th of December. Stay tuned. मेरी नजरों से चुना, तेरी हरकतों से सुना, कभी जीती तू, कभी मैं हारा, फिर भी खूबसूरत है ये नजारा, क्योंकि इसमें है खुला कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा। अमेजिंग स्पेसेस के लिए ग्रीन लैम लैमिनेट्स, कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा। Will smart manufacturing complement traditional manufacturing processes or replace them entirely? India will be able to contribute approximately 5% of the global market in terms of when we talk about additive manufacturing. What kind of opportunities does it hold for the BTech students? Amrita University, I would say, is ideal for students who come into manufacturing, additive manufacturing. To know more, watch Amrita School of Engineering presents Shaping the Future of India this weekend, only on Republic TV. A high voltage battle which will decide the nation's political trajectory. Who will break their records and which faces will be the winners? 89 out of the 182 seats go to polls. Stay tuned to India's election news headquarters as Gujarat goes to polls. Live coverage minute by minute all day today on Republic.
the mandate from the two states. It's been a high-stakes battle for the Prime Minister. Who will win Gujarat and Himachal? While the opposition was missing in action, the people have given the real mandate. Will the BJP retain both the states? Is the Aam Aadmi Party even a factor? Get the earliest peep into the verdict with Republic P-Mark exit poll, December the 5th at 6 p.m. Waterlogging has increased in the last 3 to 4 hours. Elphinstone station is shut, which means all those people who are hoping to go back home. When you look at that crowd, what's the message that Houston is sending out? There is also anticipation of a few announcements being made. What are your expectations when they both come up on stage? Are you expecting something big? I'm at the Jama Masjid in Bandra and there are thousands of people behind me. Why they are protesting, but the situation is pretty tense. Thousands of people that you see. 4 दिन की रिमांड है, 4 दिन की रिमांड. कुछ कहना चाहते हैं आप? पत्राचौल स्कैम, मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज के बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप? As Gujarat goes to polls on the 1st of December, 89 of 182 seats. Think was happening, and are you confident that this time BJP will once again be able to get a large number in the polls? Definitely people will vote for BJP. There is a reason, because they have seen how Prime Minister Narendra Modi has been changing this entire nation. But due to one person, who is Arvind Kejriwal, the things are getting worse in Delhi. You got a worst air in Delhi, you got a worst water in Delhi, you got a worst roads in Delhi, and things are getting worse day by day. So that's the reason people want to change. There is the mood of the nation, and the same is the mood of Delhi. And Sirsaji, I of course will talk to you once you go and cast your vote. We have actually, been here since morning, and everybody is so happy about this polling station. They are telling me that, they've never seen a polling station like this ever before. It's very welcoming, and it's all staffed by females and women as well. So, the voters very happy. What do you think, is the core issue right now for the voters? Because some voters say development is a very, very important issue that they want to address. Definitely, development. But the most important issue is the pollution in the air. Nobody can breathe. The young children and the elder people, their lungs are getting infected. People have seen how the dirty water they are getting, and due to the people are getting sick. How Yamuna has not been cleaned in the last 8 years. A person who swears by his children, every time he swears by Delhi and give me a chance and I'll prove it. But every time he's failed. And after failing time and again, he says, "Mujhe 5 saal aur de do." In fact, Arvind Kejriwal had said that pollution is not a problem of Delhi, it's a problem of North India. He was blaming it on North India, even after BJP had raised this issue time and again. So जो प्रॉब्लम अरविंद केजरीवाल को वोट ना दे सके वो प्रॉब्लम नहीं है, और जो प्रॉब्लम के कारण अरविंद केजरीवाल की वोट खत्म, कभी वो कहते थे करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा, जो कहते करप्शन तो मुद्दा ही नहीं है. कभी वो कहते थे करप्ट आदमी को जेल में डालना चाहिए, अब तो कहते हैं कि जेल में 5 स्टार होटल होना चाहिए. जेल तो मुद्दा ही नहीं है. फिर वो कहते थे कि मैं आपको कसम खिला के कहता हूँ कि यमुना में क्लीन कर दूंगा, अब तो कहते हैं यमुना की गंदगी का मुद्दा ही नहीं है. तो उनके लिए सिर्फ वही मुद्दा है, 2 ही कारण, या उसको सत्ता दिलवाए या उसको पैसा दिलवाए, बस दैट इज द इशू फॉर अरविंद केजरीवाल. Right. Okay. आप वोट करने चले जाइए. Once you come back, we will again speak to you about it as well. So that was Manjinder Sirsa with us right now. He's going to go and vote. He has come at the pink polling station, viewers. This is a pink polling station at Punjabi Bagh Extension area. And like Manjinder Singh Sirsa was saying that they're very confident they will come back to power once again. He's just stepping inside with the security as well. We'll be tracking him once he comes back. But very important points being raised right now. He's saying the Aam Aadmi Party has not delivered, and even they have not delivered on basic things
as being in the Delhi government, even though they're in the Delhi government, right, Aam Aadmi Party ruling the Delhi government, they haven't delivered on simple basic things, infrastructure or air pollution or cleanliness or as well. So, right now, very important points being raised right now. We just spoke to Manjinder Singh Sirsa exclusively. Suesha, I want to come back to you as well. Suesha, you have been tracking Arvind Kejriwal, and Arvind Kejriwal, on the other hand, has been saying that, give us a chance, we will do better than the BJP. That's what Arvind Kejriwal is saying, and he's also saying that people should come out in large numbers. So basically a prestige battle happening there, Suesha, between the Aam Aadmi Party and the BJP. Oh yes, absolutely, and that is very, very evident from the war of words that has been going on between the two parties, not just during the campaigning, but even on this date when the polling is underway, and we see that full frontal attack coming in. But most importantly, all the leaders urging to the voters, Shivangi, that they must come out and vote in large numbers. This is extremely important because let's understand why the MCD polls hold the kind of significance. It is these very issues that affect the people directly, and this is the national capital that we are talking about. We've been hearing from Delhiites since this morning who continue to talk about air pollution, bad air that they are having to breathe, who continue to talk about garbage management and waste management, and that again is a very important factor when it comes to cleanliness in the city. Again, better schools, better hospitals, better parking facilities, and in all these factors that affect the quality of life of a Delhiite. So, which is why we've seen how the BJP has been in power for the last 15 years. They're looking to get a fourth term. The Aam Aadmi Party also, which was a distant second in the previous election, is now really hoping and pitching to the people that they must be chosen. A lot of voices from the ground of voters. Let's listen in. किन मुद्दों पे वोट करेंगे? ये विकास के मुद्दों पे करेंगे वोट। मैम, आप किन मुद्दों पे वोट करेगी? विकास के मुद्दों पर? विकास के मुद्दों पर, स्कूल की पढ़ाई लिखाई की। किन मुद्दों पे वोट करेगी? विकास की, बेरोजगारी है, महंगाई ज़्यादा है। हाँ जी, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। यू में से कि द सिचुएशन ऑफ रोड्स, वाटर एमिनिटीज एंड इवन सैनिटरी ऑल्सो। मेन किए विकास के मुद्दे पे। एक तो हमारे यहाँ पानी की बहुत प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, और दूसरा सीवर नहीं है, और सफाई नाम मात्र ही है। हफ्ते में एक दिन आए, 2 दिन आए, ना भी आए, ऐसी हो जाता है सर। बस यही एक मुद्दा ही है, पानी का, सफाई का सबसे बड़ा है। We continue to get you more voices as we see important leaders of the BJP, the Aam Aadmi Party, going out to cast their votes. As remember, we are close to about 12 noon right now, and Delhi coming out in larger numbers with every succeeding hour to cast their votes for the MCD elections. My colleague Piyush spoke to Meenakshi Lekhi just a short while ago. Let's listen in to what the Union Minister had to say. मैं सबको हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मौसम बहुत अच्छा है और सब लोग घर से बाहर निकलें, फटाफट वोट डालें, क्योंकि पोलिंग स्टेशन जो है घर के नज़दीक है, 5-10 मिनट से ऊपर नहीं लगते हैं। तो पोल करने के बाद, वोट डालने के बाद आप अपने घरों में चाय का आनंद ले सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं, और जिस भी चीज़ पे डिस्कशन करना चाहते हैं, परिवार से लेके देश दुनिया की बात, वो भी कर सकते हैं। पर वोट डालने के लिए कृपया घर से बाहर निकलें। केंद्रीय मंत्री के अलावा एक वोटर भी हैं, आपने क्या मुद्दा अपने दिमाग में रखा वोट डालते हैं? मैंने मुद्दा यही रखा कि ये शहर मेरा है, मेरा जन्म यहाँ पे हुआ है और होपफुली मृत्यु भी यहीं होगी। तो जीना यहाँ, मरना यहाँ, तो शहर की चिंता करना, अपने कॉलोनी की चिंता करना हम सबका फर्ज है, और उसको हम ठीक करें, और जो लोग धोखे की राजनीति करते हैं उनको बाहर करें। केजरीवाल कह रहे हैं कि अब पूरी तरह से साफ हो जाएगी एमसीडी से बीजेपी और सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी की। उन्होंने जिस प्रकार की धोखे की राजनीति दिल्ली को दी है, दिल्ली उसका जवाब उनको जरूर देगी, और जिस प्रकार से उन्होंने दिल्ली को बिगाड़ने का काम किया है उसका जवाब भी दिल्ली देगी। मैं दिल्ली में पैदा हुई हूँ और मैंने दिल्ली में कई किस्म की सरकारें देखी हैं, जिसमें से ये भी हैं, और मुझे भी ऐसा था कि जो मर्जी, ठीक है राजनीति अपनी तरफ है, मगर दिल्ली को अगर कोई व्यक्ति ठीक करे तो हम उसके
इंटरनली मन में विश्वास रहता है कि शहर तो मेरा भी है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने दिल्ली के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके अपने चेहरा चमकाने का काम देश दुनिया में किया है, क्योंकि वो अपने आप को राष्ट्रीय नेता घोषित करना चाहते हैं और प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनाना चाहते हैं, उससे दिल्ली की नाराजगी है, क्योंकि दिल्ली का काम इन्होंने नहीं किया, ऐसा मैं मानती हूँ। And that was Union Minister Meenakshi Lekhi, where the BJP is saying that they have been in power for the last 15 years and it is for the people to see to the kind of work that they have done. Remember that we are close to 12 noon now, and even as the voter turnout is being tracked till 10:30 a.m. was about 9%, as leaders continue to urge to the people to vote in large numbers. बेईमानों को तो नहीं लाएगी। अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमानों के सरदार बन गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन को कहा कि कोर्ट में मुंह मत खोलना वरना मैं मर जाऊंगा, तो याददाश्त खोने का बहाना किया। अब इसके बाद भी कुछ बचा रहता है क्या? आप यहाँ पे आए हैं, वोटर्स कह रहे हैं कि उनके नाम डिलीट हो गए, बहुत सारे वोटर्स आपसे। हाँ, ये तो बहुत बड़ी साजिश है। मुझे लगता है यहाँ का चुनाव कैंसिल करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति आ रही है, 450 वोटों को, ये जहाँ भी सुभाष मोहल्ला का है ना, सुभाष मोहल्ला वार्ड का ये चुनाव है, हम इसको चुनाव आयोग में ले जाएंगे। जिसने भी ये किया है, इस चुनाव को फिर से कराना पड़ेगा और ऐसे लोगों को पनिशमेंट देना पड़ेगा। जी, कितनी शिकायतें अब तक आई हैं? मनोज जी, कितनी शिकायतें अब तक आई हैं? आप सोचिए कि 450 वोट जो 30-30 साल से वोट दे रहे हैं, आप उनका वोट काट दिए क्योंकि वो बीजेपी समर्थक वोट है। कौन कर रहा है ये साजिश? ये काम अरविंद, ये दिल्ली गवर्नमेंट का है। ये वोट काटना जोड़ना उन्हीं का काम है। लेकिन आप इतना बड़ा अपराध कैसे कर सकते हैं कि व्यक्ति ने कुछ कहा नहीं, उसने लिखा नहीं, उसका आई कार्ड, उसका आधार कार्ड, आप उसका वोट काट दिए। शिकायत को लेकर आप हाँ, मैंने अभी किया। और ऐसे ही चुनाव कैंसिल होते हैं, ऐसे ही री इलेक्शन होता है ना भाई। 450 लोगों को आप वोट नहीं देने देंगे और हम चुपचाप सह लेंगे, बैंड बजा देंगे। अरविंद केजरीवाल को लगता है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है तो वोट क्यों कटवा रहे हैं? कॉन्फिडेंट व्यक्ति वोट कटवाता है। ये जिस तरह से यहाँ पे किया है, मैंने अभी विजय देव जी से बात करी है और अभी मैं इस केस को कानून से चलता है ये देश। सर, कितनी लंबी लिस्ट है जिनमें गड़बड़ी का आप जिक्र कर रहे हैं? लगभग 500 लोगों की लिस्ट है, क्योंकि अभी एक लोग और आपके पास आए थे जिन्होंने अपना कार्ड दिखाया और उनका नाम कटा हुआ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मुझे लगता है कि दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से ऐसा आम आदमी पार्टी ने किया। सर, आखिरी सवाल, बीजेपी जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? मनोज जी, बीजेपी कितना आश्वस्त है जीत को लेकर इस बार? मनोज जी, हो गया सर, आपका हो गया बस। मनोज जी, बीजेपी जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? आखिरी सवाल। हम तो पूरी तरह आश्वस्त है। हो गया है कॉमन यार। आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, वो वोट कटवा के अगर चुनाव जीतना चाहती है, तो मुझे लगता है इट्स लीगल मैटर और हम इसमें तुरंत जाएंगे। अपनी जरा वोट डाल लूं मैं, उसके बाद हम कंप्लेन। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो ये थे बीजेपी नेता मनोज तिवारी, जिन्होंने ये तब शिकायतें भी की हैं कि वोट कुछ लोगों के काटे गए हैं, जिसको लेकर अब आगे वो शिकायत करेंगे, चुनाव आयोग तक जाएंगे इस बात को लेकर। साथ ही उन्होंने ये कहा कि बीजेपी इस बार जीत को लेकर एमसीडी में एक बार फिर से पूरी तरह से आश्वस्त है। टीम कैप्टन इंस्पेक्टर हिमांशु सिरोही तेजी के साथ जलती हुई ज्वाला की तरफ से तोड़कर आगे निकलती। यहाँ बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छी। मेरी नजरों से चुना, तेरी हरकतों से सुना।
कभी जीती तू, कभी मैं हारा, फिर भी खूबसूरत है ये नजारा, क्योंकि इसमें है खुला कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा। अमेजिंग स्पेसेस के लिए ग्रीन लैम लैमिनेट्स, कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा। आज के दिन जब दिल में दर्द है अपने जवानों की शहादत पर, उसी के साथ साथ जब ये नारे गूंजते हैं तो एक सुकून है, एक हिम्मत है। मैं इस वक्त जाफराबाद में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर फोर्स डिप्लॉयड है। कोशिश ये है पुलिस कर्मियों की, अर्धसैनिक बलों की, कि यहाँ पर किसी तरह का कोई दंगा ना भड़क पाए। तो आपको लगातार बता रहे हैं कि किसान कानून वापस हुए हैं और किसान कानून वापस होने के बाद सीधे किसानों के बीच पहुंची हूं और किसानों से ही बात कर रही हूं। शाहीन बाग पर बुलडोजर चलेगा। शाहीन बाग को लेकर जो राजनीति गरमाई रही वो और ज्यादा गरमाएगी, ये बिल्कुल तय है। What is it that is unique about your father's story to build the largest logistics company? 99% in the movie, it is a real-time story what has happened with us in our life. That's what been captured. Why should a young person watch this film? All the youngsters out there, they want to be an entrepreneur just in overnight. मतलब वो shortcut देख रहे हैं. Any business for that matter or any work for that matter और success आपको overnight नहीं आती. This is that film. Pakistan that would boast to the Chinese and tell them that, you know, we can guarantee you absolute peace in Afghanistan, build the China-Pakistan economic corridor right through the heart of Afghanistan. But in the last 1 year, more than 300 Pakistani soldiers and policemen have been killed by various factions of the Afghan Taliban and also the fearsome terrorist organization, the Tehreek-e-Taliban Pakistan. Today, Pakistan is suing for peace. A high voltage battle which will decide the nation's political trajectory. Who will break their records and which faces will be the winners? 89 out of the 182 seats go to polls. Stay tuned to India's election news headquarters as Gujarat goes to polls. Live coverage minute by minute. And while leading into the MCD polls, the Congress that had courted controversy after they chose controversial leader Jagdish Taitla as their star campaigner into the battle in this election. Republic confronted him just a short while ago, but he evaded our mics. Look at this sequence. सर काफी विवाद इस चैनल से माफी चाहता हूँ लेकिन इस चैनल से माफी चाहता हूँ लेकिन सर अब इस चैनल से माफी चाहता हूँ कैंपेनिंग की अगर बात की जाए तो क्या आपकी कैंपेनिंग से फर्क पड़ा सर? मना कर रहे हैं आपको बोलना क्या आपकी कैंपेनिंग से फायदा हुआ कांग्रेस? सर काफी विवाद इस चैनल से माफी चाहता हूँ लेकिन इस चैनल से माफी चाहता हूँ लेकिन सर अब इस चैनल से माफी चाहता हूँ कैंपेनिंग की अगर बात की जाए तो क्या आपकी कैंपेनिंग से फर्क पड़ा सर? मना कर रहे हैं आपको बोलना क्या आपकी कैंपेनिंग से फायदा हुआ कांग्रेस? सर काफी विवाद इस चैनल से माफी चाहता हूँ लेकिन इस चैनल से माफी चाहता हूँ लेकिन सर अब इस चैनल से माफी चाहता हूँ कैंपेनिंग की अगर बात की जाए तो क्या आपकी कैंपेनिंग से फर्क पड़ा सर? मना कर रहे हैं आपको बोलना क्या आपकी कैंपेनिंग से फायदा हुआ कांग्रेस? And you just saw that sequence of how Jagdish Taitla evaded Republic completely after he was questioned by my colleague. Remember, he was chosen the star campaigner by the Congress party in the run-up to the MCD polls. And once again, we saw how the BJP went on to question as to how they could choose Jagdish Taitla to be their star campaigner. And this once again hurts the sentiments of the 1984 Sikh riots and the families who continue to suffer till date. But while no answers came in on this, when Republic confronted Jagdish Taitla, nothing from him. On that note, we slip into a short commercial break. We'll be back on the other side.
मेरी नजरों से चुना, तेरी हरकतों से सुना। कभी जीती तू, कभी मैं हारा, फिर भी खूबसूरत है ये नजारा, क्योंकि इसमें है खुला कुछ मेरा कुछ तुम्हारा। अमेजिंग स्पेसेस के लिए ड्रीम लैम लैमिनेट्स, कुछ मेरा कुछ तुम्हारा। The mandate from the two states. It's been a high-stakes battle for the Prime Minister. Who will win, Gujarat and Himachal? While the opposition was missing in action, the people have given the real mandate. Will the BJP retain both the states? Is the Aam Aadmi Party even a factor? Get the earliest peep into the verdict with Republic PMark exit poll, December the 5th at 6 p.m. Waterlogging has increased in the last 3 to 4 hours. Elphinstone station is shut, which means all those people who are hoping to go back home. When you look at that crowd, what's the message that Houston is sending out? There is also anticipation of a few announcements being made. What are your expectations when they both come up on stage? Are you expecting something big? I'm at the Jama Masjid in Bandra and there are thousands of people behind me. Why they are protesting, but the situation is pretty tense. Thousands of people that you see. 4 दिन की रिमांड है, 4 दिन की रिमांड। कुछ कहना चाहते हैं आप? पत्राचौल स्कैम, मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज के बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप? As Gujarat goes to polls on the 1st of December, 89 of 182 seats will vote. Where high voltage political battle has broken out in the state of Gujarat since the bipolarity of the state. Will the BJP score a record victory in Gujarat? Is the Aam Aadmi Party even a factor? Politics has been challenged for the first time. Watch the fastest updates only on India's election headquarters on Republic TV. आज के दिन जब दिल में दर्द है अपने जवानों की शहादत पर, उसी के साथ साथ जब ये नारे गूंजते हैं तो एक सुकून है, एक हिम्मत है। मैं इस वक्त जाफराबाद में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर फोर्स डिप्लॉयड है। कोशिश ये है पुलिस कर्मियों की, अर्धसैनिक बलों की कि यहाँ पर किसी तरह का कोई दंगा ना भड़क पाए। तो आपको लगातार बता रहे हैं कि किसान कानून वापस हुए हैं और किसान कानून वापस होने के बाद Until 10:30 this morning, the voter turnout in the MCD polls has been reported at 9%. Of course, all leaders urging to voters to come out in large numbers to cast their vote. Several reactions that have come in since this morning. Let's listen. नमस्कार, जय श्री राम। आज दिल्ली नगर निगम का चुनाव का दिन है, वोटिंग का दिन है। आप सब लोग जरूर अपना वोट डालें, मतदान के अधिकार का प्रयोग करें। लोकतंत्र का उत्सव है और लोकतंत्र में भी सबसे लोकल गवर्नेंस का चुनाव का दिन है आज दिल्ली नगर निगम। आपकी रोजमर्रा की जितनी भी जरूरतें हैं उन सबसे जुड़ा हुआ चुनाव है ये। इसीलिए आप सबसे निवेदन है, बड़ी से बड़ी संख्या में निकलें, सभी लोग अपना वोट जरूर डालें और अपना वोट डालने के बाद अपने दोस्तों को, पड़ोसियों को, उनको भी फोन करके बोलें कि आपने वोट डाला या नहीं डाला। आइए अपने मतदान का प्रयोग करें और दिल्ली नगर निगम में अपने सुयोग्य जनप्रतिनिधियों का चुनाव करें। जय श्री राम। आम आदमी पार्टी को मैं क्या कहूंगा, अभी उन्होंने जो क्लेम्स करने थे कर दिए, बाकी दिल्ली की जनता जो है वो तय करेगी। आफ्टर ऑल आजकल के जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स में उसमें पीपल मेक ऑल काइंड्स ऑफ क्लेम्स। दे मेक क्लेम्स अबाउट देयर कंट्रीब्यूशन और दे ट्राई टू टेक क्रेडिट फॉर वर्क डन बाय अदर पीपल। सो आई थिंक माय ओनली desire and hope is that people come out in large numbers to vote. आज दिल्ली में एमसीडी के लिए मतदान है और दिल्ली के 1.5 करोड़ लोग आज दिल्ली नगर निगम के लिए अपनी सरकार चुनेंगे। तो मेरी सभी 1.5 करोड़ वोटर्स से रिक्वेस्ट है, उनसे निवेदन है कि आज एमसीडी में अपना मतदान करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि एमसीडी का सबसे पहला काम है
दिल्ली का कूड़ा साफ करना, दिल्ली के कूड़े के पहाड़ खत्म करना, दिल्ली में व्यापारियों को ईमानदारी से लाइसेंस देना, दिल्ली की गलियों को बनवाना, दिल्ली में अंदर की कॉलोनियों की नालियाँ गलियाँ सबको ठीक रखना, पार्कों को सुंदर रखना, ये सब एमसीडी के काम हैं। नाली, सड़क, पानी, जो पार्क हैं, ये सब एमसीडी के काम है। आवारा पशुओं से दिल्ली को साफ़ सुथरा रखना, ये सब एमसीडी के काम है। तो अपना वोट एमसीडी में यही सोच समझ कर दें कि आज आप दिल्ली को साफ़ सुथरा बनाने के लिए वोट कर रहे हैं, कूड़ा मुक्त दिल्ली बनाने के लिए वोट कर रहे हैं, कूड़े के पहाड़ हटाने के लिए वोट कर रहे हैं, एमसीडी में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए वोट कर रहे हैं, एमसीडी को जो उसका मेन काम है दिल्ली को स्वच्छ साफ सुंदर बनाना, उसके लिए वोट कर रहे हैं। मेरी सब वोटर्स से यही अपील है, आपके वोट के ज़रिए हम मिलकर दिल्ली को स्वच्छ बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे। सर, पिछले बार 54% वोटिंग हुई थी। दिल्ली वालों से ज़्यादा वोट करने की अपील करिए। रविवार का दिन है तो लोग छुट्टी का दिन ना समझें। मैं फिर से 1.5 करोड़ वोटर से अपील करना चाहूँगा कि मतदान बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है लोकतंत्र में जो हमको मिली है। दुनिया के बहुत सारे देशों के लोग इसके लिए तरसते हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से हम सबको ये अधिकार मिला हुआ है कि हम मतदान दे सकें और अपनी सरकार चुन सकें। इसमें बिल्कुल भी आलस्य ना करें और इसको उतना ही ज़रूरी समझें जितना हमारी ज़िंदगी के और काम हैं। आपके मतदान की बदौलत ही दिल्ली साफ सुंदर बनेगी। बिल्कुल, दिल्ली नगर निगम के चुनाव आज मतदान का दिन है और सभी मेरा नए मतदाता जो 18 साल से ऊपर अभी नए मतदाता बने, उनसे ये कहना है कि आप फर्स्ट टाइम वोट देंगे तो फर्स्ट टाइम वोट देने का एक उत्साह रहता है और हम भी सबका स्वागत करते हैं। अधिक से अधिक संख्या में मतदान हो, लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, इसके लिए अपील भी करता हूं। और साथ ही साथ आज का दिन हमारे लिए भी बहुत उत्साहपूर्ण है कि दिल्ली के अंदर जिस तरह से चुनाव प्रचार में जो मेहनत हुई है उसका सार्थक परिणाम अब आने वाला है। और आज के दिन जब हम सुबह अपनी दिनचर्या शुरू करेंगे तो पहले प्रभु के दरबार में जाएंगे, मंदिर मत्था टेक कर मतदान करने जाएंगे। मैं स्वयं 8:30 बजे पटेल नगर में मतदान करूंगा और दिल्ली के सभी मतदाताओं से अपील है कि देश हित में, दिल्ली के विकास के लिए और दिल्ली के नगर निगम को बेहतर बनाने का काम जो केंद्र सरकार ने किया है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को चुने। हमारे सभी भाई बहनों से अपील है कि दिल्ली के अंदर एक जो भारतीय जनता पार्टी के स्वच्छ प्रशासन दिया है उसको आगे बढ़ाना है और जो लोग भ्रष्टाचार किया है, जिन्होंने दिल्ली में 8 सालों में कोई विकास कार्य नहीं किया है और विकास कार्यों को रोका है, उनको जवाब देने का वक्त है। इसलिए दिल्ली के सभी नागरिकों से, मतदाताओं से अपील है कि वो अधिक से अधिक संख्या में वोट करें, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताएं। These are the political reactions that have just come in since this morning as leaders across party lines urge to voters to come out and vote in large numbers. Remember, as has been reported till 10:30 a.m. this morning, the voter turnout was 9%. And most importantly, how the viewers continue to remind, leaders continue to remind voters that these issues are very important to be addressed. We also heard from a lot of voters of how whether it is about cleanliness or garbage management or a corruption-free MCD is what they are keeping in focus while they continue to come out to vote. But we are literally touching noon at this point, about 11:56 a.m. and Delhi coming out to vote on this day of the MCD polls. On that note, we have to slip into a very short commercial break. We'll be back on the other side. हर क्षण तैयार, आत्मनिर्भर विश्व मंच पर मैं हूं तलवार जिसकी धार है घातक।
मैं हूँ इस महान राष्ट्र के तरकश में। मैं हूं भारतीय नौसेना। What is it that is unique about your father's story to build the largest logistics company? 99% in the movie, it is a real-time story what has happened with us in our life. That's what been captured. Why should a young person watch this film? All the youngsters out there, they want to be an entrepreneur just in overnight. मतलब वो shortcut देख रहे हैं. Any business for that matter or any work for that matter और success आपको overnight नहीं आती. This is that film. Pakistan that would boast to the Chinese and tell them that, we can guarantee you absolute peace in Afghanistan, build the China-Pakistan economic corridor right through the heart of Afghanistan. But in the last 1 year, more than 300 Pakistani soldiers and policemen have been killed by various factions of the Afghan Taliban and also the fearsome terrorist organization, the Tehreek-e-Taliban Pakistan. Today, Pakistan is suing for peace. A high-voltage battle which will decide the nation's political trajectory. Who will break their records and which faces will be the winners? 89 out of the 182 seats go to polls. Stay tuned to India's election news headquarters As Gujarat goes to polls, live coverage minute by minute all day today on Republic. The mandate from the two states. It's been a high-stakes battle for the Prime Minister. Who will win Gujarat and Himachal? While the opposition was missing in action, the people have given the real mandate. Will the BJP retain both the states? Is the Aam Aadmi Party even a factor? Get the earliest peep into the verdict with Republic PMark exit poll, December the 5th at 6 p.m. Waterlogging has increased in the last 3 to 4 hours. Elphinstone station is shut, which means all those people who are hoping to go back home. When you look at that crowd, what's the message that Houston is sending out? There is also anticipation of a few announcements being made. What are your expectations when they both come up on stage? Are you expecting something big? I'm at the Jama Masjid in Bandra and there are thousands of people behind me. Why they are protesting, but the situation is pretty tense. Thousands of people that you see. 4 दिन की रिमांड है, 4 दिन की रिमांड. कुछ कहना चाहते हैं आप? पत्राचौल स्कैम, मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज के बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप? 93 seats will go for polls on December 5th as phase 2 of polls goes underway. Stay tuned to India's election news headquarters. Gujarat goes to polls, live coverage only on Republic TV. A high-stake fight and a litmus test as Aam Aadmi Party and the BJP fight it out amid the bitter tussle and series of controversies. Political slugfest in the national capital as BJP fires fresh video of the Aam Aadmi Party alleging violation of guidelines. YS Sharmila claims no police permission for Padyatra despite High Court nod. It is a big political face-off in Telangana. As India marks Navy Day, mega celebrations in Visakhapatnam today.
good afternoon and thank you for staying tuned. You're watching the news at 12 noon. I'm Suesha Sawan joining you live as we get you all the updates from the various vantage points on the 4th of December when the MCD polls are underway. A lot of voices coming in since this morning as leaders cutting across party lines urge voters to go out and vote in large numbers. Remember, until 10:30 a.m. this morning, the voter turnout that was at around 9%, and this even as voters vociferously putting out the issues that they want addressed from whosoever comes into power in the MCD polls. Remember, BJP has been reigning for the last 15 years and hopes to reign in a fourth term, whereas the Aam Aadmi Party is saying that they are confident of their victory. I want to cut across to my colleague Tanisha, who's joining us live on the broadcast. Tanisha, 9% is what was voted, is what was reported until 10:30 a.m. What are you seeing on the ground? While those who've come out to vote have been very, very fierce about the kind of issues that Delhi is facing at this point, be it cleanliness, be it better garbage management, be it the air pollution, be it better facilities and civic issues that need a lot of attention. But are they coming out in larger numbers now, considering we are close to, or rather beyond 12 noon now? Rightly said, Swesha. Now, in the morning, we were reporting since 7 a.m. in the morning. Around 8 a.m. is when the polling started. There, when we are right now, remember, at Anand Niketan area, the polling percentage was quite low early in the morning because, remember, it's a cold, windy, chilly morning. It's December already. But soon after, it was around noon. It was around 11 to 12 o'clock. We saw a slew of voters coming in. So, voting percentage is expected to increase by 2 p.m. That is almost by lunchtime is what we're understanding. Like you said, about 10:30, the voting percentage that we have is around 9%, but this is surely going to increase. Remember, in the 2017 MCD polls, it was around 53%. This time, what we are assuming, what the situation on ground feels like, is that the polling percentage will cross the 2017 mark. Now, remember, the Delhi power structure, Suesha, is very interesting. It's been divided into three parts. And if the Aam Aadmi Party comes into power, right now they have 1/3 of the vote. But if the Aam Aadmi Party comes into power in the MCD, they'll have almost half of the power of Delhi. So it'll be very interesting to see who is going to win this battle of prestige in the national capital. Suesha. Absolutely. Tanisha, stay on with us. Let me also bring in Piyush at this point, because Piyush, you've been getting us a lot of voices from the ground as leaders urge to voters to come out in larger numbers. We are hoping the voter turnout gets better. But fact is that they are very, very clear about the issues that they want addressed on the ground. They want a better Delhi. They want civic issues and clear attention to be given. But we see the poll pitch, the Aam Aadmi Party saying that they want to make the MCD corruption-free. They are talking about better garbage management. It is the BJP saying that we will provide better housing, better water management, and the poll promises, of course, that they continue to make. Absolutely, Suesha, and it is very good sign that the voter is not confused. He or she knows the real issues on which they want their government in MCD, and that is what we have been hearing since morning. We have been getting different voices from different parts of the country, from national capital, where we are hearing that voter knows on what issue he or she is going forward to vote. Whenever a voter coming out, we are trying to get in a word from them, and the main issues on which the voter is focusing right now is corruption, air pollution, garbage, waste management, and these are the issues with which MCD deals with. So this time, many are satisfied, many are not satisfied. I'm sorry, I'm having to interrupt you here, but controversies that continue to happen even on the day of polling. We are getting these details and we'll flash specifics of it on our screen also right now, where another video that has now been pushed out. BJP Delhi is also planning to approach the Election Commission on the basis of this video, where they put out a complaint and a tweet also to this effect. This is the tweet by Shehzad, who's gone on to say that on the basis of video evidence of violation of MCC and election guidelines last night by Durgesh Pathak and Vijendra Garg of the Aam Aadmi Party, BJP Delhi has approached the Election Commission for strictest action featuring defeat
of Aam Aadmi Party was distributing illegal cash and liquor and doing illegal campaign were caught. So primarily Shehzad Poonawalla saying that it is on video, it is on tape, where they are alleging that the Aam Aadmi Party and to be precise Durgesh Pathak and Vijendra Garg of the Aam Aadmi Party were illegally campaigning because they were caught on camera distributing illegal cash and liquor. And that strictly violates the guidelines of the Election Commission. Hence, BJP Delhi is now filing a complaint on this very issue. In fact, that has already been filed, and Shehzad Poonawalla also putting out a tweet to this effect. So this is the election controversy on the day of the polls, where we see that this is a video that has been put out by Shehzad Poonawalla of the BJP, where they are going on to say that they will take strict action, and they've also filed a complaint with the Election Commission on this against the Aam Aadmi Party, supporting their claims by saying that they have video evidence on this. Piyush, I want to come back to you on this, because while we see many of these controversies happening on polling day itself, this of course is BJP saying that they can back their claims by this very video. They have it on camera, and the Aam Aadmi Party was illegally campaigning. All right, not too sure if Piyush is still connected with us, but I believe Tanisha still stays on with us. Tanisha, this is important because while we see that such kind of incidents do occur even on polling day, here on the receiving end is what BJP is claiming that they are, because this is the Aam Aadmi Party, as they claim, is going on to illegally campaign, and allegations of Aam Aadmi Party leaders who were distributing liquor and cash, and they are saying that they've already filed a complaint on this with the Election Commission. Rightly said, Swesha. Well, remember, BJP has been blazing all guns at the Aam Aadmi Party since the commencement of this MCD elections. First, they released a slew of videos against Satyendra Jain, and then came in the ticket scandal, alleged ticket scandal, we can say, that the BJP put on the Aam Aadmi Party. And now this video where the BJP, remember, this video has been released by the BJP, where they have been claiming that it was AAP leaders Durgesh Pathak and Vijendra Garg who were seen violating the MCC, the Model Code of Conduct. Now remember, this video is what they released early in the morning, and right now the fresh update that we're getting is that they have registered a complaint with the Election Commission against the Aam Aadmi Party, against these two leaders, which is Durgesh Pathak and Vijendra Garg, as they have tweeted in the video, who can be seen campaigning in a late night campaign. It can be seen in the video totally. Now the BJP has been claiming that it is against the MCC violation because a late night campaigning just a night actually ahead of the polling is not allowed. In the same regard, they have went ahead and complained to the EC. Now remember, all of this is very crucial because it's coming on the day of polling. Whether it's going to affect the mind of the voters or whether it is going to turn the tables is yet to be seen, but we cannot say anything for sure because it is all about perception. Remember, as I was saying in the morning, this MCD polls right now is a battle of prestige, but it is also a battle of perception, where the BJP and the Aam Aadmi Party has been making claims and counter claims regarding various charges on each other, but nothing has been made sure so far. Nothing has been come out in a true sense so far. It is all about allegations and counter allegations. But the main point here, which I want to point out, is that how will the voters react to it? Because remember, the voters here in the national capital, when we talk to them, have been focusing on the issue of cleanliness, on the issue of air quality, because these are the two major problems that the locals here have been facing. Suesha. Right. Tanisha, let me also take this to Piyush. I believe he's back with us. And Piyush, this is what is being claimed by the BJP. And once again, a video that has been put out where they say that they can completely back their claims of how Aam Aadmi Party leaders were caught on camera distributing cash and distributing liquor. And they've also filed a complaint on this with the Election Commission, putting out a tweet also to this effect.
Well, absolutely, that's the confirmation coming in from BJP that they are not only approaching Election Commission but also seeking legal action into this video which has surfaced from Vasant Kunj of Delhi. Remember that Durgesh Pathak along with the candidate of Aam Aadmi Party, they are seen in that particular video where they are campaigning. Even after the campaigning time comes to an end, BJP is now saying that that it's a complete violation of elections norms, election campaigning norms, and that is why they are approaching to higher authorities. They have approached to the Election Commission and also seeking legal action into the entire controversy. So far, Aam Aadmi Party has not defended, but that's the old tactic of Aam Aadmi Party since beginning. Whenever we have seen BJP coming out with any kind of video or allegation on Aam Aadmi Party, they have always kept mum. They have just said that people of Delhi will be answering to all these videos, and they have always termed these allegations as fake, and that is what we are seeing again taking place, where Aam Aadmi Party not coming out and speaking anything on this video controversy which has once again hit them. Remember that during the course of campaigning, BJP has released not one sting but multiple stings. Videos of Satyendra Jain had also surfaced. Also, many allegations of corruption were levelled by BJP on Aam Aadmi Party, but we have seen Aam Aadmi Party keeping mum on all these allegations. Suesha. Yes. To which repeatedly the Aam Aadmi Party has responded saying that they will not pay attention to such controversies and they are focusing on development. So that is what their retort really has been. But Piyush, it is the voter who is going to decide the fate of these 1349 candidates and the parties by and large. It is the voter who is very, very clear about the issues that whosoever comes into power must address, and they vociferously put it out. Let's once again listen into all the voices that have been coming in since this morning of the kind of Delhi that Delhiites are looking at. तो अपना वोट MCD में यही सोच समझ कर दें कि आज आप दिल्ली को साफ सुथरा बनाने के लिए वोट कर रहे हैं, कूड़ा मुक्त दिल्ली बनाने के लिए वोट कर रहे हैं, कूड़े के पहाड़ हटाने के लिए वोट कर रहे हैं, MCD में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए वोट कर रहे हैं, MCD को जो उसका मेन काम है दिल्ली को स्वच्छ साफ सुंदर बनाना, उसके लिए वोट कर रहे हैं। मेरी सब वोटर्स से यही अपील है, आपके वोट के ज़रिए हम मिलकर दिल्ली को स्वच्छ बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे। MCD का मेन काम है साफ सफाई करना, MCD का मेन काम है पार्कों को सुंदर बनाना, MCD का मेन काम है अंदर की गलियाँ, जो कॉलोनियों के अंदर की गलियाँ हैं, फ्लैट्स के अंदर की गलियाँ हैं, उन सड़कों को ठीक रखना। भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 साल में इन सब मुद्दों पे फेल रही है। कूड़ा साफ़ नहीं हुआ, गलियां साफ़ नहीं हुई, गलियां बनी नहीं, कूड़े के पहाड़ खड़े हो गए दिल्ली में, मार्केट से उगाही चलती रहती है, तो दुकानदार मार्केट की उगाही से दुखी है जो MCD में होती है। नहीं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से विश्वास में है और हमारा एक ही एजेंडा है कि किस तरीके से दिल्ली ग्रीन और सस्टेनेबल बने, दिल्ली में पार्किंग की समस्या का निराकरण हो, दिल्ली पूरी तरह से पार्क अच्छे हो जाएं और नागरिकों को बेहतर सुविधा मिल सके। यही हमारा एजेंडा है, विकास, विकास और केवल विकास। केवल प्रचार से दिल्ली नहीं बन सकती है, दिल्ली में गुड गवर्नेंस की जरूरत है और जो विजन आत्मनिर्भर भारत का मोदी जी का है उसको लेकर ही निगम आगे बढ़ेगी। देखिए, ये चुनाव नगर निगम का, गलियों का, नालियों का, सफाई का, कूड़े के ढेरों का, पार्कों का, इन सब चीज़ों का चुनाव है। तो मेरा सभी लोगों से, सभी मतदाताओं से यही अपील है कि इस चुनाव के अंदर कैंडिडेट को देखें और कैंडिडेट्स को देख कर के कौन उनका सबसे ज़्यादा काम कर सकता है उसके आधार के ऊपर वोट दें। दिल्ली के सभी मतदाताओं से अपील है कि देश हित में, दिल्ली के विकास के लिए और दिल्ली के नगर निगम को बेहतर बनाने का काम जो केंद्र सरकार ने किया है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को चुने। देखिए, आम आदमी पार्टी ने तो गोवा में, उत्तरांचल में, यूपी में हर जगह दावा किया था, वो तो गुजरात में भी दावा कर रहे हैं, मगर आप देखेंगे गुजरात में एक भी सीट वो नहीं जीतेंगे। उन्होंने आदमपुर बाई इलेक्शन में भी कहा था कि हमें 60% वोट मिल रहा है, उनको आधा % मिला, जमानत जब्त हो गई। तो ये उनकी पुरानी आदत है कि कैसे वो झूठ बोलें, कैसा झूठा सर्वे दिखाएं, कैसे लोगों को गुमराह करें। मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली के लोग ये नहीं चाहते कि दिल्ली के अंदर भ्रष्ट लोग, ऐसे लोग जो राजनीतिक मूल्यों के नाम पर सत्ता में आए
और सबसे अधिक जिन्होंने राजनीतिक मूल्यों को समाप्त भी किया है, उनको पूरी तरह से नष्ट किया है। And well, attacks and counter-attacks that are coming in from both the BJP and the Aam Aadmi Party as they go on to raise several controversies and allegations, but cutting across party lines, all the leaders asking Delhi to come out and vote in large numbers. The voters amply clear about the kind of issues that need immediate priority of the government and of the MCD, and this is what they've had to say since this morning. किन मुद्दों पे वोट करेंगे? ये विकास के मुद्दों पे करेंगे वोट। मैम, आप किन मुद्दों पे वोट करेगी? विकास के मुद्दों पर? विकास के मुद्दों पर, स्कूल की पढ़ाई लिखाई में। किन मुद्दों पे वोट करेंगे? विकास की, बेरोजगारी है, महंगाई ज़्यादा है। हाँ जी, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। यू में से कि द सिचुएशन ऑफ रोड्स, वाटर एमिनिटीज एंड इवन सैनिटरी आल्सो। मैंने ये विकास के मुद्दे पे, एक तो हमारे यहाँ पानी की बहुत प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, और दूसरा सीवर नहीं है, और सफाई नाम मात्र ही है। हफ्ते में एक दिन आए, 2 दिन आए, ना भी आए, ऐसी हो जाता सर। बस यही एक मुद्दा ही है, पानी का, सफाई का सबसे बड़ा है। नहीं है वो बताएं, आप भी यहीं रहते हैं, क्या इशू नहीं? कूड़ा नहीं, सफाई नहीं, कुछ नहीं, कोई बादल नहीं, सड़क नहीं, गड्ढा नहीं। इतनी बुरी सड़कों की हालत तो जिंदगी में कभी नहीं देखी जितनी बुरी अभी हालत हो गई है। जगह जगह कूड़ा पड़ा है, जगह जगह कूड़ा पड़ा है, गंद पड़ा है, होपलेस। बातें ज़्यादा करा लें इनसे बस। देखिए, इश्यूज तो बहुत हैं। पहली बात तो दिल्ली 20 साल पीछे चली गई है। आप ये देखिए, कोई नए फ्लाईओवर्स नहीं बने, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लोग यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा। आप बिजली अगर आप दे रहे हैं मुफ्त में, ये मुफ्त की जो स्थिति है ये होनी ही नहीं चाहिए। आपको काम करना चाहिए। कोई नए स्कूल नहीं खुले, कोई नए अस्पताल नहीं खुले। जब एक पार्टी दूसरी पार्टी से बात करती है कि नदियां साफ नहीं, तो वो बात करते हैं साहब पहाड़ साफ नहीं हुए। वो अपने सवाल का जवाब नहीं देते। और हमारे देश में सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि लोग एजुकेटेड नहीं है, अपने वोट की कीमत नहीं समझते। जब आप अपने वोट की कीमत को समझेंगे तब आपका यह देश के अंदर जब खुशहाली आएगी। अब लोगों को हम हरामखोर बना रहे हैं। आप विचार कीजिए, तो बहुत सारे आप ये देखिए, कॉन्ट्रैक्टर को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट दे दिए, पटरियाँ तो नई बन गई सिविल लाइन में, जो जरूरत नहीं थी, जिसकी आवश्यकता नहीं थी, बिल्कुल ठीक है। सड़कें ठीक नहीं हैं आज भी। मैं भी यही कहना चाहूँगी कि ये फ्री की चीज़ें बंद होनी चाहिए। आदमी को मेहनत करने दीजिए, उसको कमाने दीजिए। ये नहीं कि आप फ्री में बैठे, मिसयूज हो रहा है पैसे का और कुछ भी नहीं। आप बिजनेस के बारे में भी आप सोचिए, बिजनेस के थ्रू कितने लोगों को जॉब मिलता है, कितने। अब बिजनेस जब से ठप हुआ, बेरोजगारी, क्राइम, अब बेरोजगारी होगी तो क्राइम भी बढ़ेगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए ना कि भाई फ्री में, अरे फ्री में कहाँ से आएगा? मीडियम क्लास ही तो लोगे, मीडियम क्लास कहाँ जाएगी? मीडियम क्लास कहाँ जाएगी? फ्री का कोई अपने घर से तो दे नहीं रहा, हम लोगों की कमाई दे रहा है ना। एक व्यक्ति तो फिर एक मकान में 6-6 मीटर लगाए हुए हैं, तो 6-6 मीटर एक मकान में लगाए हुए हैं, और वो बिजली फ्री ले रहे हैं। और हमारा 500-600 यूनिट का बिल 6000, 7000, 8000 का आता है। वो कोई तरीका नहीं है ना। फ्री में क्या वो फालतू चलता रहता है, यूटिलाइज भी कुछ नहीं होता। मैं जाके देखती हूँ ना घरों में, फ्री में चल रहा है, ऐसे बैठे हैं लोग, हरामखोरी कर रहे हैं। आप मेहनत करोगे, बिजली का पे करोगे तो आप मेहनत करोगे, फ्री में मिलेगा तो आप क्यों मेहनत करोगे? इसलिए ये सब कुछ बंद होना चाहिए। बिजनेस को बढ़ावा देना चाहिए कि लोगों को जॉब मिले, क्राइम कम हो। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि वादा कर लिया और आप पूरा नहीं करो, वादा किया तो आप पूरा करो। और जनता को इतना हक होना चाहिए, जो वादा खिलाफी करता है उसको इमीडिएट हटा दिया जाए। Our reporters on the ground continue to get you all the updates amid the controversies on polling day and voter turnout. Once again, let me remind you, till 10:30 a.m. this morning has been reported at 9%. My colleagues Tanisha and Piyush are with us on the broadcast. Piyush, I want to come to you. Where are you standing right now, and is the voter turnout improving post noon also? We just saw how BJP has leveled several controversies now against the Aam Aadmi Party. Manoj Tiwari saying voters' names have been deleted. Shahzad Poonawala posting a video saying that AAP is indulging in illegal campaigning. तो
So yes, Yesha, I'm standing at ward number 70B at Chhatarpur constituency, and over here the voter turnout is very brisk. Now let me just tell you that this is in the outer Delhi area, and normally in the outer Delhi area you see a lot of brisk voter turnout as compared to the urban areas, and as compared to over here also you are seeing that there are large number of voters who are turning out since morning. Now having said that, we've also had a word with them, and for them the issues are aplenty, in which corruption is also the main issue. Having said that, you also said that this MCD election has been full of controversy, and till the D-Day, the controversy continues. The latest being BJP blaming that because of several voters' names being deleted, there is some kind of indiscrepancy. So yes, from the beginning to the end, you are seeing a lot of controversy, and now it is going to be interesting to see that what first is going to be the voter turnout. Voter turnout normally in the MCD polls is hovers around 50 to 55%. So it is going to be interesting to see first of all that what is going to be the voter turnout. And on December 7th, we are going to be seeing that what issues actually have the voters really voted for. Is it the issue of corruption? Is it the issue of delivery? Or is it the issue of air pollution, which is again one of the major problems which the Delhiites have been facing for long? Back to this. Oh yes, Piyush, and Tanisha, I also want to bring you in because as far as Delhiites are concerned, they are very clear about the kind of Delhi they want to build in the next 5 years. And like you said, the rampant issues of garbage management, of cleanliness, of clean air to breathe, these are the very basics that every person has the right to. And this is exactly what Delhiites are complaining, that whosoever comes into power must address these issues on priority. But despite that, a low voter turnout that we have been seeing since this morning comparatively, hoping that it will improve now post noon. Three-party, the triangular battle that's there between the Aam Aadmi Party, the BJP and the Congress have also been fighting on the ground levels, because MCD is an election which is supposed to be on the very, very ground level issues, be it cleanliness, be it maintaining of the gardens, be it the garbage issue. So all of these are the ground level problems that the three parties have been fighting for. Now remember, talking about the voter turnout here, as you said, it had been quite low early in the morning. That was around 10:30 a.m. It was recorded around 9%. But yes, we are hoping that these numbers will shoot up once we get a fresh revised numbers. And it is expected. Remember, in 2017, it was around 53% is what the polling percentage was. Now, what we're expecting the numbers to be around that, maybe also to cross 53%. Suesha. All right, Tanisha and Piyush, please stay put, and even to my other colleagues, tracking every development on the ground very closely. 7 December is when we will know who Delhi has voted in favor of. For the moment, we step into a short break. As Gujarat goes to polls on the 1st of December, 89 of 182 seats will vote. Where high voltage political battle has broken out in the state of Gujarat since the bipolarity of the state. Will the BJP score a record victory in Gujarat? Is the Aam Aadmi Party even a factor? Politics has been challenged for the first time. Watch the fastest updates only on India's election headquarters on Republic TV. आज के दिन जब दिल में दर्द है, अपने
जवानों की शहादत पर उसी के साथ साथ जब ये नारे गूंजते हैं तो एक सुकून है, एक हिम्मत है। मैं इस वक्त जाफराबाद में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर फोर्स डिप्लॉयड है। कोशिश ये है पुलिस कर्मियों की, अर्धसैनिक बलों की कि यहाँ पर किसी तरह का कोई दंगा ना भड़क पाए। तो आपको लगातार बता रहे हैं कि किसान कानून वापस हुए हैं और किसान कानून वापस होने के बाद सीधे किसानों के बीच पहुंची हूं और किसानों से ही बात कर रही हूं। शाहीन बाग पर बुलडोजर चलेगा। शाहीन बाग को लेकर जो राजनीति गरमाई रही वो और ज्यादा गरमाएगी, ये बिल्कुल तय है। What is it that is unique about your father's story to build the largest logistics company? 99% in the movie, it is a real-time story what has happened with us in our life. That's what been captured. Why should a young person watch this film? All the youngsters out there, they want to be an entrepreneur just in overnight. मतलब वो shortcut देख रहे हैं. Any business for that matter or any work for that matter और success आपको overnight नहीं आती. This is that film. Pakistan that would boast to the Chinese and tell them that, we can guarantee you absolute peace in Afghanistan, build the China-Pakistan economic corridor right through the heart of Afghanistan. But in the last 1 year, more than 300 Pakistani soldiers and policemen have been killed by various factions of the Afghan Taliban and also the fearsome terrorist organization, the Tehreek-e-Taliban Pakistan. Today, Pakistan is suing for peace. A high voltage battle which will decide the nation's political track. Welcome back, viewers. Straight away cutting across to the visuals that we are getting in of Gautam Gambhir, in fact, going in to cast his vote as well. And of course, we have been tracking the rolling coverage of the MCD polls as we have seen the kind of political battle in the MCD polls as well. And of course, these are the latest visuals of Gautam Gambhir as well. Our colleagues, our reporters are on the ground getting you minute-to-minute update as far as the MCD polls are concerned. Madhurima, my colleague, also joins me over the broadcast. Madhurima, tell us more about these visuals that we are seeing right now of Gautam Gambhir also going in to cast his vote. Tell us about what's really happening on the ground, where you are right now, what are some of the issues that the voters are talking to you about, and also speak to us about the kind of voter turnout that we are seeing post-noon. Well, Priyanka, if we talk about this particular station, that is the old Rajinder Nagar from where I'm reporting. Gautam Gambhir has just arrived over here. He lives around just 100 meters away from this particular polling station, and he's just arrived here to cast his vote over here. He's the member of parliamentarian from one of the seats in the national capital, and his constituency being the Rajinder Nagar constituency, he has come here to vote. Now, we've been speaking to the locals over here since morning, and their basic demands are the renovation of the infrastructure, roads, garbage, maintenance. लोगों तक पहुंचाया जाए, घर घर तक, इस सब की तैयारियों पर चर्चा हुई। All right, once again tracking for you the latest visuals as far as the MCD polls are concerned. And the kind of political battle that has really broken out between the Aam Aadmi Party and the BJP, the kind of allegations also that are now being levelled by the BJP as well, where we had just heard Manoj Tiwari also claiming that voters' names had been deleted and that there was a conspiracy at play by the Aam Aadmi Party as well. So all of those allegations as the MCD polls are underway. And let me once again go across to my colleague Madhurima, who had been speaking to us about what's really happening on the ground as far as the MCD polls are concerned. Madhurima, over to you. Please continue what you were telling us.
Well, yes, Priyanka, as far as the issues that concerns the local here in this particular constituency in the West Delhi, they are complaining about the absence of their representatives. This is what they've highlighted, that in the past 15 years, multiple representatives have come, but none have come to their rescue when they really wanted. And this time they're going to vote for a change and for a candidate that would listen to their votes and help them solve all those issues. Right behind me is the polling station, and Gautam Gambhir has just arrived here to cast his vote. Now, as far as this particular constituency is concerned, AAP MLA Durgesh Pathak also came here to exercise his vote. Then we saw Jagdish Titler over here coming to exercise his right to vote, and now we have Gautam Gambhir. Now this is quite a high profile constituency because this entire area is a posh area, but if we talk about the infrastructures, there are major loopholes, and that is what the residents of this particular area are highlighting. Now we'll have to wait and watch and see that whether the BJP will be able to retain their power that they have had for past 3 terms, because the Aam Aadmi Party is a very, very strong contender, and with the kind of fame Mr. Arvind Kejriwal has been able to siphon in the past year is something noteworthy, and which is why we've seen the BJP leaving no stone unturned. They even brought down their biggest starlets on the roads of the national capital to campaign for them, from Himanta Biswa Sarma to JP Nadda to multiple union ministers to chief ministers. They all came down onto the roads of the national capital to campaign for Delhi. Delhi MCD are high stakes elections, as it is the matter of prestige. Gautam Gambhir now coming out. And we'll speak to him. We are moving towards Mr. Gambhir, who is going to address the media over here, and we'll talk to him. मीडिया यहाँ पर खड़ी है, आप खुद जाके दिखाइए दिल्ली को, जनता को, कि किस तरीके से गाजीपुर लैंडफिल में काम हो रहा है और किस तरीके से गाजीपुर का पहाड़ नीचे आया है। तो मेरा मानना है कि ट्वीट करने से कुछ नहीं होगा, सच्चाई दिखाने से और सच्चाई बोलने से होगा। तो दिल्ली की जनता के लिए सबसे झूठा प्रचार आता था कि गौतम जी कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं इस बार कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं वाले को वोट ना दे, मतलब कटाक्ष किया एक तरीके से बीजेपी। अगर वो ये कहते हैं कि काम करने वाले को वोट दे, तो आप अपने माध्यम से खुद आप सब जानते हैं कि सुबह किस तरीके से डोर टू डोर कलेक्शन होती है। ये तो कहते हैं कि ये कूड़े पे और ये जो गलियां गंदी हैं इसके ऊपर ये इलेक्शन है, तो आप सब जानते हैं कि किस तरीके से रोज सुबह जब गाड़ी आती है कूड़ा उठाने के लिए, तो वो भी एमसीडी ने किया। डेंगू से लड़ाई भी एमसीडी ने लड़ी है। उसके बाद अगर आप देखिए सारे तीनों लैंडफिल में किस तरीके से काम चल रहा है, वो भी एमसीडी कर रही है। कितनी सीटें बीजेपी जीत रही है, लेकिन मोदी के कितनी सीटें क्या जरूरत थी नगर निगम के चुनाव में गौतम गंभीर? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे पार्टी के सबसे बड़े नेता है, तो इसमें मोदी जी को लाने की क्या बात है। केजरीवाल जी तो हर जगह अपनी शक्ल दिखाते फिरते हैं। दिल्ली में जितना केजरीवाल जी देखते हैं उतना मुझे नहीं लगता प्रधानमंत्री जी भी। कितनी सीटें सर उम्मीद कर रहे हैं? सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए कि आपको इलेक्शन में कितनी सीटें उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, मैं कोई दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरह कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मैं कोई पर्ची पे में मोदी जी को लाने की क्या बात है। केजरीवाल जी तो हर जगह अपनी शक्ल दिखाते फिरते हैं। दिल्ली में जितना केजरीवाल जी देखते हैं उतना मुझे नहीं लगता प्रधानमंत्री जी भी। कितनी सीटें सर उम्मीद कर रहे हैं? सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए कि आपको इलेक्शन में कितनी सीटें उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, मैं कोई दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरह कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मैं कोई पर्ची पे लिख के नहीं दे सकता आप लोगों को। मैं सच्चाई बता सकता हूँ, सच्चाई से लड़ाई लड़ सकते हैं, और यही मेरी पार्टी और ये मैं करने की कोशिश कर सकता हूँ। सच्चाई ये है कि हमने पिछले 15 साल में जनरली दिल्ली की जनता के लिए बहुत काम किए। झूठे प्रचार नहीं करे। डेंगू से लड़ाई एमसीडी लड़ती है, और उसका भी श्रेय दिल्ली के मुख्यमंत्री। लेकिन आम आदमी पार्टी सफाई का मुद्दा बना 8 साल से एक बारी नहीं गए लैंडफिल, और कहते हैं कि वो लैंडफिल खत्म करें। पूरा पहाड़ दिखा रहे हैं, वीडियो एडिटर कह रही है, लोग वीडियो एडिटर बन गए हैं। ये तो नहीं दिखाया कि किस तरीके से हमने ढलाव घर को 4 जन रसोई में बदला। ये तो नहीं दिखाया कि एक ढलाव घर को हमने किस तरीके से लाइब्रेरी में बदला। कितने स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल खोले, ये सवाल तो पूछिए उनसे। साफ सफाई इसके बारे में भी इसके बारे में भी ट्वीट करने की कोशिश करें। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ, आप अपने माध्यम से दिखाइए ना क्या सच्चाई है।
Gautam Gambhir still making those attacks at the Aam Aadmi Party as well, claiming that this is the Aam Aadmi Party who is going to be losing in the MCD elections, and of course talking about making an attack on Arvind Kejriwal as well. Our correspondents and our team continues to be on the ground. My colleague Shivangi and Madhurima also continue to be with us. Shivangi, it's over to you. Tell us what's really happening around you, where you are. What is the voter turnout looking like in the backdrop of these allegations and counter allegations that are continuing even right now as the MCD polls are underway, Shivangi? All right. Yes, Priyanka. Very good afternoon to all our viewers. We are getting all the coverage here on Republic TV. Every vantage point, all our reporters are in different polling booths right now. I'm outside the Pink polling station. This is a very special polling station. It's called Pink polling station because it's completely manned by women and women staff, female staff as well. Everything from security all the way to all the people who are registering the voters as well. Everything is done by women. So it's a very special station. And while speaking to people who are coming out, they are saying they're very happy because they've not seen such a welcoming polling station before. From here itself, Manjinder Singh Sirsa had come. We spoke to him exclusively on Republic TV, and he said that this is a very, in fact, Sirsa was very hopeful that BJP will come back to power. But before I talk about what our political leaders are saying, we see voters who are very enthusiastic. They just come out. You have been inked. आप ink हुए हैं अभी और आप अभी you have gone to the Pink polling station. बहुत special polling station है यहाँ का. How do you feel, especially attending this polling station? Because मुझे voters ने बोला है कि ये बहुत special polling station है. We don't have to wait over here. Okay. And वेट नहीं, ये बहुत अच्छा स्पेशली लेडीज़ के लिए पोलिंग स्टेशन बनाया है, बहुत खूबसूरत बनाया गया है. और ये चुनाव सच्चाई और देश का चुनाव है. केजरीवाल जैसे लोमड़ी और मक्कार से बचने का चुनाव. Well, yeah, this would we would like to talk about issues right now. Issues के बारे में बात करते हैं. Issues के बारे में बात करते हैं because अभी दिल्ली के जो voters हैं वो issues पे concentrate कर रहे हैं. Issues के बारे में बात करिए, फिर हम of course will talk to the other voters as well. Issues MCD में तो इतने issues नहीं है क्योंकि MCD बहुत अच्छी चल रही थी. 100% में उनको 90% हमने दे सकते हैं. बाकी अगर हम ये MCD दोबारा रिपीट करती है तो और भी बहुत अच्छा काम होगा क्योंकि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, वो बहुत सक्षम नेता हैं, प्राउड ऑफ वर्ल्ड हैं और उनके नेतृत्व में MCD चलेगी. परिसीमन के बाद MCD का फंडिंग डायरेक्ट कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट से होगा. तो भाजपा की MCD आने से दो फायदे होंगे. डबल इंजन की सरकार होगी जिसके कारण क्या है, फंड में जो भ्रष्टाचार वगैरह के कोई भी उसमें चांसेस स्कोप नहीं होगा क्योंकि वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट उसको हैंडल फंडिंग करेगी. और so, पूरी मॉनिटरिंग में रहेगा ये. Alright, अच्छा काम होगा. Alright, great. Thank you so much. And lot of enthusiastic voters coming. In fact, we have seen senior citizens also come. You have come, आप voting करने के लिए आए हैं और ये this is an inspiration, viewers, you know, that senior citizens are coming to vote even if the circumstances are difficult, but they're still coming to vote on a cold Delhi morning and cold Delhi afternoon. आप अभी vote करने आए हैं और क्या मुद्दे हैं? What are the issues that you want to be addressed this time around? Development. Yeah. All right. So development is a big issue. All right. And also one more thing before you go, just one word for all the youth. अभी टाइम है यूथ का आने का, वोट करने का. हम भी रिपब्लिक टीवी से बोल रहे हैं कि प्लीज द यूथ ऑफ अ नेशन प्लीज कम आउट एंड वोट राइट नाउ. यूथ ऑफ नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली, प्लीज कम आउट एंड वोट. We are telling this again and again in Republic TV. Even when we had gone to Gujarat, we want our youth to come out. Now BJP is doing well. Right. What is the message you have for the youth? Please tell them to come out and vote. This is very important. 18% turnout हुआ है अभी. We want more turnout for these MCD elections. Everybody should come out and vote. आपका मैसेज क्या है यूथ के लिए? किसके लिए मैसेज? यूथ के लिए मैसेज क्या है? यूथ को बोलिए कि बाहर आने के लिए, वोट करने के लिए, बिकॉज बहुत सारे सीनियर सिटीजन आ रहे हैं, वोट कर रहे हैं, हमारा डेमोक्रेटिक राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं. हाँ बिल्कुल, अपना डेमोक्रेटिक राइट इस्तेमाल करें. यूथ शुड कम आउट. राइट.
All right. Okay. So thank you so much. So voters coming out right now as well, and of course we have many reactions as well. Madhurima is also with us at this point of time. Madhurima, I want to come back to you. You are speaking to many political leaders who are coming there at the polling station, and you are getting many reactions from them. I would like to ask you right now that what is the sense you are getting from where you are from the ground, and different political leaders are saying different things as well. Aam Aadmi Party is saying that we will try to get more votes. On the other hand, BJP very confident, and since they have been winning elections for so long, MCD elections, the BJP, and like I was saying, Manjinder Singh Sirsa also saying that they will come back to power once again. Madhurima, it's over to you. What is happening where you are right now in the polling station? Well, Shivangi, as far as we talk about this polling station, the people have very clear agenda in their minds that they want better infrastructure and a representative that could be present in front of them and address their woes. We just heard Gautam Gambhir. They are very confident of winning the MCD for the fourth term. However, we also heard Durgesh Pathak, who said that they are going to dethrone the BJP. Now, stay tuned to Republic TV. We'll be right back after a very short break, and to keep you ahead of all the updates regarding the very high stakes MCD polls in the national capital. A high voltage battle which will decide the nation's political trajectory. Who will break their records and which faces will be the winners? 89 out of the 182 seats go to polls. Stay tuned to India's election news headquarters as Gujarat goes to polls. Live coverage minute by minute all day today on Republic. The mandate from the two states. It's been a high-stakes battle for the Prime Minister. Who will win, Gujarat and Himachal? While the opposition was missing in action, the people have given the real mandate. Will the BJP retain both the states? Is the Aam Aadmi Party even a factor? Get the earliest peep into the verdict with Republic PMark exit poll, December the 5th at 6 p.m. Waterlogging has increased in the last 3 to 4 hours. Elphinstone station is shut, which means all those people who are hoping to go back home. When you look at that crowd, what's the message that Houston is sending out? There is also anticipation of a few announcements being made. What are your expectations when they both come up on stage? Are you expecting something big? I'm at the Jama Masjid in Bandra, and there are thousands of people behind me. Why they are protesting, but the situation is pretty tense. Thousands of people that you see. 4 दिन की रिमांड है, 4 दिन की रिमांड. कुछ कहना चाहते हैं आप? पत्राचौल स्कैम, मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज के बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप? As Gujarat goes to polls on the 1st of December, 89 of 182 seats will vote. Where high voltage political battle has broken out in the state of Gujarat since the bipolarity of the state. Will the BJP score a record victory in Gujarat? Is the Aam Aadmi Party even a factor? Politics has been challenged for the first time. Watch the fastest updates only on India's election headquarters on Republic TV. आज के दिन जब दिल में दर्द है अपने जवानों की शहादत पर, उसी के साथ साथ जब ये नारे गूंजते हैं तो एक सुकून है, एक हिम्मत है। मैं इस वक्त जाफराबाद में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर फोर्स डिप्लॉयड है। कोशिश ये है पुलिस कर्मियों की, अर्धसैनिक बलों की कि यहाँ पर किसी तरह का कोई दंगा ना भड़क पाए। Alright viewers, we're getting some breaking news coming in at this point of time. Another Pakistan drone has been shot down and seized. Pakistani drone with 3 kilogram heroin recovered by BSF, recovered during search in area of Taran of Punjab. One more case we are seeing of Pakistani drones being shot down. Our forces have acted fast once again, viewers. This is not the first time that we're seeing Pakistani drones being sent across the border. Many Pakistani drones have been shot down by our forces, but right now we're getting news that another Pakistan drone has been shot down and seized. And what is very, very concerning is that 3 kilograms of heroin was recovered by the BSF as well, recovered during the search operations in Taran in Punjab. Amandeep is
with us right now. Amandeep, extremely concerning that our forces again had to act fast and this time shoot down a Pakistani drone once again, Amandeep. Well, absolutely. And this drone was shot down in Tarn sector when he crossed the international border and came to the Indian territory and tried to drop this drugs consignment inside the Indian territory. And all of a sudden, BSF have shot down this drone nearby the Tarn and recovered the heroin also. That is 3 kg heroin from the international border. And in fact, this drone was shot down late night. Well, Shivangi, the point is that last night 3 drones have been spotted in the different sectors that crossed the international border and came into the Indian side. And in fact, those drones were spotted in Amritsar, Firozpur and Taran. And in fact, BSF have opened the fire last night to shot down these drones, and one has been recovered, though search operation is still underway in Amritsar as well as in the Firozpur sector to find out other. पार्टी को लाएंगे, ना कि काम रोकने वाली पार्टी को। विरोधियों का कहना है कि कूड़े के करप्शन के कूड़े खड़े हो गए हैं। देखिए, उनकी समस्या क्या है बेचारों की। 15 साल से उनकी सरकार है एमसीडी में। अगर काम किया होता तो काम पे वोट मांगते। जब अरविंद केजरीवाल जी 2020 में वोट मांगने गए थे तो उन्होंने कहा था कि अगर मैंने 5 साल काम किया है तो मुझे वोट दो, वरना मुझे वोट मत दो। पर क्या इतनी हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी में कि वो कहें कि अगर हमने 15 साल में दिल्ली साफ करी है तो हमें वोट दो, वरना हमें वोट मत दो। एक और आरोप आया है, मनोज तिवारी जी का कहना है और कांग्रेस से भी ये कहना है कि वोटर लिस्ट से नाम काटे गए हैं, जिससे कि आम आदमी पार्टी हार का डर लग रहा है, इसलिए नाम काटवा रही है। देखिए, मनोज तिवारी जी से मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारी देश की सबसे एक रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशंस में से है, तो शायद उस पर सवाल उठाना, वो भी इलेक्शंस के दौरान, ठीक नहीं है। हमारे कैंडिडेट शिवानी है। कैंडिडेट का बाइट। All right, so we just saw Aam Aadmi Party's Atishi speaking there, where she has said that Aam Aadmi Party will be making a headway and Aam Aadmi Party will be giving a reply to the BJP. Now, we are seeing this war of words really play out between the BJP and the Aam Aadmi Party much before even the voting had started. The campaign time itself, we had seen a war of words play out there between both the parties. Remember, Aam Aadmi Party on a back foot right now, especially with the corruption allegations against it at this point of time. All right, let's have a look at all the reactions we're getting. In fact, we are speaking to political leaders and also the people and the voters to get a sense of what is happening today and what can be expected later on when the results come in. तो अपना वोट एमसीडी में यही सोच समझ कर दें कि आज आप दिल्ली को साफ सुथरा बनाने के लिए वोट कर रहे हैं, कूड़ा मुक्त दिल्ली बनाने के लिए वोट कर रहे हैं, कूड़े के पहाड़ हटाने के लिए वोट कर रहे हैं, एमसीडी में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए वोट कर रहे हैं। एमसीडी को जो उसका मेन काम है दिल्ली को स्वच्छ साफ सुंदर बनाना, उसके लिए वोट कर रहे हैं। मेरी सब वोटर्स से यही अपील है, आपके वोट के ज़रिए हम मिलकर दिल्ली को स्वच्छ बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे। एमसीडी का मेन काम है साफ सफाई करना, एमसीडी का मेन काम है पार्कों को सुंदर बनाना, एमसीडी का मेन काम है अंदर की गलियां, जो कॉलोनियों के अंदर की गलियां हैं, फ्लैट्स के अंदर की गलियां हैं, उन सड़कों को ठीक रखना। भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 साल में इन सब मुद्दों पे फेल रही है। कूड़ा साफ़ नहीं हुआ, गलियां साफ़ नहीं हुई, गलियां बनी नहीं, कूड़े के पहाड़ खड़े हो गए दिल्ली में, मार्केट से उगाही चलती रहती है, तो दुकानदार मार्केट की उगाही से दुखी हैं जो एमसीडी में होती है। नहीं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से विश्वास में है और हमारा एक ही एजेंडा है कि किस तरीके से दिल्ली ग्रीन और सस्टेनेबल बने, दिल्ली में पार्किंग की समस्या का निराकरण हो, दिल्ली पूरी तरह से पार्क अच्छे हो जाएं और नागरिकों को बेहतर सुविधा मिल सके। यही हमारा एजेंडा है, विकास, विकास और केवल विकास। केवल प्रचार से दिल्ली नहीं बन सकती है, दिल्ली में गुड गवर्नेंस की ज़रूरत है और जो विज़न आत्मनिर्भर भारत का मोदी जी का है, उसको लेकर ही निगम आगे बढ़ेगी। देखिए, ये चुनाव नगर निगम का, गलियों का, नालियों का, सफाई का, कूड़े के ढेरों का, पार्कों का, इन सब चीज़ों का चुनाव है। तो मेरा सभी लोगों से, सभी मतदाताओं से यही अपील है कि इस चुनाव के अंदर कैंडिडेट को देखें,
और कैंडिडेट्स को देख करके कौन उनका सबसे ज़्यादा काम कर सकता है उसके आधार के ऊपर वोट दें। दिल्ली के सभी मतदाताओं से अपील है कि देश हित में, दिल्ली के विकास के लिए और दिल्ली के नगर निगम को बेहतर बनाने का काम जो केंद्र सरकार ने किया है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को चुने। देखिए, आम आदमी पार्टी ने तो गोवा में, उत्तरांचल में, यूपी में हर जगह दावा किया था। वो तो गुजरात में भी दावा कर रहे हैं, मगर आप देखेंगे गुजरात में एक भी सीट वो नहीं जीतेंगे। उन्होंने आदमपुर बाई इलेक्शन में भी कहा था कि हमें 60% वोट मिल रहा है, उनको आधा प्रतिशत मिला, जमानत जब्त हो गई। तो ये उनकी पुरानी आदत है कि कैसे वो झूठ बोलें, कैसा झूठा सर्वे दिखाएं, कैसे लोगों को गुमराह करें। मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली के लोग ये नहीं चाहते कि दिल्ली के अंदर भ्रष्ट लोग, ऐसे लोग जो राजनीतिक मूल्यों के नाम पर सत्ता में आए और सबसे अधिक जिन्होंने राजनीतिक मूल्यों को समाप्त भी किया है, उनको पूरी तरह से नष्ट किया है। The high-stake MCD polls are underway. The polling will continue till 5:30, and in just matter of 2 days, it will be clear that has the BJP been able to gain back the throne of the MCD, or will the Aam Aadmi Party be victorious this time? Stay tuned to Republic TV. We'll be right back after a very short break to keep you ahead of all the updates in this high-stake battles of MCD in the national capital. आज के दिन जब दिल में दर्द है अपने जवानों की शहादत पर, उसी के साथ साथ जब ये नारे गूंजते हैं तो एक सुकून है, एक हिम्मत है। मैं इस वक्त जाफराबाद में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर फोर्स डिप्लॉयड है। कोशिश ये है पुलिस कर्मियों की, अर्धसैनिक बलों की कि यहाँ पर किसी तरह का कोई दंगा ना भड़क पाए। तो आपको लगातार बता रहे हैं कि किसान कानून वापस हुए हैं और किसान कानून वापस होने के बाद सीधे किसानों के बीच पहुंची हूं और किसानों से ही बात कर रही हूं। शाहीन बाग पर बुलडोजर चलेगा। शाहीन बाग को लेकर जो राजनीति गरमाई रही वो और ज्यादा गरमाएगी, ये बिल्कुल तय है। What is it that is unique about your father's story to build the largest logistics company? 99% in the movie, it is a real-time story what has happened with us in our life. That's what been captured. Why should a young person watch this film? All the youngsters out there, they want to be an entrepreneur just in overnight. मतलब वो shortcut देख रहे हैं. Any business for that matter or any work for that matter और success आपको overnight नहीं आती. This is that film. Pakistan that would boast to the Chinese and tell them that, we can guarantee you absolute peace in Afghanistan, build the China-Pakistan economic corridor right through the heart of Afghanistan. But in the last 1 year, more than 300 Pakistani soldiers and policemen have been killed by various factions of the Afghan Taliban and also the fearsome terrorist organization, the Tehreek-e-Taliban Pakistan. Today, Pakistan is suing for peace. A high-voltage battle which will decide the nation's political trajectory. Who will break their records and which faces will be the winners? 89 out of the 182 seats go to polls. Stay tuned to India's election news headquarters as Gujarat goes to polls. Live coverage, minute by minute, all day today on Republic. The mandate from the two states. It's been a high-stakes battle for the Prime Minister. Who will win Gujarat and Himachal? While the opposition was missing in action, the people have given the real mandate. Will the BJP retain both? Viewers, a
breaking news coming in from Bihar right now, where a leader from Tejasvi Yadav's party has made a controversial comment. RJD leader has said that liquor is like God in Bihar. I repeat, he has made a comment which says, liquor is like God in Bihar. It's not visible anywhere, but is available everywhere. That is the comment which has come in from a leader from Tejasvi Yadav's party. And RJD leader has said that alcohol is like God in Bihar, which is nowhere to be seen, but found everywhere. This is the breaking update. We're getting a statement coming in from RJD leader. When questioned right now on spurious liquor in Vaishali, the deaths which happened, he said that apart from alcohol, people also are dying, but someone's life or death is not a big deal. That's a statement which has come in. Let's play out that sound bite by the RJD leader. लोग मर रहे हैं और दूसरे बीमारी से, दूसरे दुर्घटना से, दूसरे से तो मरना जीना तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन शराबबंदी के ये मुद्दा बिहार के चुनाव का नहीं हो सकता है। बिहार का चुनाव जो बिहार के 14 करोड़ जनता का जो मुद्दा है वह है महंगाई। आज 200 रुपये किराया कड़वा तेल खरीदता है, 200 रुपये से ऊपर वह लोगों को खटकता है कि महंगाई जिस तरह गति से बढ़ रहा है, बेरोजगारी खटकता है, ये संविधान की जो धज्जियाँ उड़ाई जा रही है वो लोगों को चलता है। तो इन सब मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। The mandate from the two states. It's been a high-stakes battle for the Prime Minister. Who will win, Gujarat and Himachal? While the opposition was missing in action, the people have given the real mandate. Will the BJP retain both the states? Is the Aam Aadmi Party even a factor? Get the earliest peep into the verdict with Republic PMark exit poll, December the 5th at 6 p.m. Waterlogging has increased in the last 3 to 4 hours. Elphinstone station is shut, which means all those people who are hoping to go back home. When you look at that crowd, what's the message that Houston is sending out? There is also anticipation of a few announcements being made. What are your expectations when they both come up on stage? Are you expecting something big? I'm at the Jama Masjid in Bandra and there are thousands of people behind me. Why they are protesting, but the situation is pretty tense. Thousands of people that you see. 4 दिन की रिमांड है, 4 दिन की रिमांड। कुछ कहना चाहते हैं आप? पत्राचौल स्कैम, मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज के बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप? As Gujarat goes to polls on the 1st of December, 89 of 182 seats will vote. Where high voltage political battle has broken out in the state of Gujarat since the bipolarity of the state. Will the BJP score a record victory in Gujarat? Is the Aam Aadmi Party even a factor? Politics has been challenged for the first time. Watch the fastest updates only on India's election headquarters. Top headlines right now. It's a big battle in the national capital as Delhi goes to polls for MCD elections. A high-stake fight and a litmus test as Aam Aadmi Party and BJP fight it out amid the bitter tussle and series of controversies. Political slugfest on national capital as BJP fires fresh video of Aam Aadmi Party alleges violation of guidelines. Bias Sharmila claims no police permission for Padyatra despite High Court nod. It's a big political face-off in Telangana. As India marks Navy Day, mega celebrations in Visakhapatnam today.
Viewers, we are live and breaking right now, and today is a very, very special day. It's polling day, MCD elections today, and I'm outside the Punjabi Bagh Extension polling station right over here. And of course, it's been, in fact, a day which we saw start at 8 a.m. where voters came in exactly at 8 a.m. and they have been voting ever since. It's a very, very big deal. The reason being that it's a prestige battle between the BJP and the Aam Aadmi Party. BJP, of course, wanting another consecutive term, and the Aam Aadmi Party wanting to make headway. Many political reactions have come in. In fact, right over here where I am, this is where I spoke to Manjinder Singh Sirsa when he said that the Aam Aadmi Party does not really have a chance, and the people of Delhi are very clear about the fact that the Aam Aadmi Party has not done much when it comes to the promises they have made. They just have made promises and they have not delivered on them. This is what he said. The Delhi people are very aware of that. Many reactions have come in. We have spoken to many leaders today, and they have spoken exclusively to Republic TV. Let's play out all the reactions from the political leaders that have come in today. नमस्कार, जय श्री राम। आज दिल्ली नगर निगम का चुनाव का दिन है, वोटिंग का दिन है। आप सब लोग जरूर अपना वोट डालें, मतदान के अधिकार का प्रयोग करें। लोकतंत्र का उत्सव है और लोकतंत्र में भी सबसे लोकल गवर्नेंस का चुनाव का दिन है आज दिल्ली नगर निगम। आपकी रोजमर्रा की जितनी भी जरूरतें हैं उन सबसे जुड़ा हुआ चुनाव है ये। इसीलिए आप सबसे निवेदन है, बड़ी से बड़ी संख्या में निकलें, सभी लोग अपना वोट जरूर डालें और अपना वोट डालने के बाद अपने दोस्तों को, पड़ोसियों को, उनको भी फोन करके बोलें कि आपने वोट डाला या नहीं डाला। आइए अपने मतदान का प्रयोग करें और दिल्ली नगर निगम में अपने सुयोग्य जनप्रतिनिधियों का चुनाव करें। जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से ये दिल्ली के लोगों से कहूँगा कि आप निकले, वोट दें, ईमानदार लोगों को वोट दें, शरीफ लोगों को वोट दें, गुंडे मवाली लफंगों को बिल्कुल वोट ना दें। ऐसे लोगों को वोट दें जो आपके काम करवाते हैं, ऐसे लोगों को वोट बिल्कुल ना दें जिन्होंने दिल्ली को गंदा कर दिया। जो दिल्ली को साफ़ करेंगे उनको वोट दें, जिन्होंने काम करते हैं उनको वोट दें, जिन्होंने काम रोका है उनको बिल्कुल वोट ना दें। देखिए 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी MCD के अंदर है और पिछले 1.5-2 महीने के अंदर अगर आप देखें वो एक भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, एक भी बाइट नहीं दी जिसमें उन्होंने बताया हो कि 15 साल में उन्होंने क्या काम किया, क्योंकि कोई काम किया नहीं। सारी इंटरनल रोड्स टूटी हुई है, हर जगह पे कूड़ा पड़ा हुआ है, कूड़े के 3 पहाड़ बन गए, सारे पार्क खराब हो चुके हैं, कुत्तों का प्रकोप है हर जगह पे, कोई काम नहीं किया उन्होंने। तो लोग, दिल्ली की जनता एक बड़ा बदलाव चाहती है और मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के रूप में एक बड़ा आम आदमी पार्टी, आपका मैनिफेस्टो हमने देखा, काफ़ी सारे प्रोमिसेस किए हुए, लेकिन सबसे ठोस ऐसे कौन से वो 3 प्रोमिसेस हैं? क्योंकि यहाँ के हम लोकल से बात कर रहे हैं, रोड से वो परेशान है, कुत्तों से, जैसे आपने बोला, डॉग्स की प्रॉब्लम से परेशान है, और तीसरा वो सिक्योरिटी भी उनके लिए एक बड़ा इशू है। तो आम आदमी पार्टी किस तरीके से इन सारी डिमांड्स को पूरी? देखिए, आम आदमी पार्टी ने अब तक जो भी कहा है वो किया और उससे ज़्यादा ही किया है। मुझे लगता है जो टॉप 3 प्रायोरिटीज़ अगर आप बात करें तो सबसे पहली प्रायोरिटी है दिल्ली को साफ़ सुथरा करना। उसमें आपके घर से लेके कूड़े के पहाड़ तक के सारे कूड़े साफ़ करना, ये हमारी पहली प्रायोरिटी है। दूसरी प्रायोरिटी जो सबसे ज़्यादा है कि निगम को लोगों के फ्रेंडली बनाना। जो इंटरनल रोड्स टूटी हुई हैं, जो डॉग्स की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, बंदरों का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, लोग फ़ोन करते रहते हैं, चाहते हैं काम ही नहीं आते। तो जो बेसिक इश्यूज़ है लोगों को रिजॉल्व करना। और तीसरा ये है कि भाई MCD जो घाटे में पड़ी हुई है इसको रिवाइवल कराना, इसको प्रॉफिट में लेके आना। आखिरी सवाल कि बीजेपी ने एक के बाद एक इन पिछले 3 हफ्तों में इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आम आदमी पार्टी को कई स्कैम्स में घसीटने की कोशिश की है, तो उसको कैसे देखते हैं? मैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप सोचिए कि ना 15 साल के शासन इनका रहा। मैं सोच रहा था कि कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करेंगे जिसमें ये बताएंगे कि हमने MCD में ये काम किया, एक भी नहीं हुआ। हर बार आके सुबह से लेके शाम तक अरविंद केजरीवाल को गाली देना, गाली देना, गाली देना। तो मैं दिल्ली वाले से कहना चाहता हूँ कि गाली देने वालों को वोट मत देना। जो आपके फ्यूचर का प्रोस्पेक्ट लेके आए हैं, जिन्होंने आपके लिए प्लान बनाया है, जिन्होंने आपके लिए विजन बनाया है, उनको आप वोट दें। जोड़कर विनती करती हूँ कि मौसम बहुत अच्छा है और सब लोग घर से बाहर निकलें, फटाफट वोट डालें, क्योंकि पोलिंग स्टेशन जो है घर के नज़दीक है, 5-10 मिनट से ऊपर नहीं लगते हैं। तो पोल करने के बाद, वोट डालने के बाद आप अपने घरों में चाय का आनंद ले सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं और जिस भी चीज़ पे डिस्कशन करना चाहते हैं, परिवार से लेके देश दुनिया की बात, वो भी कर सकते हैं।
पर वोट डालने के लिए कृपया घर से बाहर निकलें। केंद्रीय मंत्री के अलावा एक वोटर भी हैं आपने क्या मुद्दा अपने दिमाग में रखा वोट डालते? मैंने मुद्दा यही रखा कि ये शहर मेरा है, मेरा जन्म यहाँ पे हुआ है और होपफुली मृत्यु भी यहीं होगी। तो जीना यहाँ, मरना यहाँ, तो शहर की चिंता करना, अपने कॉलोनी की चिंता करना हम सबका फर्ज है और उसको हम ठीक करें और जो लोग धोखे की राजनीति करते हैं उनको बाहर करें। केजरीवाल कह रहे हैं कि अब पूरी तरह से साफ हो जाएगी एमसीडी से बीजेपी और सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी की। उन्होंने जिस प्रकार की धोखे की राजनीति दिल्ली को दी है, दिल्ली उसका जवाब उनको जरूर देगी और जिस प्रकार से उन्होंने दिल्ली को बिगाड़ने का काम किया है उसका जवाब भी दिल्ली देगी। मैं दिल्ली में पैदा हुई हूँ और मैंने दिल्ली में कई किस्म की सरकारें देखी हैं जिसमें से ये भी हैं और मुझे भी ऐसा था कि जो मर्जी, ठीक है राजनीति अपनी तरफ है, मगर दिल्ली को अगर कोई व्यक्ति ठीक करे तो हम उसके इंटरनली मन में विश्वास रहता है कि शहर तो मेरा भी है। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने दिल्ली के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके अपने चेहरा चमकाने का काम देश दुनिया में किया है, क्योंकि वो अपने आप को राष्ट्रीय नेता घोषित करना चाहते हैं और प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनाना चाहते हैं, उससे दिल्ली की नाराजगी है क्योंकि दिल्ली का काम इन्होंने नहीं किया, ऐसा मैं मानती हूँ। People will vote for BJP. There is a reason, because they have seen how Prime Minister Narendra Modi has been changing this entire nation. But due to one person, who is Arvind Kejriwal, the things are getting worse in Delhi. You got a worst air in Delhi, you got a worst water in Delhi, you got a worst roads in Delhi, and things are getting worse day by day. So that's the reason people want to change. There is the mood of the nation, and the same is the mood of Delhi. And Sister Ji, I of course will talk to you once you go and cast your vote. We have actually, been here since morning, and everybody is so happy about this polling station. They are telling me that, they've never seen a polling station like this ever before. It's very welcoming, and it's all staffed by females and women as well. So, the voters very happy. What do you think, is the core issue right now for the voters? Because some voters say development is a very, very important issue that they want to address. Definitely, development. But the most important issue is the pollution in the air. Nobody can breathe. The young children and the elder people, their lungs are getting infected. People have seen how the dirty water they are getting, and due to the people are getting sick. How Yamuna has not been cleaned in the last 8 years. A person who swears by his children, every time he swears by Delhi and give me a chance and I'll prove it. But every time he's failed, and after failing time and again, he says, "Mujhe 5 saal aur de do." In fact, Arvind Kejriwal has said that pollution is not a problem of Delhi; it's a problem of North India. He was blaming it on North India, even after BJP had raised this issue time and again. So, जो प्रॉब्लम अरविंद केजरीवाल को वोट ना दे सके वो प्रॉब्लम नहीं है, और जो प्रॉब्लम के कारण अरविंद केजरीवाल की वोट खत्म, कभी वो कहते थे करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा, जो कहते हैं करप्शन तो मुद्दा ही नहीं है। कभी वो कहते थे करप्ट आदमी को जेल में डालना चाहिए, अब तो कहते हैं कि जेल में 5 स्टार होटल होना चाहिए, जेल तो मुद्दा ही नहीं है। फिर वो कहते थे कि मैं आपको कसम खिला के कहता हूँ कि यमुना में क्लीन कर दूंगा, अब तो कहते हैं यमुना की गंदगी का मुद्दा ही नहीं है। तो उनके लिए सिर्फ वही मुद्दा है, 2 ही कारण, या उसको सत्ता दिलवाए या उसको पैसा दिलवाए, बस दैट इज द इशू फॉर अरविंद केजरीवाल। All right, viewers, so many reactions coming in right now, and I am outside the Punjabi Bagh Extension polling station, MCD Primary School. That is where I am right now, and it's completely pink because it's a special booth which is run by women, so women feel more safe coming in and voting. So basically encouraging everyone to come in and vote. Madhurima is also joining me live. Madhurima, you're getting so many reactions today from political leaders. You have been speaking to voters as well. One of the big issues right now would be, I would feel, because I have been speaking to voters myself, they say that the big issue is definitely cleanliness, garbage disposal, roads, infrastructure. These are very, very big issues, and that is something that they have in mind when they cast their vote today. Madhurima.
Well, yes, absolutely, Shivangi. And there's one more extra issue that people of old Rajinder Nagar are facing, and that is, Shivangi, that they have felt in the past that whosoever was their representative was absent most of the time and has not lent an ear to hear their woes. And now they want a representative who could really be there for them and solve their problem. As far as this Rajinder Nagar is concerned, Gautam Gambhir just came. He spoke to the media as well. He assured that the BJP is going to win a 4th term. However, we also spoke to Durgesh Pathak over here, and he was very confident of the fact that it would be the Aam Aadmi Party that is going to end the reigns of the BJP that has been holding power in the MCD for past 3 terms. And at the same time, when we spoke to the Congress candidate, she was also very hopeful, despite the fact that Congress went from over 70 seats to 31 seats in the last election, where the major portion from the Congress party was eaten by the Aam Aadmi Party representatives at the MCD. Now this time, though